hold, 6, hold, 6, hold. Hold, 6, hold, 6, hold, 6, hold, 6. Hold, 6, hold, 6.
to box, please. Join here for a warm-up session. Everyone present on ground are requested to join us for warm-up session. બધા આવો અહીંયા. Fellowship સારી ચાલી રહી છે, but all are requested to please join your team. વિજયભાઈ આગળ આવો. કાં ગયા? All are requested to please join the team. Good morning. Okay, so let's start. Let's take a distance of your both hands like this in between lines. Come on. Distance बना लेते हैं थोड़ा, so freely हम warm up कर सके. क्या मुंह से क्रिकेट खेलने वाले? क्योंकि मुंह अपने माउथ का ज्यादा वार्म अप हो रहा है. Thank you. So here we are from Sam's Performance Coaching, and our coach Sachin sir will lead for the warm up. So are you all ready? How's the Josh? How's the Josh? Very low energy. How's the Josh? That's good. Good morning, everyone. Let's start this session with some mobility. First, हम start करते हैं neck up and down. 1, 2,
3, 4, change side to side. 1, 2, 3, 4, change shoulder to shoulder. सबको करना है. अगर आपको क्रिकेट खेलते टाइम इंजरी नहीं चाहिए तो चेंज रोटेशन. ये सारी एक्सरसाइज आप याद रख सकते हो बिफोर द मैच. आपकी जो भी है आप कर सकते हो. चेंज रिवर्स. ये आपको हेल्प करेगी विदाउट एनी इंजरी, आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए आपके क्रिकेट टूर्नामेंट में. चेंज शोल्डर रोटेशन. अभी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स है सब हम मोबिलाइज करेंगे, रोटेशन करेंगे, जिससे आपकी पूरी बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी. चेंज रिवर्स. 1, 2, 3, चेंज आर्म्स रोटेशन, बोथ आर्म्स. मेरे माइक है, मैं नहीं कर सकता दोनों हाथ में, आपको दोनों करना है. यस गुड. 1, 2, 3, 4, चेंज रिवर्स. 1, 2, 3, 4, 5. अभी ये चैलेंज है, ऑल्टरनेट करना है, ठीक है. एक आगे जाएगा एक पीछे जाएगा. देख लो अभी आपका माइंड एक्टिव करो. अभी तक थोड़ा आपको बोर लग रहा होगा एक्सरसाइज. यस गुड. काफी लोग का हो रहा है, काफी लोग स्विमिंग कर रहे हैं. वापिस देख लो एक बार मुझे. स्टॉप. Alternate hand. एक रिवर्स, एक सीधा. Yes. Focus, concentrate. चलो चेंज. अभी रिवर्स करना है, अभी रिवर्स करेंगे. चलो उसी को रिवर्स करेंगे. देखो ये आपके जो हैंड्स है माइंड के साथ कोऑर्डिनेट है, ठीक है. अगर आपसे नहीं हो रहा है इसका मतलब समझ जाओ आप, ठीक है. फिर से मुझे एक बार देख लो. लास्ट बेंच कोई नहीं कर रहा है. आपको अगर क्रिकेट में इंजरी चाहिए तो आप नहीं कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो प्लीज ये मूवमेंट चालू रखिए. चलो चेंज साइड टू साइड. अब धीरे धीरे आपकी एक्सरसाइज थोड़ी फास्ट होगी, ठीक है. चेंज साइड टू साइड चालू रखो. गुड. चलो चेंज स्लाइड हैंड डाउन. साइड टू साइड. म्यूजिक, म्यूजिक मैन स्लाइड. थोड़ा सा म्यूजिक चालू रखो, थोड़ा सा. चलो चेंज रोटेशन, हिप रोटेशन. स्लो म्यूजिक, एकदम स्लो, एकदम स्लो, एकदम स्लो, एकदम स्लो. अभी सब कर रहे हैं, बोलना चाहिए ना, म्यूजिक चाहिए. चलो चेंज रिवर्स. यस गुड. परफेक्ट परफेक्ट. चलो रिलैक्स. अभी नी रोटेशन करना है. 1, 2, 3, 4. Yes, good, perfect. 5 and reverse. 1, 2, 3, 4, 5. अभी ओपन कर. 2, 3, 4. Yes, good. Change. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, good. Relax. Now side bend. टेंशन मत लो, ये बोरिंग वाली एक्सरसाइज अभी फिनिश होगी थोड़ी देर में. ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, फिर मजे वाली करवाऊंगा. चलो चेंज. वो साइड 5
बोलूंगा राइट तो राइट जा two and tap 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 right 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 left 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 and relax and start the high knees go go up your heart rate come on go go and butt kick yes good 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 and relax brother breathe inhale exhale चलो अभी हार्ट रेट नीचे लाना है इनहेल एक्सेल जाओ नीचे
Again up, standing में ही. Take a few deep breath. Inhale, exhale. Standing में ही. Inhale, exhale. चलो good. I think body warm होनी चाहिए. Okay? ये पूरा फ्लो 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट. टॉर्चर खत्म हो रहा है मेरा. ये हमने जो भी किया एक पूरा साइंटिफिक अप्रोच आप लोग ने किया हुआ है. पहले सारे जॉइंट्स को हमने एक्टिवेट किए हैं, सारे मसल्स एक्टिवेट किए, फिर आपका जो हार्ट रेट है वो बूस्ट किया है जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में घूमे. बाद में पूरा डाउन हमने किया है जिससे आप आपकी एक्टिविटी के लिए अब रेडी हो. जब भी आपकी मैच हो उसके पहले आप ये कर लो तो आपको बेनिफिट मिलेगा. ओके, मैं जा ही रहा हूँ, टेंशन मत लो. चलो, थैंक यू एवरीवन. हेलो, બધા આપણે नेशनल एंथम गाइसो. सर एक जोरदार ताली हो जाए दोनों डॉक्टर्स के रेसों के लिए. जहाँ तक ये लोग नहीं होता है हम लोग फिट नहीं होता है. जिस तरीके से लेफ्ट एंड राइट करा रहे हैं, हाउ मेनी पीपल्स दे आर मैरिड, प्लीज रेज देयर हैंड्स. आप लोग अच्छे लेफ्ट एंड राइट कर रहे थे. सो नाइस सेशन विथ यू. व्हाट्स अ गुड नेम सर? सो नाइस विथ यू. सो आप लोग सब अब नेशनल एंथम के लिए तैयार हो जाइए. उसके बाद हम लोग टूर्नामेंट की शुरुआत करेंगे. मैं सुबह से शाम तक आपके साथ रहूंगा. आपको मुझे टॉलरेट करना है डॉक्टर सर के जाने के बाद. सो आई विल बी देयर हियर एज अ कमेंटेटर. आई एम राजू डावला. वंस अगेन वेलकम यू हियर टू वॉलीबॉल ग्राउंड फॉर दिस grand tournament is going to start within the short. So before we are going to start, let's start and get ready for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य. जनवरी भी आ रहे हैं. इन एडवांस ऑल ऑफ यू वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे. अच्छा वार्म अप हो गया. अब ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा सा जाएंगे. इट इज नीडेड. બ્રેકફાસ્ટ પર એક સેકન્ડ. બધી ટીમ અહીંયા સ્પેશિયલી કેપ્ટન્સ અહીંયા સાથે રહેજો. અને વિજયભાઈ અને સોહેલ પ્લીઝ કમ ઓન ધ સ્ટેજ પ્લીઝ. સો દરેક કેપ્ટન્સ, ઓલ કેપ્ટન્સ પ્લીઝ, ઓલ કેપ્ટન્સ. સ્કેડ્યુલ ત્યાં બોર્ડ પર લાગી ગયું છે કઈ મેચ ક્યારે છે, પણ ઇટ્સ ઓકે. અત્યારે આપણે કઈ ટીમનો કયો નંબર છે ધેટ વિલ રિવીલ. जिगर पटेल कैप्टन. Sohel, please. We will reveal the trophy now. All players, please come here on the stage.
near the stage, please. All players, you can come in. આઈઆઈએ અને આઈઆઈઆઈડીની જે કંઈ બી કમિટી મેમ્બર્સ છે તેમને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે અહીંયા આવી જાય ઉપર. આઈઆઈએ અને આઈઆઈઆઈડી ના બધા કમિટી મેમ્બર પ્લીઝ સ્ટેજ ઉપર આવી જાઓ. અને બાકી પ્લેયર્સ, કેપ્ટન્સ, ઓનર્સ બધા સ્ટેજની નજીક આવી જાઓ. સ્મિત, જસન બધા પ્લીઝ. સોહેલ કઈ નંબર છે? B4 it is. Zesty Zaha B4. મને આપી દો, કઈ મૂકી દો. બે એક વર અને વધુ પક્ષમાંથી એક એક જણ આવો પ્લીઝ. એ મને આપી દે, વિશાલ મને આપી દે, વિશાલ મને આપી દે. ઓકે, સો સેકન્ડ ટીમ જેસી સર B1 Fascinating Foster B1. Okay. Third team. A3. Charismatic Korea A3. Charismatic Korea A3. કૌશલ આપણે એક બે ગ્રુપમાં આવી ગયા. Fourth team please. B4. A4. A4 League of Legends. League of Legends A4. Okay. Fifth team please. B2 આવી છે? B2 આવી છે અજય? B2 બાકી છે ને? B2 Gigantic Gary B2 अपने ग्रुप में है. B2 Gigantic Gary. Yes. B1 આવી ગઈ છે. B3 આવી ગઈ છે. B3 Endo Avengers B3 ઇકાય. એમાં નાખી દો. આ બધા એ લોકો એમાં નાખી દો.
A1 it is. Dosi Daredevils, A1. A1 Dosi Daredevils. કઈ ટીમ બાકી રહી? એવી નહીં, આ કઈ બાકી રહી? આ તો A2 એક જ નંબર છે હવે. A2. Okay. A2 Fantastic FLW. બધી આવી ગઈ ને ચાર? ઓકે, સો દરેક કેપ્ટન ને રિક્વેસ્ટ છે પેલું બોર્ડ વાંચી લેજો કઈ ટીમની ક્યારે મેચ છે ત્યાંથી ખબર પડી જશે આપણને. ફર્સ્ટ મેચ ઇઝ ડોસી ડેરડેવિલ્સ વર્સિસ FLW. એ બંને કેપ્ટન અહીંયા રહેજો, બાકીના લોકો બ્રેકફાસ્ટ માટે જઈ શકે છે. અજય 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 આ બોર્ડ પર A1 A2 નથી લખ્યા આપની ભાઈ. A1 A2 જે છે ને ત્યાં લખી દે ને બધા પહેલા. હા મારી પણ આ રાખું છું મારી પાસે. હા કઈ છે અહીંયા A1 A2 કઈ છે પણ પહેલી મેચ A1 A2 પહેલી. હા આ સ્કેડ્યુલ બતાવો. ટ્રોફી લેવાને હજુ વાર છે રાહુલ. So A1 and A2. A1 A2 team. ઇમરાન આ કોઈન છે ત્રણ, એક મારી પાસે રાખું, બે તમારી પાસે રાખું. તમારું નામ? આપણું બધું સેટ છે ને? ઓ પટેલભાઈ મને પેલે બોલ નાખજો, બોલ બેટ પર લોગો મૂકી દો. આપણી કઈ આવશે? ના ના એવું પિયુષ એમ કહે કે મારી ત્રીજી મેચ છે. જીગર અને અજય કેપ્ટન કોણ થયું? ડોસીમાં કેપ્ટન કોણ? મજા આવશે. એક્વન્ટ એટલે હંસલ. હંસલ અને જીગર પટેલ. હંસલ અહીંયા સ્ટેજ ઉપર. વિજયભાઈ સોહેલ ક્યાં ગયા? હા ત્યાં જ કરીએ છીએ. સોહેલ આપણે ફર્સ્ટ ટોચ સ્પીચ પર કરીએ. વિજયભાઈ હા ઓકે. FLW કેપ્ટન જીગર પટેલ વચ્ચે પીચ ઉપર આવી જાઓ પ્લીઝ. એમ કઈ પગે પગે લાગી જીગર પેલા વિડિયો વાળા
First match is going to take the place between these two match. That's Doshi versus Foster. By Crick, by scorer જે છે ઓનલાઈન ઉત્સવ પટેલ, પ્લીઝ જરા આવી જાઓ બેટા. ઉત્સવ પટેલ. ઓકે. બધાના નામ લઈ લેજે અને 12th મેન સુધીના લઈ લેજે અને બંને ટીમના કેપ્ટનને રિક્વેસ્ટ છે કે એમના 12th મેનને મોકલી આપજો જેથી કરીને કોણ જાય છે એ ખબર પડે. So once again I would like to request the captains they should stand the 12th men see along with me. Both the umpires Ankur Patel and Paresh Patel are requested to take the position. टीम कोरिया बैट्समैन टीम कोरिया બેવ ટીમના એક પ્લેયરને કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં આવવા રિક્વેસ્ટ છે. प्रेमल बैट्समैन मोकलो प्लीज અમે ચાલુ કરીએ સ્ટાર્ટર. બેવ ટીમના એક પ્લેયર કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં આવો. અને એક પ્લેયરને કમેન્ટ્રી બોક્સમાં મોકલજો. હંસલ હંસલ અહીંયા અહીંયા રાઈટ હંસલ તમે અહીંયા બેસો છો કમેન્ટ બોક્સમાં. અંચલ આ છે તમને કશે લખી દઉં કે બેવ ટીમના એક પ્લેયરને કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં આવવા રિક્વેસ્ટ છે. મેચ ચાલુ નહીં થશે એના વગર. તમારે લીધા 4 જણના આવી ગયા કૂપન. એ છે ને બેટ ફ્લિપ કરેલી હતી, ટોસ નહીં હતું એટલે FLW એ જીતી ગયા ને એ લોકો બોલિંગ લીધી. બેવ ટીમના એક પ્લેયરને રિક્વેસ્ટ છે કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં આવે. હંસલભાઈ એક પ્લેયરને મોકલો કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં. જીગર હેલો બેટ્સમેન 1 મિનિટની અંદર વચ્ચે ગ્રાઉન્ડ પર આવી જજો પ્લીઝ. લાસ્ટ 1 મિનિટ બેટ્સમેન લાસ્ટ 1 મિનિટ. હા ફોસ્ટર જીત્યો. ફેન્ટાસ્ટિક FLW. બેવ ટીમના એક પ્લેયર કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં આવે. જીગર એક પ્લેયરને મોકલ કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં.
ભાગ્યેશ કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં આવજો ને પ્લીઝ. હંસલભાઈ તમારો એક પ્લેયર આવ્યો નથી કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં. हेलो सर थोड़ी जगह आप ही दीजिए. Hello. Good morning, all of you. This is me, Raju Dala. Welcome you here to Waliba ground for the IIA and IIB, the bat and ball and family game tournament at 2026. This is the first match going to take the players here in the morning. That it's a Dosi versus Foster, and FLW is the captain who won the toss and decided to ball first. Two captains are there who is reserving duty. That's Ankit Patel and Paresh Patel, and along with me is Mr. Utsav Patel, is my scorers cum statistician who is doing his job along with the cricket tournaments. So it's a ball and bat tournament 2026. First match, first ball is going to start from the com box end. બેટિંગ ટીમનો પ્લેયર હજી પહોંચ્યો નથી કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં. The first ball was played down to the pointers and then square up the wicket down to the pointers and taken a very first run. Yes, the score is started with the very first delivery. The first ball of this tournament from the combo side. Here in this first match, the captain has won the toss and decided to ball first. As a full toss one and played down to the onside, the nobody is in the depths and that's a boundary. The first bound is up this. Yeah, it's a signal from umpire. That was six. Super 6. His Super 6 is sponsored by Farnova Kuchen. So now scores moves on to the 7. It was the very first boundary of this morning over the rope for the 6 down to the onside. The full toss there was well in the position, played down to the into the dab. So very good runs coming to start. It is a 7 without no loss. Raj Modi is now playing with the 6. Once again, he's tried to bowl into the line, but way outside the off stump. That is signal from umpire. It was a wide. Off stump से काफी ज़्यादा बाहर के अंदर लाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन फिर भी वो wide रही. चिराग फिर से एक बार ये अच्छी गेंद थी लाइन के साथ. आपकी बात थोड़ा सा गुड कमबैक जिसे कहते हैं. So good bowling this time. Way outside the off stump, he tried to let it go into the wicket keeper's hands. No question of run. Score is remain 8 without loss. This is the first always going on from the comeback side. Once again, it's a lofted one. There is a man is coming, and that's got the first wicket of this match. It was very simple. They were well coming into the left-handed batsman. He wanted to play it over to the square down to the wicket, but unable to get the elevation. And this time, not much punch behind the stroke. There is a man from the deep mid wicket. Got it very under ball so nicely and got a first wicket. So first wicket is gone off. Dosi 11. That's a score of 8. This wonder wicket in Ballbat Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. Eight philosophers, 1 wicket. Stremaing is coming on the field. Is Abhi is now getting ready to face the Chirag as a successive bowler. So in a very first he has got a wicket for his team. This is the first match over this tournament. Chirag is now bowling round wicket.
As a full toss one this time. Watch it very carefully and play down to the follower back to the bowler. No question of runs. Now there should be a 2 over first power play once again. Chirag. That's a good ball. This time is a naturally left arm leg break. So this was up the line and so leaving the batsman sharply. Very pass close to the off stump this time. So good delivery by Dosh. So Chirag so far has been bowled. He has finished his first over. The first over is given an 8 run, and of course he got the wicket of opener batsman. He got a wicket. Man out Raju Modi, coach of the Jigar Patel of the bowling of Chirag on his individual score of the 6. This is the first match of the bat ball tournament of 2026 and family games. So match of a 10 over. First over will be remained a power play. So new bowler has been brought from the comeback side. Hars Gajar is now getting ready to bowl right-handed batsman Hanshal. As a OP delivery and is played down to into the long off area. There is an easy single for him, the man in the deep, before he can collect the ball and return to the bowler, having a good chance to cross over for the single. With the single now score moves on to 9. Loss of 1. This is the second over in the program. Let's see what's going on in the remainder of first power play. Oh, this time way outside. The off stump wanted to play down to the offside, got an inner edge of the blade and gone down to the short square. Like there is a man who has fielded and returned to the wicket keeper. But meanwhile, the both batsmen got a chance to cross their ends. With the singles now, scores slowly moves up to 10. And Sully is playing on his individual score of 2. That's a good ball. This time, just outside the off stump, making the room for it. Who wanted to cut it down the offside, missing completely, and wicketkeeper collect and return to the bowler. It's a good ball. Good comeback by Harsil. So far, he has given only a single on his first and second ball, and this is the dot ball coming. Oh, this time once again he's played down to the offside. His little more time into the air. That is a man who from the extra cover and pick up the ball before he could do anything. The both batsmen having a chance to go for a single runs. With the singles now, AB brought into the strike and Hansel moves on to 3. AB is playing with a single run. Way outside the off stump, just tried to play it, missing completely, not connecting with the bad wicket keepers, collected and returned to the bowlers. There is a one man in the slip closing fielder, backward point, cover, extra covers, deep mid off. Or this time straightly played down, just he got his hand into the ball but unable to stop it. Meanwhile, there is a man from the mid off who can collect the ball and pick up. The batsman gone for a good singles. Good over so far. This is a very economical bowler. He only is not given any chance to the both batsmen to open the shoulder and to go for a hard hitting. It was a very good morning started by this tournament organizer. Morning session was done very nicely by the two very good physiotherapist doctor. The 8 teams are going to participate in this, and this is the event of the 3 days here at the volleyball ground. Once again, the people, those who are coming late here, I would like to remind you that this is the first match, Dosi versus the Foster. And Foster captain won the toss and led the rival to come here on the bat. Chirag Majetia, so far he has been born 1 over, no more than 8 runs. Of course, he got the wicket in his very first over. AB is now playing on his individual score of 2. Hansel is playing on his physical score of 2. Of course, AB has faced so far the 5 deliveries. Hansel has faced the 4 deliveries.
Shutting is filling down to the offside. Has got an edge of the plate, and that is a simple catch into the closing fielding. He wanted to play down to the square of the onside. Unable to time the well, got an edge of the plate, and there is a simple catch into the closing field. That's easy for him. Nothing to do wrong with that delivery. But he wanted to play down onside. Miss. This wonder wicket in Ball Bat Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. બેટ્સમેન નું નામ કહેજો. So new man is on the field is Palak. Second wicket is gone down on the score of the 12. Once again, Chirag is going to be very successful. In the first over, he's got a wicket of the opener batsman. In his second over, first ball, he's got a wicket of the one-down batsman. That's a good ball this time. Flighted one into the head. Inducive delivery. Wanted to play him before he could do anything. Ball is beaten and into the gloves of wicketkeeper. Once again, dot delivery. Yeah, this time sort of flan is a while in the position and pull it down to the onside. There is a mine in the deep at mid-wicket. Fielded nicely, throw into the hands of the bowlers, Chirag, but not there is a chance for the both the batsmen to chin there. And one more single here is added, and now score goes up to 13 per loss of 2. This is the third over in the progress. It's a good ball. Once again, the flight hit once and leaving the batsman sharply down to the onside is a right-handed batsman, angling the batsman so nicely. Sir. It's a good one ball this time by Chirag Majetia. It's a left-arm orthodox leg spinner bowler. One. It's an appeal for the caught behind the ball was just leaving the batsman down to the offside. We're not coming into the line of the ball this time and wanted to play down to the offside. Not connected to Allen, wicketkeeper collect and return to the bowler. This time way outside the off stump, there's taken lovely play down to the fans for 4 runs. So open delivery just outside the off stump. He was a while in the position, played with the spin. Sponsored by Farnova Kuchen. So last ball was finished with the boundaries. That was an open delivery and just outside the off stump. Batsman was while in the position and played into the extra cover reason for 4 runs. The score is now moves on to 17 per loss of 2 wickets. So far 3 over has been completed. So run rate is going about 5.6. It's a good one. This time just outside the half stumps. It connected well and played back to the bowler. No question of a run score is remains 70 for loss of 2 wickets. The 4th over is going on and bowling is Harsh Gajjar. He's continuing with his second over from the comeback side. Right arm, what look at this time. It's a beautiful. I would like to just a clever delivery. Realize that the bowler batsman do not having any front foot movement, so he bowled just away from the outside the off stump. Way outside the off stump, tried to chase the delivery, and there is a signal from umpire Ankur Patel. It was way outside the off stump. Wide ball. One more extra with an extra now. Score goes up to 18 per loss of 2 wickets. New man is on the wicket. Is Palak Patel who's playing on the score of 1. यह बहुत ही खूबसूरत डिलीवरी खेलना चाहते थे बल्ले ने अंदरूनी किनारा लिया गेंद गई फाइन ले की तरफ 4 रन के लिए And that was a fantastic four sponsored by Farnova Kuchen. It was a very lucky boundary for the Palak that he wanted to play square of wicket down to the offside, got an inner edge of the plate and ball was run down to the third man
fine leg for 4 run. Now score moves on 22 per loss of 2 wicket. This is the 4th overs is going on. And that's clean bowls. As a nothing, it was a full line delivery, is very close to his bat. He wanted to play it missing completely, got himself into the block Yorker situation, and off stump is uprooted. So this the third wicket is gone off in his 4th over, and Harshal Gajjar is getting his first wicket here. It was just outside right on the first stump. Rather, I would like to, it was on the off. What a wicket! This wonder wicket in Ball Bat Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. Stremaing is coming here on the wicket is Himanshu Patel, and Dosi Daredevils at this was in the 3.4 overs. The score is 22 per loss of 2 wicket. Last man was also was clean bowl of the bowling of the Harsh Gajjar. It was a full line delivery right under the off stumps. He wanted to play the missing completely, and ball was stuck right into the off stump. So Harsh Gajjar is now to bowl the newcomer batsman Himanshu Patel. There is a deep backward point cover, extra cover, mid wicket, square leg. That's the fielding situation for the newcomer Himanshu Patel. Harsh Gajjar is now getting ready to bowl. This time way down to the onside. Batsman watch it very carefully and allowed to go into the gloves of wicket keepers. Signal from umpire Ankur Patel. It was a wide delivery. One more extra run is now added in the score of Doshi relevance. It's a good ball this time. Watch it very carefully in copybook style. Played forward. Defensive stroke back to the bowler. Bowler himself fielded and walking slowly top of his bowling mark. Score remained 23. That's a good ball. This time coming into the right-handed batsman. He just wanted to play it. He got a little bit on the edge of the blade. Not connecting well, not timing it well. And that's the end of very successful over by Harsh Gajjar. He has been so far bowled 2 over, no more than 10 runs. And of course, he's got a wicket. Chirag Majethia so far has been 2 over, no more than 13 runs, and he got 2 wickets. So at the end of 4 overs, Doshi that delivers 23 for loss of 2 wicket. Hello. હંસલ કેમ છે ભાઈ? So far the batsmen are out. Raj Modi on his individual score of 2. AB is out on his individual score of 2. And Palak Patel last man out on his individual score of 5. Chirag so far he has been 2 overs, got 2 wickets on his 13 runs. Harsh Gajjar, of course, is one of the successful bowlers. He has been bowled 2 over, no more than 10 run, 1 wicket. The first wicket was gone on the score of 8. Second was fall on 12. And the last man was out, Palak. That was the score was 22. The new bowler has been introduced. આ બોલરને થોડી રબર બેન્ડ આપવી પડશે. ચિરાગ, આ પ્રતીકભાઈને થોડી રબર બેન્ડ આપો. New bowler is Pratik, having a very long hairstyle, looking like Dhoni.
This time way down to the leg side, and just a batsman watch it and allowed to go into the wicketkeeper gloves. Signal umpire from clearly it was a way down to the leg side. It was a white ball. One more ball run is now added. 24 for loss of 3 wicket. ये शॉर्ट पिच की गेंद थी, पूरी तरह से अपने आप को पोजीशन करते हुए उन्होंने गेंद को पुल कर दिया. वहां पे खिलाड़ी जरूर दौड़े. જીગર પટેલે ફિલ્ડરને કાઢ્યા પેલી જગ્યાથી અહીંયા ને અહીંયાથી પહેલા. જીગરે ફાઇનલી બે જણને કાઢી મૂક્યા છે કે અહીંયાથી અહીંયા રહો. જીગર પટેલ બેટિંગ ગોઠવી રહ્યા છે, સોરી ફિલ્ડિંગ ગોઠવી રહ્યા છે. सो मेरे साथी कमेंटेटर है. सर आपका नाम क्या? विशाल, जो हमारे गुजराती में कमेंट्री कर रहा है. थोड़ी सी सूटी लैंग्वेज यहाँ पे दिखाई देती है, अच्छी बात है. वी आर टिपिकल सूटीज आफ्टर ऑल. हंसल खेल रहे 11 रन पर. हिमांशु अभी अब उनको अपना अकाउंट खाता खोलना है और प्रति गेंदबाजी कर रहे हैं. It's a short pitch delivered this time, much more time into that. There is a man at the point. As they put it down, it was an easy life for him. So very simple catch this time. We are some moment is put it down. So now the man is, they have been crossed for the shingle, is now going to play with his life. उनको एक जीवदान यहाँ पे मिल चुका है. स्कोर हो चुका है 29, 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर. ये 5वां ओवर चल रहा है. 10 ओवर का यहाँ पे मैच होगा. जो पहला 2 ओवर होगा जिसे हम पावर प्ले कहते हैं. उसके बाद हवा में रही थी. शॉर्ट मिड ऑन चिराग जी थे गेंद के. આ ચિરાગ લવારા કરવાની ઉભો રહે ને તો આવી જતે હે કેચ. થોડા આગળ ઉભો રહે. Once again, it was a lower full toss delivery and ball was much into the air. There is a man in the deep at the covers, unable to get it under the line of the ball. It was a lower full toss delivery and once again, there was a looking like as a half life. Okay, lovely picked up this time. હવે અહીંયા જીગર પટેલને અહીંયાથી બદલી લેશું આપણે. And that was a fantastic four, sponsored by Farnova Kuchen. The score is 35 with that boundary now. So mid wicket and mid on. So at the end of 5 overs, Dosi there delivers a 35 a loss of 3 wickets. So Tournament 2026. Sponsors Chalisia Systems Private Limited, Cool Line by Daikin, Nexion, O General by Global Electrify Shop, Core, Equent, Ekai, Everest Fly and Zydex. Our appreciation to the auction sponsor NS Stonex, ground sponsor Viva, apparel sponsor Unimaple, golden window sponsors Surat Painter and side screen sponsor Intellisys Solutions. Thank you to our food sponsor on and off, Litoria and Laxate Living. We acknowledge our boundary line sponsors Kashtha, Shipra, Swestham, Serenity, Shivdhara and Insights by Maruti Hardware. Special thanks to 4 and 6 sponsor Farnova Kuchen, wicket sponsor Rowan Decor,
Man of the match sponsor Guardian Glasses and drinks sponsor Zenu Blaster. Once again, thank you all for supporting Ballbet Tournament 2026 and the spirit of cricket and family games. જીગર હારી વાલા થોડું વોર્મ અપ કરો વોર્મ અપ હા બરાબર તારો નીચેનો અંગૂઠો પકડાય હા બરાબર हेलो 5 ओवर की समाप्त हो चुकी है। स्कोर है 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और यहां पे अब जब एंड चेंज होगा, अब गेंदबाजी 13 रन बनाते हुए अब तक उन्होंने 11 गेंद का सामना किया, जिसमें 2 बाउंड्री शामिल है। और हिमांशु वाले एंड से गेट इन की तरफ से 5 ओवर फील्डिंग करते हुए जिगर की ये पहली गेंद अच्छी गेंद थी। जैसे देखा आपने थोड़ा सा अपने आप को स्टॉप किया, गेंद को आने दिया, बॉलर पर गाइड किया था बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 1 रन के लिए। स्कोर यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट होता हुआ अब पहुंचा है 36। कैप्टन वर्सेस कैप्टन નું ગેમ રમાઈ હતી હમણાં। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपकी बार उन्होंने लॉफ्टेड खेल लिया, वहां पे किसी के लिए मौका नहीं, गेंद निकल गई मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। જીગર ને પડી। His Super 6 is sponsored by Farnova Cushion. फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी आपकी बार, लेकिन और वही अंदाज से खेल दिया वहां पे वापस बैक टू बैक जिसे कहते हैं बाउंड्री 6 रन के लिए। His Super 6 is sponsored by Farnova Cushion. कैप्टन ने तो एकदम पड़ी रही है। कैप्टन ने समझावा માટે હું આવું। આ બ્લુ વાળી મેચ ની અંદર ફિલ્ડિંગ માં બ્લેક કલર ના ભાઈ કોઈ ફરી રહ્યા છે। જલ્દી જલ્દી થોડા બહાર જજો। So it was a 2 consecutive sixes in last 2 delivery. ये प्रेशर यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई देता है। और गेंद अब की बार ऑन साइड से काफी ज्यादा बार, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। एक अतिरिक्त रन के साथ अब स्कोर हो चुका है 49 रन 49 पे लॉस ऑफ 3 विकेट। 6ठा ओवर चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से तो लगातार 6 आए वहां पे जो स्ट्राइक रेट है नाउ इज क्लाइंबिंग हाई, इट गोज अप टू 8.9 पर ओवर। अच्छी गेंद थी, जैसे देखा अपने आप को वेट किया था, बैकफुटर कलाई का उपयोग किया, टर्न किया ऑन साइड में मिड विकेट की तरफ, जब तक कि गेंद को फील करे 1 रन लेने का यहाँ पे मौका मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पे डोसी डेविल्स का 50 रन पूरे होते हुए જીગર પટેલ ને એમ કે હું ફિલ્ડિંગ બી ભરું બોલિંગ બી કરી લઉં, સારું બેટિંગ તરત નહીં કરી લે। हिमांशु पटेल स्पार्कलिंग इनिंग्स खेलते हैं यहाँ पे। ये फुल टॉस डिलीवरी थी, थोड़ी सी वहाँ पे स्ट्रेट किया है, वहाँ खिलाड़ी जरूर मौजूद है स्क्रीन के पास, गेंद को फील किया, लेकिन दोनों खिलाड़ी के पास पर्याप्त समय था अपने अपनों एंड को चेंज करने का। गुड जो स्ट्राइक रेट से रोटेट करने का यहाँ पे मौका मिला, और इसी 1 रन के साथ अब स्कोर हो चुका है 51 रन। हिमांशु खेल रहे 18 रन पर। अच्छी गेंद थी, लेकिन धीरे से पुश करते हुए चीकी सिंगल रन यहाँ पे ले लिया। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दिस टाइम, गुड कॉम्बिनेशन बिटवीन बोथ ऑफ टाइम्स। It's pushed gently very close down to the short cover ears and gone for the cheeky single. What is now single, now score goes up to 52 with loss of 2, and that's the end of a 6th over.
जहां तक जिगर पटेल का सवाल है, उन्होंने एक ओवर किया 17 रन दे, काफी महंगे यहाँ पे साबित होते हुए। अब तक प्रतीक ने एक ओवर किया 12 रन दे, विकेट नहीं मिला। स्कोर है 6 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन। જીગર 17 રન આપ્યા છે. ये लो फुल टॉस के ऑफ स्टंप से बाहर थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। That's a right intermiddle of the blade, sweet sound through the blades, and ball is going down to into the mid on for a single. 7 overs in now progress. The new bowler is Patel. Kartik's bowling from the gate inside. It's a overpitch delivery and played down straight into the screen for Golden 4 runs. window. It's a beautiful six, a glorious for the stamps. 6. Okay, hi, super over, yes. 4 અને 4 એટલે 8 રન હંસલે માર્યો. ચિરાગ એને પકડી નહીં શક્યો. There is કોઈ a નથી chance. fielder. The ball is dropped, no man lands. દોડાય અને તો વાળ જ નડશે આંખમાં. 7 over in the progress, 62 per loss of 3 wicket. So Ovid delivered, played down to the ball is gone along the ground. There is a man in the deep who picked up and returned to the bowler, but not before the batsman crossed over for good single. But the single now score goes up to 64. It's a good one, tried to Yorker line deliveries and keeping the batsman quiet this time, unable to open his shoulders, playing in to follow through to the bowler. Kartik bowling from the gate inside. Once again, pitching this time, just coming forward, taken and half volley, played down to the onside. There is a man in the deep mid on. And that's the end of 7th over with a singles. Now score is on 64 for loss of 3 wickets. Good partnership going to build here between these two batsmen. So far they have been made of 42 run in 20 deliveries. अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे बिल्ड होते हुए 20 गेंद में उन्होंने 42 रन बना दिए. स्कोर है 64 रन, 64, 3 विकेट के नुकसान पर डोसी डेयर डेविल्स का. यहाँ पे आज उन्हें सामने वाले कप्तान ने बैटिंग करने के लिए दिया था. टॉस जीते हुए उन्होंने फर्स्ट ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था. 8वीं ओवर की शुरुआत होने को जा रही है. यहाँ पे Himanshu Patel is now playing on his individual score of 21, facing a 10 deliveries, including 1, 4 and 2 consecutive sixes. So his striking rate is 210. काफी अच्छे strikes से वो खेल रहा है. Hanshal, of course, giving a very nice support since and has made 25 runs, facing a 17 delivery. Of course, he has hit 2 boundaries. So Kartik, he has been bowled 1 over, no more than 12 run, yet to have a wicket. Jigar Patel 5 for 8, 1 over, no more than 17 run, and yet to have a wicket. We're outside the off stump and getting the bounce this time, so no worries. That's a lovely play down into the wicket area for 4, and that's a wonderful boundary. That was a fantastic four, sponsored by Farnova Kuchen. So lovely he is playing. He knows where is the enough gap. There was a huge gap between the mid off and cover, hence playing in that wicket area for the boundaries. So once again, the welcome boundary for the Doshi. Now the moves up to 68. पटकी हुई सी गेंद थी, लेकिन अपने आप को पोजीशन करते हुए उन्होंने पंच किया था. वहां पे खिलाड़ी मौजूद है डीप पॉइंट में. जब तक कि गेंद को फील्ड करे, रन लेने का भी यहां पे मौका मिल गया था. So good partnership going to build, and now
The fielding sides are desperately looking for a wicket. But the Bodo batsmen settled down so nicely when playing on his. Himanshu is playing with 21. Hanshal is on 30. Short pitch one and is played down to pull it down. Between that is a two players unable to stop it, and that's a wonderful boundaries. Nothing what that delivers a violent position and pull it down to the onside for four. With this 4 now, Himanshu jumps on this individual score of 25. He has faced only 11 deliveries. This is the second boundaries of his score. Of course, he has hit 2 consecutive sixes. Now score goes up to 73 by loss of 2 wicket, and current run rate is now climbing high. Now it goes up to 9.73 per over. Let us see how many runs is going to come in his crucial overs. After this, there will be remain only 2 overs. This is the 7.3 overs in a progress. Head is bowling from the gate and right arm over the wicket. Oh, this time it's a good ball. He's wanted to beat quite. તો લાંબો થયો જીગર લાંબો થયો. Good dot ball is there only. This time very close to the body. He wanted to play down to the square of the wicket, down to the offside. Got an edge of the blade and ran down towards the wicket keeper. So over pitching one this time. See there's a man is unable to come under him. And that's a six from umpire signal. So beautiful six this time. So over pitching and while timing it while middle is so nicely. Ball is just flying over the rope for six. This Super 6 is sponsored by Karnova Kuchen. 79 per 3 now. This time played down to the onside. There is a mine in the long on. Was picked up and returned to the bowler, but now having a chance to cross the cheek. દોડો. જીગર પટેલને આખું છે ને તે ગ્રાઉન્ડ કવર કરવું છે. આ ખૂણેથી પેલા ખૂણે બોલ પકડવા જાય. આ ટીમમાં 2 જીગર છે ને દરેક ટીમમાં 1 જીગર હોય છે. So at the end of 8 over. Dosi there, 80 per loss of 3 wicket. Both the batsman is settled down so nicely, and he's feeling like that it's not a tennis ball, it's looking like that the football for dams. Hitting on the every delivery, waiting for the loose ones, and almost they have shared with a partnership of 58 runs just in 26 balls. So good partnership now build up for the 4th wicket. Himanshu is on 32. Once again, beautifully played over the bowler's height, but there is only chance to go for the shingle. There is a man in the deep who has fielded, and that's a little bit fumble, has got a chance to go for the another one. ચિરાગ, આ તે જેટલો જોશથી બોલ નાખ્યો ને ખબર જ પડતી હતી કે જય અહીંયા. શાંતિથી નાખતો કઈ ફરક નહીં પડતો. 82 82 रन 3 विकेट के नुकसान पर. अब की बार फुल टॉस गेंद थी, वहां पे खिलाड़ी जरूर मौजूद है. बहुत ही खूबसूरत तरीके से फील किया हुआ, जम करते हुए उन्होंने गेंद को रोक लिया और एक ही रन लेने का यहाँ पे मौका दिया. बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग का यहाँ पे नमूना पेश करते हुए. जैसे ही देखा अपने आप को, वो उन्होंने जंप करके गेंद को रोक लिया था. बिल्कुल 3 रन अपने टीम के लिए यहाँ पे बचाते हुए मिड विकेट के खिलाड़ी ने. ओवर पिच 1 दिस टाइम, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ड्राइव किया लॉन्ग ऑन की तरफ. आपकी बार किया था, खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन लेने का मौका फिर से मिलते हुए. अच्छी यहाँ पे स्ट्रेटेजी, दे आर गोइंग विद अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी टू रोटेट द स्ट्राइक रेट रन एज वेल एज पॉसिबल. सो एवरी सिंगल रन इज पॉसिबल, दे ट्राई टू डू इट. દોડી જા હંસલ, બે Whereas single now score goes up to 85 a loss of 3 wicket. Hansal is now coming into charge, is playing with 31.
वहाँ पे थोड़ा सा आगे निकल के he's charging down to the wicket and wanted to play it missing completely. Wicket keepers are collected and returning to the bowlers. Good dot ball. Meanwhile, there is 85 a loss of 2 wicket. Almost 63 runs coming in 31 deliveries. Good partnership on the 4th wicket. As a pull down, that is a clearly looking like it's a 6. પાછો આવ્યો. Super 6. This Super 6 is sponsored by Fernova Cushion. Very good 6. So 9th over has been completed. Now the score is 91 for loss of 2 wicket. Both the batsmen is settled down, not giving any chance to the opponent to go for any wrong one. Striking rate is now goes up to 10.11. Hansel is a defending champion. Is now playing on his individual score of 37. Himanshu is 36. Now Pratik has been brought to finish the last over of this innings. Now Captain has given a responsibility to bowl from the gate in. Wicket keeper is settling down the fielding position down to the onside. I can see the 4 men down to the onside, 5 men and offside. Pratik is getting ready. Getting aged the man behind. After a long time, they're looking for the desperate Leo, and in very first delivery, he got the big fish into the net this time. So looking for a very desperately. What a wicket! This wonder wicket in Ballbat Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. પ્રતિક આ બોલ તે બરાબર નાખેલી, પાછળ વાળો તો પકડી જ શકતો હતો, તારી બોલ બરાબર હતી. જીગરના દસ્તાનોમાં હોવી જોઈતી હતી, પાછળવાળે પકડી લીધી બોલ. નિકુંજ પટેલ કેમ છો? તમે બી અમારી ટીમમાં છો. ઓકે. Batsman name? Sinami is on the field. Batsman નું નામ શું છે? Batsman Kevin. પહેલી બોલે છગ્ગો ના લાગે ભાઈ. हालांकि बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे फील किया था, खेलना चाहते थे, थोड़ी जिगर सी के लगी दस्तानों थी। में लग रहा था जिगर कि के लंबे लंबे हाथ दस्तानों में. With that single, Kevin is off the mark, and now Hansel is coming to fish. So over pitching, and there is a man coming under the ball, and he's not out. So once again, he's getting the wicket, and he's now got his second wicket in this over. So once again, it's a big wicket into the fish. This wonder wicket in Ballbat Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. .92 for loss of 5 wicket. Looking like it was a good partnership with the 4th wicket. Almost they have added 67 runs of the 4th wicket partnership, and then the arrival of the Pratik has got a 2 wicket in his overs and given a very good breakthrough for his wicket. 92 for loss of 5 wicket. 2 balls are remains of this innings. He's settled down the both sides, either side of the wicket, the fielding situation. Now let's see what's going in. Remains to deliver. How many runs are going to come in? Remain rest of the 2 balls. Both the batsmen are fresh one. ભાઈ થોડું જલ્દી દોડો, તમને એમ કીધું ને. The new man is Paritosh Patel. Yes, so it's a shot of lane delivery is coming well back foot and punch it down to the cover reason. There is a man who has fielded but not before the batsman crush over for good single. What a single now, score goes up to 93.
ये अंतिम ओवर की ये अंतिम गेंद होने वाली है। अब तक 9.5 ओवर चुकी है। आगे आके ड्राइव करना चाहता था, लगता है कि गेंद से लगी या बल्ले से लगी या पैड से लगी है। वी आर वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल्स। इट वाज ऑफ द बैट खेलना। और इसके साथ यहाँ पे 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 10 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पे डोसी डेयर 11 ने अपना स्कोर 94 94 રન થયા। હંસલ મહેનત કરવી પડશે આપણે। With immense pride and gratitude, a heartfelt thank you to our Ball Bat Tournament 2026 title sponsor Stanley and co-title sponsor Alcom. Also sincere thanks to our team sponsors Talisya Systems Private Limited, Cool Line by Daikin, Nexion, O General by Global Electrify Shop, Core, Equent, Ekai, Everest Fly and Zydex. Our appreciation to the auction sponsor NS Stonex, ground sponsor Viva, apparel sponsor Unimaple, golden window sponsors Surat Painter and side screen sponsor Intellisys Solutions. Thank you to our food sponsor On and Off, Litoria and Laxate Living. We acknowledge our boundary line sponsors Kashtha, Shipra, Swestham, Serenity, Shivdhara and Insights by Maruti Hardware. Special thanks to 4 and 6 sponsor for Nova Kitchen, wicket sponsor Rowan Decor, man of the match sponsor Guardian Glasses and drinks sponsor Zenu Blaster. Once again, thank you all for supporting Ball Bet Tournament 2026 and the spirit of cricket and family games. So come, let's all together playfully enjoy this fabulous Ball Bet Tournament 2026, the ultimate cricket showcase. Thank you. हेलो, यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है। आज की इस टूर्नामेंट के दरमियान जो एक वर्कशॉप रखा गया है वो है एक ट्रेड आर्ट का फॉर द मदर्स 18 इयर्स एंड अबव। वर्कशॉप अनदर कंसेप्ट फॉर द वर्कशॉप इज सनफ्लावर मेकिंग, 12 साल और उससे अधिक 12 इयर्स अबव, एंड वर्कशॉप फॉर पॉट पेंटिंग 8 इयर्स अबव। ये वर्कशॉप है 25 तारीख को होगा। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड, जिसे यहाँ पे ये वर्कशॉप करने के लिए इंटरेस्ट है, वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आके करा जाइए। पहला वर्कशॉप है ट्रेड आर्ट 18 साल के ऊपर के लिए 18 इयर्स एंड अबव। दूसरा है सनफ्लावर मेकिंग 12 इयर्स एंड अबव। थर्ड वन इज अ पॉट पेंटिंग 8 इयर्स एंड अबव। ચલો સામેવાળી ટીમના પ્લેયર આવી જાય ભાઈ, બહુ ટાઈમ બગાડો છો। પાણી પીવાનું એમાં બીજું શું હોય। ચાલો આવી જાઓ। જીગર પટેલ સામેવાળા ટીમ વાળા મોકલો। ચાલો સર તમને તો ઘરમાં ડોમિનેટિંગ આવે ને।
જીગર પટેલ હું બેટમાં જતો રહું. બેટ જોતી હોય તો અમારી પાસે છે જીગર, અમુક બેટ છે. જીગર આરી વાળા એની આરી હોતો હતો એવું લાગી રહ્યું છે. જોવાનું રહેશે કે આરીની અડફટે આ વ્હાઈટ વાળા આવે છે કે નથી આવતા. જીગર તારે બેટ થી રમવાનું છે, બોલ લઈને કઈ કામ નથી કરવાનું. અચ્છા ખેલ કરે છે. અરે તો અત્યારે તમારે આગ લાગી, અત્યારે ટીમ કોની હાથે રમવાનું નક્કી થયું. કૌશલ્ય ચડી જાય. એ આજે નથી અવેલેબલ. ના પાડે તો ના પાડી ઓલરેડી, બધું પતી ગયું છે. પીનલ એન્ડ લઈ લીધી એન્ટ્રી. Bowler name? To chase the target of 95 runs, about the opening pairs are here right now in the center of the grounds. Target of 95 run to win this match for the Fosters. Ansal. There is a two-man here on the wickets, Jigar Ariwala and Rishi Khair. Bowler is Raj Modi. He will be bowled from the calm box and पहली 2 ओवर पावर प्ले होगी. अंसल અને અભી બંને જગ્યા એવી લઈ લે કે બહુ દોડવું નહીં પડે. The first one is the short feed delivery is in a very good position. Pull it down over the mid wicket for 6. So very good started by here is the opener batsman. He knows what is the target for him to win this match, and that's a fantastic This Super 6 is sponsored by Karnova Kuchen. It was a very short of lane delivery. टूकी लंबाई की जिसे गेंद कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने आप को पोजीशन करते हुए उन्होंने पुल कर लिया था. 6 रन के साथ यहाँ पे शुरुआत करते हुए. So now pressure is really on the ball. This time we're bowling outside the off stumps, watching it carefully and allowed to go into the wicket-keeper gloves. There is a slips. બધા એવું કહે છે good ball, good ball, good ball. It's a good one this time. Play down to the follow tree into the cover is and a soft-handed batsman just. જીગર ને સિંગલ બી આવડે છે.
It was softly played down to the offside, it short cover reason and gone for a single. Now score moves on to 7 without loss. We outside the off stump, try to chase the deliveries, angling the batsman. मेहनत करो अंचल. It's a lovely pickup down to the offside, and there's nobody is there to, and it's just over the mid-wicket for 6. It's a glorious 6. It was right into the slot area, pick up so nicely and playing over the rope for a 6. The second 6 coming in this over. The score is now jumps on to 13. He's up the mark with the wonderful 6 down to the onside over the mid-wicket. Fielding position has been changed this time. Yes, and one more into the right on the top down to the onside at mid-wicket reason. It's a good ball this time, leaving the batsman sharply down to the offside, not coming into the line of the ball who wanted to play it down. Lucky for him not to get a touch, wicketkeeper collected. And that's the end of first over of Rajamodi, costing him a 13 runs. That's a target of 95 runs to win this match. So per overs they require at least 9.5 runs per over to win this match. And of course they have made a 13th run in the first over. અંચલ હવે તારા નાગિન ડાન્સ જેવી બોલ નાખવામાં આવશે. Jigar is on 7 with he has only faced 3 deliveries, remained 1 bound, 1-6, and Rishi is playing on his individual score of 6, facing 3 deliveries and also having a wonderful 6 that in the way he picked him down to the offside and OD. The bowler is replacing the mid-off and mid-on either side of the wicket. Now is getting ready to bowl. Hansal is now getting ready, having a long run of his right arm wicket. Oh, this time sort of line delivery. Let's see what's going on. Yes, and clearly 6 once again. It's a beautiful pickup down to the offside and pull it over the mid-wicket for 6. Sponsored by Farnova Kuchen. Now score jumps on 19. There's the second over in the progress. Let us see what umpire is going to signal at. That's a 6. Of course, Qualig umpires had also signal. It was a no ball. Sponsored by Farnova Kuchen. With that 6 now, score is now on 26. અંચલ આ મ્યુઝિક તારા માટે છે. Yes, a bowling action is very resemble to Patira, a bowler from Sri Lankan side. Nowadays, the young one is having a very resemble action, is a wide arm action bowler, and Hansal is a little bit very close to him. Now fielding situation has been little bit changed down to the onside. This time's the clear one. Once again is a while in the position, over pitching it down to the offside, over the cover into the fans for 4. It's a glorious boundary this time. જીગરે ઓફમાં મારવાની પ્રેક્ટિસ કરી લાગે છે ભાઈ. બધા લેગમાં ને બધા ઓફમાં બી મૂકો માણસોને. And that was a fantastic four, sponsored by Farnova Kuchen. This time possibility of a cat. Let's see what's going on there. It's a drop between the two batsmen. It was a full toss delivery just outside the off stump. Not timing as well. Much more time into there. અંચલ આને This બદલી time he નાખા survived. ત્યાં જ રાખું. ઓકે તમે ત્યાં જોડે એવું કીધું અંચલે. નીલ કઈ નહીં.
નીલ આ કોલ તારો તમારી એવી ડિસ્કશન ચાલે છે. So this one is good, one dot ball with us. Wanted to punch it down to the onside. Missing completely and wicketkeepers are collected. There is only one closing fielder, one slips short third man point cover, extra cover mid off. These the fielders of the offside. Down to the onside, there is a short mid on mid wicket and square leg. It's a good one. This time is nicely tap it down to the offside. Just in front of the fielders and changer and with a singles. Comfortable single for both of them. બહુ મજા આવે છે. The score is now moves on to 32 without loss. And so this time way down to the onside and there is signal from umpire. It was a wide. He wanted to hook it, not coming well up to the bat. હંસલ તું નીલને ઓવર આવ. One more extra and he has to go for the one more deliveries too. Score is 32. Both the batsmen, Jigar is 24. Now that's a clear boundary. Nothing wrong with deliveries. A while in the position, punchy to the cover into the fence for 4, and that's a glorious boundary. It was a fantastic four, sponsored by Farnova Kuchen. Looking like they are in too hurry to finish this match as well as possible. The score is jumps on 37 per no without any wicket. The 2 over has been so far finished. The current run is going 18.5 per overs. Nothing wrong with this striking rate. And both the batsmen, they are going for a very firing innings, sparkling innings played by so far Jigar Ariwala. He has faced only the 8 deliveries and made a 28 and got a 3 sixes and 2 boundaries. જીગર આરીવાલાને એવું છે કે 5 ઓવરની મેચ છે. જીગર 10 ઓવરની મેચ છે. હા. Rishi, he's on 7 with the 5 deliveries and of course he has hit a wonderful 6. હંસલ એક અંગત સલાહ છે, બહુ સારા બોલરને ઓવર નહીં આપતો, થોડા લલ્લુ પંજુને આપ. Hansel has been bowled so far 1 over no more than 24 and of course is a very costliest bowler so far. Raj Modi so far has been bowled 1 over no more than 20 run yet to have a wicket. They are in a desperately need to have a wicket. The score is 9. Target is only the 95 runs for fantastic FLW. The bowler setting the fielding down to the offside just behind him, beside this side screen. Outside the off stump and this time not a good footwork without coming into the line of the wanted to play. Missing completely and wicket keepers are collected. अभी मेहनत करी पड़े अभी. 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं. पावर प्ले यहाँ पे समाप्त है. थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव लाना चाहते हैं बॉलर यहाँ पे जो ऑफ साइड में दिखाई देते. एक पॉइंट है, कवर है, एक्स्ट्रा कवर डीप में है. थोड़ी सी फील्डिंग को बदलाते हुए ऑन साइड में एक खिलाड़ी को वहां से आगे फाइनल की तरफ भेज दिया है. So pitch one of course, but there is really let's what's going to open. There is a man coming under him and at last moment put it down. It was a very much more time into the air, an easy chance for them. It was just nicely but unable to hold it properly. It's a bad luck for the fielders and good luck for the batsmen. બહુ જ સારો પ્લેયર છે પણ છૂટી ગયો. Good one, but this time respected him playing down to the soft-handed bat down to the point. Reason for the single. काफी soft-handed bat का आपकी बार उन्होंने उपयोग किया. आज जिगरનો दोस्तार लागे છે. ऑफसाइड हुए गेंद थे. अपने आप को गेंद को आने का इंतजार किया था और केवल सॉफ्ट-हैंडल धीरे से हाथों से हल्के हाथों से उन्होंने खेल दिया था ऑफसाइड में 1 रन के लिए. Over pitch this one and that's it. There is a man is unable to stop it inside the boundary line after the one bounce ball is rushed into the fence for 4 run. That's a beautiful bound. It's a welcome bound once again. Sponsored by Farnova Kuchen. Score is now jumps on to 43.
This is 2.4 over in the progress. Run rate is now going to climb high 16.13. Once again into the air. Let's see, there is a coming under the ball. And once again it dropped. And possibility of a run out here is also survived. This time the chance to get himself back into the position. He was been halfway down to the pitch. नील ने बैटिंग के बॉलिंग नहीं आपसो तो कैच नहीं पकड़ से चौकी बात है भाई प्रयत्न सारो होतो नील 43 रन हो चुके हैं और विकेट की यहाँ पे तलाश है टारगेट है 95 रन का 95 रन टू विन दिस मैच द स्कोर इज 43 beautiful delivery this time. So all the way he's beaten in down to the arm side. Before he could do anything, ball was rushed into the gloves of the wicket keeper. So beautiful delivery. It's a lovely ball this time. He's finished over with that dot. A wicket keeper में कोई बाबाजी आया लगे बाबाजी. एले स्लीपर में. Third over is completed. Score is 44. And Dosia looking for the wicket. नील ने आ तमे बॉलिंग અને બેટિંગ નહીં આપશે એવું મેસેજ આપી ગયો છે તો એ નહીં પકડશે સામે વાળાને ખબર પડી ગઈ છે Jigar Ariwala is on 29. Rishi Khair is playing on 13. A bowler Kevin Solanki so far he has been bowled 1 over no more than 7 run yet to have a wicket. Hansal so far he has been bowled 1 over no more than 24 run yet to have a wicket. Spinner has been bought from this time. Right arm out wicket off break looking like that's down to the onside. There is a man who has to cover his ground down to the left side. And there is chance for the both the batsmen to cross their end. With the singles now, score now moves on to 45. This is the fourth over in the progress. आपके बार ओवर पीछे गेंद थी और पहले से ही उन्होंने गेंद को रीड कर लिया था कि कहां पे किस स्लॉट एरिया में गेंद आने वाली है बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को पिक करते हुए खेल लिया ऑन साइड में 4 रन के लिए हंसल नाइस बॉलिंग हिमांशु He's now tried to distract the bowler. He's shuffled across down to the arm side and there is a signal from umpire. એક ઇમ્પોર્ટન્ટ અનાઉન્સમેન્ટ જે પણ પ્લેયર એલઈડી ની અંદર બેઠા છે એ બધા રિક્વેસ્ટ છે એલઈડી ની પાછળ જતા રહો પ્લીઝ એલઈડી ની આગળ કોઈ નહીં આવે अब की बार गेंद हवा में जरूर है देखना है कि यहाँ पे कैच हो सकता है या नहीं दो खिलाड़ी के बीच लिटिल बिट कोलिजन बिटवीन द टू प्लेयर्स एंड दैट्स व्हाई द बॉल हैज बीन ड्रॉप डाउन આ નીલને આપણા તરફ લઈ લો ભાઈ need here the clear call from the either side of the fielders like he's कार्तिक कॉलिंग कार्तिक हंसल कार्तिक कॉलिंग काले यहाँ पे 50 के आंकड़े को पार करते हुए फैंटास्टिक पहुंचे 51 रन पे Himanshu is bowling right arm off break this time down to the offside wanted to make the room and cut it off but unable to timing it well gone into the gloves of wicketkeeper and returned to the bowler. Short of lamb this once and waiting for the ball and hammer it down to the offside. There is a man right on the boundary line picked up but not able to prevent the single. ભાઈ ઝહા ટીમના પેલા અમુક પ્લેયર હજુ એલઈડી ની પાછળ બેસે It's a good one this time. He shuffled across and he played ball just away from the batsman.
and he finishes over with the dots. So 4 has been completed now. The score is 52 per. They are with 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 52 रन यहाँ पे। फैंटास्टिक के दोनों ही ओपनर बैट्समैन का जहां तक सवाल है, जिगर खेल रहे 34 रन बनाते हुए, ऋषि खैर के लिए 15। दोनों ही बैट्समैन के बीच आपस में बहुत ही खूबसूरत तरीके से तालमेल और अच्छे ढंग से दोनों खिलाड़ी यहाँ पे खेलते हुए। जिगर ने 14 गेंद का सामना करते हुए उन्हें 34 रन बनाए, ऋषि ने 12 गेंद का सामना करते हुए 15 रन बनाए। हिमांशु ने जो अंतिम ओवर किया था, एक ओवर जिसमें 8 रन आए थे। बॉलिंग में आया है केविन, ये उनकी दूसरी ओवर की शुरुआत कॉम्बॉक्स की तरफ से। So over pitching this time, flick it down to the onside. Of course, there is a man on the boundary lines behind the square leg umpire. Now with a single, now scores goes up to 53. Jigar is now on the strike, who is playing a very aggressive innings. Once again, there is a man at the deep and last moment he has dropped it down. जितनी गेंद हवा में रही, यहाँ पे फील्डर गेंद को कैच नहीं पकड़ पाए थे आपके बाद। यहाँ पे जिगर को दान लाही मिलती हुई। Good shot, but there is a man. It's a lovely fiddly down to the offside. Very good fielding. They covered down to the left side and stopped the ball after the one bounce. He has to jump to prevent it 1-1. Of course, he has certainly has saved 3 runs for his team. Now score goes up to 54. It's a lovely play down to the onside. Flick कलाई का उपयोग किया अंतिम शॉट तक गेंद को देखकर last moment is flicking down using his wrist down to the onside for the Seagulls. It's a good flick stroke this time by the Seagull. It's now on 35. Score is 55. Yes, 56. There's the 4.4 over in the progress. Current run rate is going about 12 runs. So once again, some beautifully picked down to the offside. Nothing wrong with delivery. He's playing with the art of the bowlers. And once again, super fantastic six down is sponsored by Farnova Kuchen. Now 33 runs requires in 31 balls. 31 गेंद में 33 रन चाहिए। फिर से एक बार फ्लिक किया, बहुत ही खूबसूरत तरह से, किसी के लिए मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए स्क्वायर लाइन अंपायर के पीछे से निकल गई। That was a fantastic four, sponsored by Farnova Kuchen. So 5th over is finished. The score is 66, and of course from the fielder side they are badly looking for the wicket. Good partnership of this first wicket. 66 runs coming in, 32 deliveries. Both the batsmen settle down so nicely. They are feeling like this ball is not tennis ball for them, looking like the football for them. Rishi is now playing on his 27 with 2 boundaries, 2 sixes. Jigar 36, 3 boundaries and 3 sixes. Drinks is on the field. 2026 title sponsor Stanley and co-title sponsor Alcom. Also sincere thanks to our team sponsors SANDHYA Systems Private Limited, Cool Line by Daikin, Nexion, O General by Global Electrify Shop, Core, Equent, Ekai, Everest Fly and Zydex. Our appreciation to the auction sponsor NS Stonex, ground sponsor Viva, apparel sponsor Unimaple, golden window sponsors Surat Painter and side screen sponsor Intellisys Solutions. Thank you to our food sponsor On and Off, Litoria and Lexarte Living. We acknowledge our boundary line sponsors Kashtha, Shipra, Swestham, Serenity, Shivdhara and Insights by Maruti Hardware. Special thanks to 4 and 6 sponsor Farnova Kuchen, wicket sponsor Rowan Decor, man of the match
sponsor Guardian Glasses and drinks sponsor Zenu Blaster. Once again, thank you all for supporting Ballbet Tournament 2026 and the spirit of cricket and family games. So come, let's all together playfully enjoy this fabulous Ballbet Tournament 2026, the ultimate cricket showcase. Thank you. Drinks is off the field now. The sixth over in the progress now. End has been changed. The bowler has been brought from the get inside now. और कहा जाता है कि फेवरेट फेवर्स द ब्रेव. आप अगर रिस्की अगर स्ट्रोक लगाते हैं तब थोड़ा रिस्क लेना है. दोनों ही बैट्समैन बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे खेलते हुए. यहाँ पे सनलाइट की थोड़ा सा यहाँ पे डार्क मोमेंट यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन मैच के लिए कोई इतनी तकलीफ की बात नहीं है. स्कोर है 66 रन. यहाँ पे विकेट बिल्कुल चाहिए इस मैच का. जहाँ तक टारगेट का सवाल है 95 रन है इस मैच को जीतने के लिए. 29 रन चाहिए. 30 गेंद अभी बाकी है. एंड चेंज हुआ. बॉलर सामने वाले एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार. ऑफ साइड में एक स्लिप है. बैकवर्ड पॉइंट, डीप कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ जो ऑफ साइड में है. 5 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी जो ऑन साइड में लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और शॉर्ट थर्ड में फाइन लेग जिसे कहते हैं वो ऑन साइड में. 4 खिलाड़ी ऑन साइड में और 5 खिलाड़ी ऑफ साइड के साथ गेंदबाजी करने के लिए तेरे सामने वाले एंड से. फुल टॉस वन एंड दिस टाइम सैंड into the fans, over the fans for 6. Was a wonderful 6. Nothing wrong with it. Delivers a while in the position and pull it down to the onside over the mid wicket, over the square leg umpire. Sorry, for 6. Is sponsored by Karnova Kuchen. Now score jumps on to 72. Jigar is now on his 42. Rishi is playing with 27s. Required 23 runs in just 29 balls. Let's see within how many overs they are going to reach the targets. Still 23 runs as requires. Jigar requires 8 runs to finish his first 50 in this tournament. फिर से एक बार ऑफ स्टंप से बाहर थी. पहले से उन्होंने प्री डिटरमिनेशन स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, लेकिन अच्छी तरह से गेंद को उन्होंने अपना आप से दूर ढकेला ऑन साइड में मिड विकेट पे 1 रन के लिए. ऑफ स्टंप से बाहर थी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से पिक किया, लेकिन वहां पे खिलाड़ी मौजूद थे. लेकिन फिर से एक बार यहाँ पे स्कोर जिस तरीके से वो आसान सा कैच बन सकता था ड्रॉप कर दिया यहाँ पे. फिर से लोअर फुल टॉस की तरह उन्होंने गेंद को ले लिया था. देखना है कि वहां पे खिलाड़ी वो कैच पकड़ सकते हैं, लेकिन बाउंड्री लाइन के ऊपर से. और अंपायर का इशारा 6 रन का. ये देखिए हमारे अंकुर पटेल किस तरीके से हमें सिग्नल दे रहा है 6 रन का. Good partnership is still going on. 80 without loss. Jigar Ariwala requires only a 1 run to finish first 50 in this tournament. He's on 49. It's a good one this time. Way outside the off stump. Jigar Ariwala has played very carefully. Followed to back to the bowler. No question of a run. Still he requires a 1 more run to finish his first 50 in this tournament. So far he has been bowled to face the 20 delivered is 5 6s 3 4. This time pick him down to the long side. That's a wonderful 6 net. What a way that he has finished his first 50. He's now on 55. Is sponsored by Karnova Kuchen.
86 at the end of 6 over. Jigar Ariwala, who's just crossed his first 50, is on 55, facing 21 delivery, 3 boundaries and 6 sixes. What a way that he has finished his first 50. He's playing with a striking rate of 262 with the strike rate. Risik Khair is still there with him at the other hand, playing a very sensible cricket, giving a good support to his colleagues, who is on 55. Himanshu so far has been bowled 2 over, no maiden. Ball Joyesh, Juno ball आप ही रखो. हिमांशु ने अब तक 2 ओवर किए, कोई मेडन नहीं, 28 रन दिए. विकेट के जहां तक सवाल है, विकेट की तलाश है यहाँ पे, और अब चाहिए 9 रन इस मैच को जीतने के लिए. 24 गेंद बाकी, 9 runs are required in remain 24 deliveries. Rishi is now on a strike and getting ready to face the bowler from the get inside, and that is Raju Modi. So far he has been bowled 1 over, no more than 13 runs. This is second over of his ball. वहां पे गेंद उसके थाई पैड पे लगी थी और अपील की थी, लेकिन एलबीडब्ल्यू के लिए अंपायर अंकुर पटेल ने दिखा कि गेंद कहां पे लगी है. यहाँ पे दोनों ही अंपायर यहाँ के काफी जाने माने अंपायर, अंकुर पटेल और परेश पटेल. This time not coming into the line of the ball. There is a man coming under him. But once again, good chance, but unable to hold it. Ball is just dropped between the 2 or 3 players. Now scores, now requires only 8 runs. 87 without any wicket. Both the batsmen, Jigar on 55, Rishi is on 29. Raju Modi is bowling his second over. It's a lovely one. This time is watch it very carefully and just push it down, sharp handle it down to the offside at point reason and change their end. Countdown is almost started now. 7 runs required in remain 21 balls. Now Rishi is on the strike. He's charging down on the pitch and wanted to play missing completely. Wicket keepers collected and tried to break the wicket, but meanwhile Rishi was well back into his position. Required run is just 2.10 and current run rate is going 13.20. 7 runs required in 20 balls. I thought he wanted to vary his this time slower down to the onside, but unable to maintain his length in line. Ball is gone down to the onside and signal from umpire Ankur Patel. It was a wide one. One more extra run is added. Now score is on 89. 6 runs now needed to reach the target and to win this match. He's a drag himself and played down to the onside into the deep area at the mid-wicket region. There is a man who has picked up, but both the batsmen having enough time to crush over for a good single. .5 over in the progress. This time he found a gap, but there is a man who is backing behind. His only will get a chance to go for the shingles. And that's the end of first second over of Raju Modi. So far he has been bowled 2 over, no more than 18 runs. No one bowler is so far succeed to get a wicket from his opponent's side. 7th over is completed. Score is 91. And Dosi 11s, they are looking for a badly at least single wicket. But both the batsmen, they have been determined and playing very strongly against them. It's a very good sparkling inning by the Jigar Ariwala, and of course nicely supported from the others end by his colleagues Rishi Khair. In a way that he's also playing, facing 21 deliveries, made it 30 runs.
And Jigar Ariwala, he has faced only a 23 deliveries and made a 57 run. So far, he is a highest run maker. Let us see as the tournament progresses, how the match will be played here. Who is going to make the even more than Jigar? चार रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए. Once again playing down to the onside. There is a man coming under the aim. Yes, now. And Jigar is now way back to his pavilions. It was a short pitch delivery. Is not making time clearly. This wonder wicket in Ballbat Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. So Jigar is a long way back to this pavilion. He was playing a fantastic innings, and last moment he wanted to finish with the boundaries but unable to control, unable to getting the very clear elevation this time down to the onside, and there was a man coming very under the him and got it nicely. So first wicket is gone at the score of 91 run of fantastic FLW. The man out Jigar, who has played a fantastic aggressive innings as an opener. The new man is on the field is Patel Kartik. So full toss one and is signed in over the rope for the six, and that's a biggie, one of the biggest six this time. His Super 6 is sponsored by Karnova Kuchen. જીગર અને હંસલ ગ્રાઉન્ડ પર જ રહેજો. હંસલ જીગર કેપ્ટન. Dosi Devils won the toss and ball first. Imran, yellow stumps. Imran, yellow stumps. Nayan, Pratik, yellow stumps, please. Nayan, Abrotep, Pratik, Abrotep. Imran. Two fly ball, up jo, two fly ball.
यहाँ पे स्कोर है 18 रन। ये दूसरा ओवर चल रहा है, गेंदबाजी कर रहे हैं बिनल पटेल। अब तक उन्होंने 4 गेंद किए, 9 रन दे चुके, विकेट की तलाश है यहाँ पे। फैंटास्टिक एफएलडब्ल्यू ने यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करते हुए दूसरी ओवर का जहाँ तक सवाल है 18 रन बना लिए। दोनों ही ओपनर बैट्समैन अपने व्यक्तिगत 9-9 रन पे खेलते हुए। बिनल फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है यहाँ पे। शॉर्ट पिच गेंद थी अच्छी तरह से, वहां पे बिमल को उन्होंने खेल दिया ऑन साइड में मिड विकेट की तरफ। वो 4 रन यहाँ पे आते हुए अब स्कोर हो चुका है 22 रन। जैनी लहरी खेल रहे हैं 13 रन पर और गजेंद्र खेल रहे हैं 9 रन पर। अरे अच्छी गेंद थी लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से ऑफसाइड की गेंद को उन्होंने जैसे ही देखा कि अंडर स्पिन के साथ टर्न होने का इंतजार किया और ऑन साइड में खेल लिया 4 रन। इसी बाउंड्री के साथ अब स्कोर हो चुका है 28 रन और जैनी खेल रहे हैं 19 रन पर। बॉलिंग में परिवर्तन यहाँ पे बिनल पटेल 1 ओवर के 19 रन दिए, विकेट उन्हें मिली नहीं है अब तक। सोहेल मंसूर ने अब तक 1 ओवर की है, विकेट की उन्हें भी तलाश है। गेंदबाजी में पता सीनियर मोस्ट पर्सनालिटी अब गेंदबाजी करने के लिए फिर यहाँ पे तैयार होते। एक थोड़ी सी क्विकर गेंद थी, अच्छी तरह से गेंद को टर्न के सहारे ऑन साइड में खेल दिया, कलाई का उपयोग करते हुए यहाँ पे। व्हाइट बॉल का इशारा यहाँ पे लेग स्टंप पे थी और बैट्समैन जैनी ने देखा ही नहीं जाने दिया था ऑन साइड में। उन्हें पता था कि क्या होने वाला है। किरण गेंदबाजी करने के लिए तैयार, जैनी को अब की बार ऑफ स्टंप से बाहर। ये थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, चांस था यहाँ पे लेकिन गेंद ऑन साइड में निकल गई और इसके साथ यहाँ पे बाउंड्री क्रॉस हो गई 4 रन। Sponsored by Farnova Kuchen. सो वेरी वेलकम बाउंड्री फ्रॉम जैनी और उन्होंने 25 रन बना लिया। जिस तरीके से वो खेल रहे स्मृति मंदाना की यहाँ पे याद आ रही है। फिर से एक बार अच्छी तरह से गेंद को पिक करते हुए ऑन साइड पे खेल रही है, वहां पे सामने खिलाड़ी आया लेकिन मिस फील्ड हुई, गेंद उसे बीट करते हुए निकल गए बाउंड्री लाइन के बाहर। Sponsored by Farnova Kuchen. किरण जी तैयार गेंदबाजी करने के लिए जैनी को। काफी स्पार्कलिंग इन्हें धुआंधार बैटिंग करते हुए यहाँ पे लेग स्टंप से काफी ज्यादा बात थोड़ी क्विकर भी गेंद थी, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। 31 रन का यहाँ पर इजाफा होता हुआ। ये बहुत ही खूबसूरत चतुराई के साथ कलाई का उपयोग करते हुए फ्लिक कर दिया था ऑन साइड में, थोड़ा सा अपने आप को आगे ट्रैक किया था। जिस तरीके से जैनी क्रिकेट खेल रहे हैं, लगता है उन्हें क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ पता है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने आप को थोड़ा सा has been dragged down to the offside and using the his wrist last moment and played down to the onside was single। यहाँ पे ये ओवर भी समाप्त हुआ। फिर से एक बार चौथी ओवर का सामना करने के लिए उन्हें स्ट्राइक मिलेगी। स्कोर हो चुका है 42 रन। यशवी गेंदबाजी करने के लिए अब आए हैं। 3 ओवर में 42 रन, 14 रन प्रति ओवर यहाँ पे करंट रन रेट चलता हुआ। ये अच्छी गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद थी, थोड़ी सी हवा में थी, लुपिंग जिसे कहते हैं। खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के नीचे से निकल के कनेक्ट नहीं कर पाए थे लहरी। बयालीस रन, ये चौथी ओवर चल रही है। दोनों ही सलामती बल्लेबाज ने अब तक बिना
किसी गलत तरीके से खेले हुए, अच्छी पार्टनरशिप यहाँ बिल्ड करते हुए। गजेंद्र खेल रहे 10 रन पर, जैनी खेल रहा है 32 रन। यहाँ पे गेंद हवा में जरूर यहाँ पे देखना है कि बहुत खूबसूरत तरीके से फील्डिंग, वहाँ पे गेंद को फील किया जब तक कि थ्रो करे, दूसरा रन लेने का भी मौका मिल गया था। कपल ऑफ रन इज देयर ऑन द लास्ट डिलीवर. Now score moves up to 44 for loss of wicket. Cheney is now playing on his wins with a score 34. Good one this time, coming off one break. Let us see is able to catch it or not. No, he's unable to catch it. It was a off break delivery. Cheney but picked up nicely, playing into the air. Lucky for him not to get catch. Now scores gone to 45. Short pitch one and making the room for is and a very good magically fielded there by one more females. He has just stopped it using his leg down to the left side. Prevent a wonderful boundaries now. Good cricket here by females. Cheney season 35. She has faced 14 deliveries, 3 boundaries and 2 sixes included in her individual score of 35 runs. Gajendra is playing on 9. Once again a short pitch one, but straight to the fielder. He has made no mistake, and now way long back to the pavilion as Chinese Lahar is now out. It's a wonderful innings by Hart. 2026 is brought to you by Rowan Decor. Cheney long walk to the pavilion. So made a wonderful runs, innings of 33 runs included. So wonderful boundaries and 6. Beautiful performance by Cheney. So fantastic FLW lost the first wicket in the form of Cheney. 48 for 1. 4th over is completed. Current run is going about 12 runs per over. Krutiga Jigar Patel is now going to bowl. Way outside the off stump, and umpire declares a wide one. So started his bowling with extra wide delivery. This is bowling to Gajendra this time. Outside the off stump, Gajendra waiting for the ball and punch it down to the onside, but only able to get the single this time. Now strike is rotated and a new batter is there to face. Oh, he played so early. Ball came late, little bit lucky for him not to hit on the wicket this time. New batter is Kritika Jigo Patel. Once again, short pitch delivery is a lovely play down to the onside. There is a man at the mid wicket who has stopped it using his left hand and saved a certain 3 more runs for her team. He's got a nice catch and able to get the first wicket. It's a good contribution for him to have a first wicket for his team. Now Gajendra is facing to bowlers. Short pitch one, but unable to hit it hard. There is a man in the deep able to stop it very clearly. And there is chance for both the batsmen to crush over for good single. With that singles now, of course, moves on to 53. आपकी बार ऑफ स्टॉप से थोड़ी सी बाहर थी, लेकिन अच्छी तरह से गेंद को देखते रहे और ऑन साइड में खेल लिया वाइडेस्ट मिड ऑन की तरफ 1 रन के लिए. After the 5 over, fantastic FLW 54 for loss of 1 wicket. Only a better out.
Score now moves on 55. Gajendra is on 11. Kritika is playing with 3. This time quick one delivery, just missing the off stumps. Little bit frustration for the bowlers. He was optimist looking for the wicket. Bowler is Mahindra once again getting ready. Oh, this is lower full toss down, playing nicely down to the straight to the fielders behind the bowlers and getting single easily. He has been came out with the stroke. Nice disappointed from the other side of his colleagues. Oh, the hip once again he played very early and ball came late, passed through his blade. Wicketkeeper collected and returned to the Mahendra. So flighted one, but very clever cricket this time. Realize Lovely using his wrist at the last moment, turning down to the onside for the single. Sixth over is now finished and score is 57. Gajendra remained not out on 4. Kritika remained not on
to strike. He's a left-handed batsman, so bowler has to change some of the fielding situation either side of the wicket. Majetia is now on the strike, and Kevin is getting ready to bowl him. He's only the successful bowler in the very first delivery. He has broke the wicket, broke the partnership. It's a good ball, quicker one, lovely coming into the batsman, but Majetia has a violent position, put it down to the point reason for the singles. Lovely play down to the offside. Nothing wrong with delivery, but he realized that it is needed to rotate the strike. Now the right-handed batsman is coming to face the bowler. It's a good one bowl. This time he wanted to go for the hard hitting it, missing completely. Just outside the off stump, just gone below the blade. Lucky for him now. Missing the off stump, just outside the off stumps. It's a good ball, good dot ball with he has finishes over. So 4 over has been completed. Now the score is 47-1. Fifth over in the progress, score is so far 47 for 1 of fantastic FLW. Little bit conversation amongst fielders with their captain. Presh is 9, Chirag is on 11. Kevin, only the successful bowler that he has given 10 runs and got the first breakthrough for his team. Now, left-handed batsman Chirag is getting ready to face the bowlers. So, 4 men occupied down to the offside. 1 man in the semicircle at the square leg side is called. 3 men out of the semicircle. 1 is in the deep. First ball was full toss 1, and with a high elbow action he is played down to the offside. 3 men are there, unable to cut it off, and ball is just crossed the boundary rope, and that's a good four. Sponsored by Farnova Kuchen. With a high elbow action is played down to It the was full toss offside. delivery, and Chirag was well in the cut it position with a off. high elbow action. He has played into the coverage and perform. Very welcome boundary by him. Plus good stroke. Nothing much more power behind, but timing was so well behind that stroke. Yeah, that's a good one. That's a variation he has brought in this time in his delivery. Is a slower down. उन्होंने गति परिवर्तन किया last moment में जिसे कहते हैं change of pace this time, and Chirag was desperately deceived on that delivery particular. It's over pitching very close to his body, but there is a man coming under the him, and he dropped it and over the raw for 6. Super 6. His Super 6 is sponsored by Farnova Kuchen. Very close to the ball. Looking like that it was easy for him. He was very close to the rope, and Man, last he dropped ball was it jumped through his and palm over the and rope. over the rope for 6. So very fortunate 6 for Chirag in a way that he has played the lower full toss delivery. Of course, he's got a life on that delivery. Now score jumps on to 57. There's the 4.3 overs in a progress. Himanshu Patel is now getting ready to bowl the left-hander Chirag. Wicketkeeper wants something different here down to the onside. He wants some fielding changing. That's a good one. This time try to bring in to the left-handed batsman. Chirag very watchfully forward. It played back to the bowler. Good dot ball this time. That's a lovely flick. I don't think there is any chance to cut it off.
fine. So White is very close to the body, using his wrist so Good nicely, dot ball generate the this power. time. This now flick it down to the onside. This Beautiful Super six. Six is sponsored by It's a Farnova lovely Kitchen. flick. I don't think there is any chance to cut it up. Fine. So White This is now very sweetly timed down to the onside. What a wonderful six. Oh, that's a very slow delivery. He was being surprised with that delivery, looking for the hook shot down to the onside. He knows that nobody is behind the wicket keepers, and unfortunately, he's missed that delivery. And that's the end of our fifth over. Now, Drink is on the field at his worst. Current run rate is 12.60 per over. Score is 61 per loss of 1 wicket. Chirag Majidya is with 27. Press Desai giving good support from the other side, playing a very sensible cricket on his individual score of 9. Himanshu finishes first over with a 16 run, yet to have a wicket. And Kevin Solanki so far he has been bowled 1 over no matter 10 runs and he's got a 1 wicket. With immense pride and gratitude, a heartfelt thank you to our Ball Bat Tournament 2026 title sponsor Stanley and co-title sponsor Alcom. Also sincere thanks to our team sponsors Thalessia Systems Private Limited, Cool Line by Daikin, Nexion, O General by Global Electrify Shop, Core, Equent, Ekai, Everest Fly and Zydex. Our appreciation to the auction sponsor NS Stonex, ground sponsor Viva, apparel sponsor Unimaple, golden window sponsors Surat Painter and side screen sponsor Intellisys Solutions. Thank you to our food sponsor On and Off, Litoria and Laxate Living. We acknowledge our boundary line sponsors Kashtha, Shipra, Swestham, Serenity, Shivdhara and Insights by Maruti Hardware. Special thanks to 4 and 6 sponsor Farnova Kitchen, wicket sponsor
छठी ओवर की पहली गेंद थी, अच्छी तरह से उन्होंने ऑन साइड पे खेलते स्क्वायर लेग अंपायर के ठीक पीछे ढकेल दिया था 1 रन के लिए। यहाँ पे स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 64 रन। यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाज अब अच्छी तरह से निगाह करके पहला विकेट गिरा था वहाँ पे, उसके बाद जो वन डाउन प्लेयर है वो भी अपनी एक अच्छी जिम्मेदारी यहाँ पे निभाते हुए अपनी टीम के लिए आगे बढ़ता हुआ। और प्रेस देसाई जो अब खेल रहे हैं 10 रन पर, चिराग अभी भी मौजूद है वहाँ पे 27 रन बनाते हुए। हंसल गेंदबाजी करने के लिए, उनकी ये दूसरी ओवर है, सामने वाले गेट से गेंदबाजी कर रहे हैं। आउट होने वाले खिलाड़ी हो जिगर पटेल, जिन्होंने 23 रन बनाते हुए उनको पवेलियन की तरफ जाना पड़ा था। उनको बहुत ही खूबसूरत कैच वहां पे डीप मिड विकेट पे खड़े खिलाड़ी ने लिया था। फिर से एक बार सामने वाले एंड आते हो ऑफ स्टंप से ज्यादा बार, इस कवर इज लाइन्ड एंड अलाउड टू गो इनटू द विकेट कीपर ग्लोव्स। हालांकि जो फर्स्ट विकेट गिरा था तब स्कोर था 37 रन, जो जिगर पटेल के रूप में गिरा था। सो वो पीछे डिलीवरी यार बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल ग्राउंड स्ट्रोक खेला था, लेकिन 1 रन जरूर यहाँ पे मिला। स्कोर हो चुका है 66 रन। यहाँ पे छठी ओवर चल रही है। हंसल की ये गेंद को बहुत ही अच्छी तरह से पिक किया, लेकिन वहां पे जो खिलाड़ी वो बिल्कुल देखते रहे, गेंद उनके ऊपर से निकल गई 6 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला हुआ है। वन ऑफ द फैंटास्टिक सिक्स नाउ। Now Chirag jumps onto 34. That's a brilliant six just to play in the last ball. Picked up so nicely over the head of the bats fielders there. Once again try to hit it hard, not getting connection quietly with the bat, but anyway he's able to get the run. Ball has gone down to the onside. With a single now, score goes up to 73 per 1. Now Chirag Matheja has put himself in the top gear now. He's playing on his individual score of 35 and just facing a 17 deliveries, including 4 sixes and 1 boundaries. His striking rate is about 205. What a wonderful striking rate that he is playing. Sixth over is now completed. His current run rate is going about 12.17 per over. Hansal, he has completed the quota of his 2 over, no more than 19 runs and looking for the wicket. Himanshu Patel, he has been bowled 1 over, no more than 16 runs, and of course he is also looking for the wicket. Only 1 wicket is down. A fantastic FLW. So opener batsman back to the pavilion, making it a 37 run. जिगर पटेल जिन्होंने 23 रन बनाया था 13 गेंद का सामना करते हुए उन्हें कैच आउट किया था, उन्हें अपने डगआउट की तरफ जाना पड़ा था। दोनों ही खिलाड़ी चिराग और प्रयास बिल्कुल अच्छे तालमेल के साथ यहाँ पे खेलते हुए। से एक बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से फ्लिक स्ट्रोक किया और बहुत ही फैंटास्टिक सिक्स कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपकी बार। His super six is sponsored by Farnova Kuchen. एक बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से फ्लिक स्ट्रोक किया और बहुत ही फैंटास्टिक सिक्स कहते हैं।
Score now jumps on to 79. That was a wonderful flex shot, pick very close to the body. Generate the power so nicely through his wrist and played over the fans for 6. One fantastic 6 now. It's a beautiful timing stroke. So full toss one this time. There's a let us see how. Oh, there is not even the call between these two fielders, so that's why they have dropped the catch. A little bit collision between these two, and it was a full toss. They were played a high injury and much more time into it. There is a chance for the 2 or 3 players to come under the line of the ball. Fielders, so but there was not a clear communication amongst the dam, and that's a ball. They had dropped the catch. Put it down this time. Once again, it's got alive. Score is now 80. Majetia moves on to 42. Now brought the press Desai on the strike, who is playing with 11. Pankaj Shutar is bowling his second over from this the second one over, and this time from the gate inside his bowling. अब तक वो 19 रन दे चुके हैं, विकेट की यहाँ पे उन्हें तलाश है. So over pitching, and it's a lovely cover driven, but I hope so there is a man in the deep. Fell nicely, only get a chance to go for the single. So over pitching just outside, the while the position timing is so well. It was a very delicious ground stroke. With the singles now, Chirag is now brought on to strike. He's on 42. Require 8 runs to finish his 50. अच्छी तरह से पिक किया, लेकिन देखना है कि वहां पे क्लियर हो जाएगा या नहीं. और इसके साथ अंपायर का इशारा 6 रन का. लॉन्ग ऑन की तरफ की बार खेल दिया था स्लॉट एरिया में. टाइमिंग बहुत ही खूबसूरत था. तरह से पिक किया, लेकिन देखना है कि वहां पे क्लियर हो जाएगा या नहीं. और इसके साथ अंपायर का इशारा 6 रन का. It's a good partnership is going to build between these two players. 50 रन पार्टनरशिप, यहाँ पे 50 रन की पार्टनरशिप भी उन्होंने पूरी कर ली 21 गेंद का सामना करते हुए. दूसरी विकेट का जहां तक सवाल है, 50 रन की पार्टनरशिप यहाँ पे दोनों खिलाड़ी की पिच पूरी होती है. स्कोर हो चुका 87 रन 87. अगर यही अंदाज चलेगा, प्रोजेक्टेड स्कोर 130 की आजू बाजू होने की संभावना. फिर से एक बार ऑन साइड में खेल दिया है. देखना है कि वहां पे खिलाड़ी मौजूद है. तप्पा खाने बाद गेंद को उन्होंने फील किया. एक ही रन लेने का मौका मिलेगा. इसी 1 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे. अच्छी तरह से दोनों बल्लेबाज एक दूसरे के साथ तालमेल रखते हैं, स्कोर को रोटेट करते हुए. इट्स अ गुड फैंटास्टिक स्ट्रेटजी बिटवीन दिस टू प्लेयर. दे ट्राई टू रोटेट द स्कोर board as well as possible. 88. Now Press is on the strike. Is charging down at the wicket. Lovely at the last moment using his wrist, flick it down to the onside. Only a single is there, but lovely classical looking stroke this time. He realized that charging down on the pitch, and last moment he's using his wrist. With a single, 7 over is now finished, and score is 89-1. Chirag Majetia, who is on his individual score of 49, he requires only 1 run to finish his first 50. Of course, I have seen a first 50 already made in this tournament in a very first match. Eight over is going to start from the gate inside. Let's see who is going to come to bowl. Very good wicket side now. Flat wicket is there. Ball is coming nicely well up to the bat and well up to the batsman even. Just to stay on the wicket. Press now getting ready to face the bowler. 3 men is in a semicircle, 2 men is out of this semicircle. Oh no, this time back foot
Scored. Let's see what's going to happen. And he's been put down this time. Easier one. Nothing wrong with that ball. He played well up to the back foot, not timing it well. Unable to clear the elevation. Lucky for him that he's got a life on that particular delivery. Of course, he got a single and brought the Chirag on the strike. Require 1 rate. He's on the 49, facing 21 delivery so far. 6-6-6 and 1-4. He's playing with 233 striking rate. Or let's say either of the blades or ball is running down to the third, and that signals it is in the 2 line, is the golden line. Striking rate. That was a fantastic four, sponsored by Farnova Kuchen. Either of the blades or ball is running down to the third, and that signals it Score is is the 2 line, 94, is the and golden line. Chirag Vajeta, it was just got an edge of the bat, and ball is running down to the third man. He has completed his half century. He is now 53. Oh, once again into the air. Let's see what's going on here. And at last moment, Chirag has played very exhausted. A wrong song of selection without coming into the line of the ball. Wanted to hitting over to the mid on side. Unable to control himself, and ball is gone to the. Let's see what's going on here. And His at wonder last wicket moment, involvement Chirag tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. It was a good ball this time. He's in the hard lane of the wicket, and he of course has purchased a wicket looking like that. But the wonderful innings comes to end. Very entertaining innings comes to end of Chirag Bajetia. That he finishes 50, and one wrong shot of selection took him to the pavilion side. Anyway, it's a cricket. It's a part of the game. 7.3 overs is so far done. Score is 94-2. Newman is on the field. Is Patel Kartik. He's now joining with Praise Desai. That's a pitch. It's a wonderful hit. No chance for anyone to just looking like that where the ball is going on. And a signal from umpire Ankur Patel as a 6. A wonderful 6. So right into the slog His area. Super 6 is sponsored by That's Farnova our pitch. Kuchen. It's a wonderful hit. No chance for anyone to just looking So like that. first where time in the this ball is tournament going now, on. 100 run is coming. 100 per loss of 2 by FLW. Patel Kartik shows his intention very clearly that he has been here to play the very sparkling innings. Once again over pitching this time, control himself, playing down to the offside. Good ground stroke for the single. There is a man in the covers, picked up and returned to the bowler. And that single brought the Press Desai on the strike, who is playing on his 14. Kartik is on 7. Press is on 14. Asa got an edge, and there is no chance for anyone to cut it off. And passed across the boundary line for 4 runs. And that was a fantastic four, sponsored by Farnova Kuchen. की बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था और विकेटकीपर और रोजन फील्डर को भी बीट करते हुए गेंद निकल गई थी बाउंड्री लाइन और इसी 4 रन के साथ अब स्कोर हो चुका है 105 रन 2 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर समाप्त हो चुका है। देसाई प्रेस खेल रहे 18 रन पे, कार्तिक खेल रहे 7 रन पर। अभी भी 12 गेंद होने को जाने को बाकी है। देखते कि 12 गेंद में कितने रन आते हैं यहाँ पे। और इस बार ये पहली इस मैच हुई यहाँ पे इस टूर्नामेंट की, यहाँ पे स्कोर ओवर 100 हो चुका है। Premal has been brought from the gate inside. This is the 9th over in the progress now, and Patel Kartik is getting ready to face him. It's a full toss delivery and played down to the over the screen for 6. A fantastic 6. Nothing wrong with delivering the way there's picked up it and easily played over the rope for 6. It's a beautiful 6.
Score is jumping like anything, and now current run rate is climbing high. It goes up to 14.33 per over. Score is now 117 for last of 2 wicket. It's the 9th over in a progress. Score is now 170 to the loss of 2 wicket. Captain having a little bit conversation with the bowlers how he has to bowl in these slog situations. Kartik is 19. Once again, the full toss delivery. Let's see what's going on here. Two men are coming under him. Once again, there is another good conversation between these two players, and that's why they are dropping this catch. It was once again easy time for them, but there is not a clear communication between these two players who is right on the boundary line. One is from the mid wicket, the other one from the widest long on. Required to give the call that is going to clear it. Miscommunication anyway. 119 now. Score is short pitch one, and that's some pull it over the squalic for 6. Super 6. This Super 6 is sponsored by Pernova Cushion. Now projected score would be the 150. 1-5 for 2. Short pitch, of course, but this time not timing it well. There is a possibility of catch. Once again, they drop it. It was an easy chance for the bowler. Cotton ball possibility out there. But last moment, they drop it down. The man is getting the life. Score is moving. (126 for 2). In last two deliveries, they have dropped a consecutive catch. Premal is bowling to short pitch delivery this time. Once again, a man is coming under him. Yes, last moment this time he succeeded. Last one, there is a man who has hold it properly, and that's a follow another wicket. What a wicket! This wonder wicket in Ballmat Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. (126 for loss of 2 wickets. A good partnership coming, and वो कैच पकड़ने वाले प्लेयर्स का नाम सर? Once again, there is a chance for the cat. Let's see what's going on. Yes, toss, and in the second effort, he's got it. So now he's on the chance of hat-tricks. New batsman was a Dermis. Jesse came and going back to the pavilion. What a wicket! This wonder wicket in Ballmat Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. So that's end of for 9 over. Score is 126 for 4. In the last ball, he's got the wicket. Batsman name? Hate Patel. Yes. No man is Hate Patel is middle of the pitch now. Last over to go, 6 ball to go. Let us see how many runs going to come in this over. The project score is showing us more than in between the 140 to 145. Kartik is still there on the pitch. He's playing on 28. Hate is just come yet to open his count. Himanshu Patel so far has been 1 over, no more than 16 yet to have wicket. Premal is the only successful bowler.
that he has been bowled 2 over, no maiden 37 run and captured a 2 wicket. Himanshu Patel is bowling from the get inside. There's a one man in the very closing side. Short third man, backward point, deep cover, short extra cover. Oh, picked up nicely, nothing wrong with it. It's a clear 6 and gone very, very far away. It's a big one, it's a big 6 now. So wonderful 6. This Super 6 is sponsored by Farnova Cushion. So picked up so nicely and sanded out of the park. So very huge 6 this time. Now score jumps to 132, 132 per 4. This time waiting for to come. That is a man under the aim and given a very easy catch. He's up the back foot, punch it down to the deep point region. Unable to clear the elevation. There is a man under him and got it clearly. This wonder wicket in Ball Bat Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. Not easy to clear the elevation this time in the way that he has played that stroke. He was well back foot and ball was came above the height than he was expecting. Now score is 132 for loss of 5th wicket. Both batsmen are the new and fresh. New one is Bhagyesh Height. Both have to yet to open his count. Himanshu Patel is getting the very first wicket. That's a good one. Ball is. Let us see what's going up the pad or bat. We are waiting for umpire signal. Yes, signal from Pakur Patel. It was up the pad as a leg by. He's got a run. One more extra score now goes up to 133 for 5. This time not coming into the line of the ball and he went for the full drive, missing completely wicket keeper's collector and return to the bowler. Good dot ball is coming. Now it's got entered. That is a one man's against and beautiful taken. It's a lower down looking like that. But at last moment he hold it so nicely in a similar manner. What a wicket! This wonder wicket in Ball Bat Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. So in a similar patient, Himanshu Patel has got the second wicket in a deep pointer region. But this time it was not an easy catch one. Hold it so nicely. So 6th wicket is gone. Score is 133 per 6 of fantastic. Batsman name? Last ball, chippy ball. Oh, straight to the bowler this time, and that's a end of a 10th overs. What a wicket! This wonder wicket in Ball Bat Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor.
Shop, Core, Equent, Ekai, Everest Fly and Zydex. Our appreciation to the auction sponsor NS Stonex, ground sponsor Viva, apparel sponsor Unimaple, golden window sponsors Surat Painter and side screen sponsor Intellisys Solutions. Thank you to our food sponsor On and Off, Litoria and Laxate Living. We acknowledge our boundary line sponsors Kashtha, Shipra, Shreshtham, Serenity, Shivdhara and Insights by Maruti Hardware. Special thanks to 4 and 6 sponsor Farnova Kitchen, wicket sponsor Rowan Decor, man of the match sponsor Guardian Glasses and drinks sponsor Zenu Plaster. Once again, thank you all for supporting Ball Bet Tournament 2026 and the spirit of cricket and family games. So come, let's all together playfully enjoy this fabulous Ball Bet Tournament 2026, the ultimate cricket showcase. Thank you. कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे हो चक दे इंडिया 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 ટીમના પેપર્સ કોની પાસે કૌશલને બી આપી દઈએ બેટ્સમેન કોણ છે યાર ભલે કોણ ફરતું હોય આ કોણ છે બેટ્સમેન સામે કોણ લાગે સ્ટાઇલ પર બેટ્સમેન પંકજ અને હંસલ બે આમ સાહેબ પેલો બેટિંગ પર હાલો કઈ નહીં ચાલ હું વાત કરું બેટ્સમેન ચિરાગ કે બોલર બોલર ચિરાગ પછી બેટિંગમાં પંકજ છે
134 रन का सामना करने के लिए दोनों सलामती बल्लेबाज यहाँ पे आ चुके हैं डोसी डेड 11 के। अब तक स्कोर हो चुका है 2 रन। यहाँ पे लेफ्ट आर्म ऑर्डर लेग ब्रेक करते हुए अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी फ्लाइटें थी, अच्छी तरह से गेंद को देखा, अपने आप को पोजीशन करते हुए उन्होंने कवर में खेल दिया 1 रन के लिए। 1 रन के साथ यहाँ पे अब स्कोर 3 रन पहुंच चुका है। चिराग गेंदबाजी करते, काफी छोटे रनअप से गेंदबाजी करते, लेकिन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद, उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को सफल किया था, विकेट को ओपन करके खेलने का प्रयास किया था, गेंद बल्ले पे सही ढंग से आई नहीं। अच्छी गेंद, अच्छी डॉट बॉल के साथ अब की बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर की तरफ थोड़ी सी निकली थी। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिन गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे आज बैटिंग भी बहुत ही खूबसूरत की और यहाँ पे अच्छी तरह से बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए चिराग। फिर से एक बार अच्छी, जैसे ही देखा कि थोड़ा सा उन्होंने विकेट ओपन किया, अपनी गेंद में थोड़ा सा वेरिएशन लाया, पहली गेंद के मुकाबले थोड़ी सी तेज गति से यहाँ पे गेंद भी की थी चिराग ने, बीट किया बैट्समैन को। ये फुल टॉस गेंद और यहाँ पे विकेट होने की संभावना, इसके साथ यहाँ पे पहला विकेट गिरता हुआ। स्ट्रोक के पीछे इतनी ताकत नहीं दे पा रहे थे और चिराग में वहां पे कवर पे खड़े खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की, एक आसान सा कैच होता हुआ पहली विकेट यहाँ पे गिरती हुई। This wonder wicket in Ball Bat Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. डोसी डेयर 11 के कप्तान से गुजारिश है वो 12वां प्लेयर को यहाँ पे भेज दे। हेलो हर्ष, हर्ष गज्जर અહીંયા આવી જાઓ એક જણ। फिर से एक बार चिराग अच्छी गेंदबाजी का स्विफ्ट खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाया था, गेंद बल्ले के नीचे से निकलते विकेट कीपर के दस्ताने में। पहली ओवर में सफलता मिल चुकी है, स्कोर है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पल्ले पे जरूर आए, लेकिन शॉट थर्ड मैन पे करे खिलाड़ी ने अच्छी तरह से गेंद को फील करके थ्रो किया और इसी के साथ यहाँ पे एक सफल ओवर समाप्त होती हुई चिराग मजीठिया की। पहली ओवर में उन्होंने सफलता, एक अच्छा यहाँ पे उनका परफॉर्मेंस दिखाई रहा था। हेलो सर, अनाउंस फॉर ऑल ऑफ यू आफ्टर 10 मिनट्स लंच विल बी स्टार्टेड। 10 मिनट के बाद लंच स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे जो कि जितने भी हमारे खिलाड़ियों से गुजारिश है कि वो 10 मिनट के बाद तैयार है। वहां पे एक ओवर समाप्त हो चुका है, स्कोर है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरी ओवर की है पहली गेंद, फुल टॉस गेंद थी, अच्छी तरह से गेंद की लाइन में आते कलाई का उपयोग करते हुए ऑन साइड में खेल दिया, टर्न किया था, सिंगल के साथ यहाँ पे शुरुआत करते हुए। फील्डिंग अच्छी की थी, लेकिन थ्रो जिस तरीके से आना चाहिए वो थ्रो की दिशा इतनी अच्छी नहीं थी, थोड़ा सा फ्लाइट होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन 1 रन चुरा लिया दोनों बैट्समैन के। इस बीच ये 6 स्कोर हो चुका है, 6 रन दूसरा ओवर चल रहा है। दोनों खिलाड़ी परिमल और पंकज खेल रहे 2-2 रन बनाते हुए। गेंदबाजी कर रहे धर्मेश पटेल।
ऑफ स्टंप से बाहर थी, थोड़ा सा लाइन में आके खेलने का जरूर प्रयास किया था, लेकिन फिर भी गेंद की पिच तक नहीं पहुंच पाए। विकेट कीपर ने कलेक्ट करके वापस कर दिया बॉलर धर्मेश को। एक स्लिप, डीप पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ है ऑफ साइड में, और ऑन साइड में वाइडेस्ट मिड ऑन थोड़ा सा डीप है, मिड विकेट सेमी सर्कल के अंदर, स्क्वायर लेग और थर्ड में। बहुत ही खूबसूरत तरीके से, अच्छी तरह से सॉफ्ट हैंडल जिससे कहते हैं, बिल्कुल बॉटम हैंडल का उपयोग करते हुए गेंद को धीरे से पुश के दिया था ऑन साइड में, और एक रन के लिए दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े। यॉर्कर लेंथ डालने का प्रयास था, लेकिन बहुत ही इतनी अच्छी तरह से गेंद को खेल दिया ऑन साइड में, इतनी अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लेकिन इतनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट भी यहाँ पे दिखाई दी दोनों बल्लेबाज के बीच। 8 रन हो चुका है। ओवर पिच डिलीवरी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से गैप ढूंढ निकाला और ड्राइव किया, गेंद निकल गया एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत चौका। Sponsored by Farnova Kuchen. इसी 4 रन के साथ अब स्कोर हो चुका है 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दो ओवर समाप्त हो चुका है, तीसरी ओवर की शुरुआत होने को जा रही है। अभी भी दोनों बल्लेबाज 1 विकेट के बाद थोड़े से अपने विकेट को संभालते हुए, अच्छी जहां पर उन्हें जो एक गेंद मिलती है, थोड़ी सी पुअर गेंद मिलती है, उस पर अच्छी तरह से रन बटोरने का यहाँ पे प्रयास करते हुए पंकज सुथार खेल 3 रन में, परिमल बना खेल रहे 7 रन बनाते हैं। कुल स्कोर है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। चिराग ने 1 ओवर किए, काफी इकोनॉमिकल रहे, जिन्होंने 4 रन देते हुए पहले विकेट लेने में उन्हें कामयाबी मिली थी। उसके बाद धर्मेश पटेल आए, जिन्होंने 1 ओवर किए, 8 रन दिए, विकेट की उन्हें जरूर तलाश है। अच्छी गेंदबाजी करते चिराग ने अपने आप को दूसरी ओवर के साथ संभाला है। यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स गेंदबाजी अच्छी तरह से फ्लाइट कर रहे हैं और वेरिएशन गेंद में लाने का प्रयास कर, राइट हैंड बैट्समैन के लिए बाहर की तरफ गेंद को निकालते हैं। आपकी बार अच्छी गेंद थी, अंदर आई थी, थोड़ा सा प्रयास था ऑन साइड में खेलने का, लेकिन लास्ट मोमेंट तक अंपायर ने देखा और जैसे ही देखा उनके बाद थोड़ा सा ही टुक द टाइम एंड लेटर ऑन डिक्लेयर्ड इट वाज अ वाइड बॉल। एक एक्स्ट्रा रन यहाँ पे मिलता हुआ। वो पिच डिलीवरी, लेकिन अब की बार ड्राइव किया, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, 1 ही रन से संतुष्ट मानना पड़ेगा। इसी 1 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। ऑफ स्टंप पे थोड़ी सी गेंद रखी थी, हवा में करने का प्रयास था, ओवर पिच गेंद अब की बार हुई थी, ड्राइव जरूर किया था, लेकिन स्ट्रेट टू द फील्डर जिसे कहते हैं, 1 रन मिला। यहाँ पे थोड़ी सी फील्डिंग में परिवर्तन चाहते हैं यहाँ पे चिराग। उन्होंने ऑन साइड पे एक खिलाड़ी को ऑफ साइड में ज्यादा रखा है, सेमी सर्कल में बुला लिया है। वहां पे जो स्क्वायर लेग अंपायर के ठीक बगल में खड़े थे फील्डर्स को उन्होंने कवर पे बुला दिया, इसलिए अभी 3 खिलाड़ी सेमी सर्कल के अंदर ऑफ साइड में और 2 खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री लाइन के रखे, वो है डीप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ। यहाँ पे खेलने का प्रयास किया था, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, स्लीप से होती हुई गेंद जा रही है थर्ड मैन की तरफ। वहां पे खिलाड़ी मौजूद थे, देखना कि गेंद को रोक पाए या नहीं, और इसके साथ ही 4 रन। दैट्स अ गुड फॉर स्पॉन्सर्ड बाय फरनोवा कुचेन। अब स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी, बाहर एक किनारा लगा था और फर्स्ट स्लिप और बैकवर्ड पॉइंट के बीच से गेंद निकल गई थर्ड मैन की तरफ 4 रन के लिए। इसी 4 रन के साथ अब स्कोर हो चुका है 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही खूबसूरत अच्छी गेंद, लेकिन इतनी अच्छी तरह से गेंद को देखते रहे, बिल्कुल हल्के हाथ से गेंद को खेल दिया था शॉर्ट कवर में, और 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े।
आपकी बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, स्टीयर कर दिया है पॉइंट की तरफ, 1 रन जरूर मिलेगा। स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े थे सामने वाले खिलाड़ी का, अच्छा कॉल बैक भी था वहां पे। सिंगल के साथ यहाँ पे स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ हो चुका है। डोसी डेविल्स का 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से पिक किया, रिवर्स स्वीप किया था। अब जैसे ही देखा कि गेंद बिल्कुल पाले में अपने आप को पोजीशन करते, रिवर्स स्वीप कर दिया 4 रन के लिए। तीसरा ओवर समाप्त हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 24 रन और जो करंट रन रेट चल रहा है 8 रन प्रति ओवर। अभी भी 110 रन चाहे 42 गेंद बाकी है, लक्ष्य काफी दूर है। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। प्रेमल खेल रहे हैं 16 रन बनाते हुए, पंकज सुथार खेल रहे 5 रन पर। धर्मेश की अगेन ऑफ साइड पे से लोअर फुल टॉस गेंद थी, लेकिन अच्छी तरह से बल्ले पे मिडिल ऑफ द प्लेट जिसे कहते हैं, और अच्छी तरह से गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेल लिया 1 रन के लिए। सिंगल के साथ स्कोर को यहां पे रोटेट करते हुए दोनों बल्लेबाज, स्कोर अब पहुंचा है 25 रन। हालांकि बड़े स्ट्रोक की यहां पे जरूरत है अगर इस टारगेट को हासिल करना है। बहुत ही खूबसूरत गेंद थी, यॉर्कर लैंड डिलीवर करने के पर गेंद बल्ले का बाहरी किनारे रहता, बल्लेबाज समझ नहीं पाए थे आपके पास कि किस तरह से गेंद आ रही है। हालांकि कहीं तरीके से अपने आप को बीच में लाते गेंद को बल्ले का बाहरी किनारे, बाल बाल बचे यहाँ पे। बहुत खूबसूरत यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए धर्मेश पटेल। आपके बाद थोड़ा सा हार्डलैंड का उपयोग जरूर किया था, बल्लेबाज ने अपने आप को बैकफुट पर रखते हुए पुल किया मिड विकेट की तरफ। 1 रन से ही संतुष्ट मानना पड़ेगा। स्कोर अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 26 रन हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। से एक बार राइट आर्म ओवर पिच डिलीवरी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से टाइमिंग किया। इट्स अ क्लियर 6, इट्स अ वंडरफुल 6 हियर। स्लॉट एरिया में था और बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेल दिया 6 रन के लिए। इसी 6 रन के साथ अब यहां से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जमकर हुआ आगे बढ़ता हुआ 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सुथार अब पहुंचे हैं 12 पर। ओवर पिच गेंद थी और टाइमिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया था। ये थोड़ा सा ऑफ स्टंप से तेज गति से करने का प्रयास और लाइन पे कंट्रोल नहीं कर पाया। अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। तैतीस रन। अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे बिल्ड होती हुई दोनों बल्लेबाज के बीच। अच्छी डॉट बॉल, थोड़ा सा आगे आके खेला था, बैक टू द बॉलर जिसे कहते हैं, उन्होंने अपने आप को फील कर दिया। तैतीस रन 1 विकेट के नुकसान पर यहाँ पे धर्मेश पटेल का ये दूसरा ओवर चल रहा है। यहाँ पे आगे आते हुए हाफ वाली पे लिया है, वहां पे 2 खिलाड़ी मौजूद जरूर थे लेकिन एक दूसरे के साथ वो सामने नहीं देख पाए थे। रोकने का प्रयास और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। स्पॉन्सर्ड बाय फरनोवा कुछ।
अंपायर की तरफ से इशारा था कि वो गोल्डन लाइन के बीच था, इसलिए अब स्कोर हो चुका है 41 रन, 4 ओवर समाप्त हो चुका। अभी भी 36 गेंद में 93 रन चाहिए। 4 ओवर इज कंप्लीटेड, स्कोर इज 41 पर लॉस ऑफ 1 विकेट, required 93 runs in just 36 deliveries. Shutar is playing on 20, Premal is on 17, bowling is been changed. Dharmesh has been bowled 2 over, no more than 25 run yet to have wicket. Chirag Majetia has been bowled 2 over, very economically as himself, given a 60 run and got a 1 wicket. The new bowler is bowling from the combox side. The first ball just short of line delivery is coming into the line of the ball straight down to the point reason for the single. Bhagyes has been brought to bowl from the combox side. It's a short pitch delivery and pull it down to the onside. 2 fielders are running and ball is just gone outside the boundary line. That's a fantastic four. That was a fantastic four, sponsored by Farnova Kuchen. Very short of length delivery, तुकी लंबाई की जिसे गेंद कहते हैं, और बल्लेबाज के लिए has a very enough time to play in the proper direction down to the onside for 4. Now scores moves on to 46. Bhavesh is bowling with 1 closing fielders. ये अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी यहाँ पे चेंज ऑफ पेस देखने को मिला, ऑफसाइड से थोड़ी सी बाहर थी, छेड़छाड़ करने की कोशिश थी, लेकिन वो पेस से थोड़े से बीट हो गए। विकेट कीपर ने कलेक्ट करके वापस कर रहे हैं भाग्येश को। आगे जरूर निकलते, खेलना चाहते थे, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में गेंद गए ऑन साइड में मिड विकेट की तरफ, थोड़ी सी वहां पे मिसफील्ड जरूर हुई, लेकिन 1 रन से ज्यादा यहां मिलने की उम्मीद भी नहीं है। फुल टॉस 1 और आसानी के साथ खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। Super 6. This Super 6 is sponsored by Farnova Kuchen. इसी 6 रन के साथ अब स्कोर हो चुका है 53 रन। नाउ स्कोर रीच अप टू 53 और दैट्स 6। So over pitching delivery and there is a man but it's over the head of him. Super 6. And that's this 6. Super 6 is sponsored by Farnova Kuchen. हालांकि जिस तरीके से उन्होंने खेला था वो वाइट लाइन की थोड़ी सी बाहर थे, और इसके साथ यहाँ पे 5 ओवर की समाप्ति। ड्रिंक्स अब मैदान पे आ चुका है। 5 ओवर के बाद स्कोर है 59, 1 विकेट के नुकसान पर। प्रेमल खेल रहे 30 रन बना के, पंकज सुतार खेल रहे 25 रन बना के। भाग्येश का जो ये ओवर रहा थोड़ा सा महंगे साबित हुई, 1 ओवर में उन्होंने 18 रन दिए। With immense pride and gratitude, a heartfelt thank you to our Ball Bat Tournament 2026 title sponsor Stanley and co-title sponsor Alcom. Also sincere thanks to our team sponsors SANDHYA Systems Private Limited, Cool Line by Daikin, Nexion, O General by Global Electrify Shop, Core, Equent, Ekai, Everest Fly and Zydex. Our appreciation to the auction sponsor NS Stonex, ground sponsor Viva, apparel sponsor Unimaple, golden window sponsors Surat Painter and side screen sponsor Intellisys Solutions.
Thank you to our food sponsor on and off, Litoria and Laxate Living. We acknowledge our boundary line sponsors, Kashtha, Shipra, Shrestham, Serenity, Shivdhara and Insights by Maruti Hardware. Special thanks to 4 and 6 sponsor for Nova Kitchen, Wicket sponsor Rowan Decor, Man of the Match sponsor Guardian Glasses and Drinks sponsor Zenu Plaster. Once again, thank you all for supporting Ball Bet Tournament 2026 and the spirit of cricket and family games. So come, let's all together playfully enjoy this fabulous Ball Bet Tournament 2026, the ultimate cricket showcase. Hello. Drinks is off the field after the 5 overs. Doshi there delivers 59 per loss of 1 wicket. Good partners going to build here between these two players. Almost they have made a 56 run in just 26 deliveries. Still target is very high. 30 balls are remained and require 75 runs to win this match. Now bowling end is changed. Bowler will be bowled from the get inside. And Press Desai is going to bowl. There is a man who is going to face him. Is a Premal. Going to bowl first bowl after the drinks. It's a left arm over wicket and over pitch delivered. This time while in the position has played down to the onside at long leg for a single. Score now moves on to 60. This time pull किया बहुत ही खूबसूरत तरीके से और इसके साथ ये 6 रन. जैसे ही देखा कि शॉर्ट पिच गेंद थी अपने आप को पोजीशन करते हुए उन्होंने गेंद को पुल कर दिया था डीप स्क्वायर के ऊपर से 6 रन. सुपर 6 is sponsored by Nova Kitchen. Once again over pitching and played down to the onside. There is a man at mid wicket. Now score is 67 for loss of 1 wicket. Pankaj is 26. Premal is on 37. और सब देखता है कि यहाँ पे गेंद अंदर है लेकिन बहुत ही काफी तेज गति से आए लेकिन गेंद को पकड़ नहीं पाए. यहाँ पे रन लेने का मौका मिला. यहाँ पे काफी तेज गति से दीप में खड़े खिलाड़ी काफी आगे आए थे लेकिन गेंद को पकड़ नहीं पाए थे. 69 एक विकेट के नुकसान पर यहाँ पे पंकज सुथार खेल रहे. 28 पर प्रेमल है 37 पर. प्रेस देसाई गेंदबाजी करते हैं. लेफ्ट आर्म वुड विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. ओवर पिच किया था लेकिन वहां पे खिलाड़ी मौजूद है. एक टप्पा खाने के बाद गेंद उसकी ऊपर से निकल गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर. That was a fantastic four, sponsored by Nova Kitchen. What is bound and now score goes up to 73 per loss of 1 wicket and now Pankaj moves on his individual score of 32. Premal is playing with 37. Long way to go for him. Over pitch once and played, hitting hard straight
to the mid offside, but for a single. One more score is added and score is 74 and that's the end of a 6th over. 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 74 एक विकेट के नुकसान पर. Good partnership with so far built between these two batsmen. They have faced 32 deliveries and made a 71 run. Good partnership, but a long way to still go for him. In a remaining 24 balls, require 60 runs to win this match. Patel Kartik has been brought to bowl from the gate inside and Suthar is ready to face him. Was a predetermined stroke, wanted to play down to the onside, not good connection with the bat and ball is one to the pointer is an area. There is a man who picked up and returned to the bowler, but meanwhile they got a chance to go for the single. Once again a good shot, but there is a man on the line. Good running between the wickets, a little bit delay to field it, and meanwhile they have to got chance to go for the one more runs. So 2 runs with that. Now score moves on to 77. Good running between the wicket, just little bit delay to field it, and they've got an opportunity to cross one more run. Oh, wanted to hit it high, got an edge of the blade. Nothing wrong with that deliveries. Now he realized there is the only option for him to go for a use hitting stroke, hard hitting stroke as well as possible to reach the target. Played down to the onside, but will get a single only. That there is a man on the line. Nothing wrong with the singles in the way they are playing, but they just try able to get rotate the strike. They need to go for a risk stroke now. Good stroke, good ball, good play down to the onside, good fielded Dava in the deep, covering a lot of ground to his right hand side and stop inside the boundaries, only given a chance to go for the single. It was a right into the slot area. Outside the edge, and there is a man. It's a simple catch. Just looking for the breakthrough. So second wicket is gone and a score of 79 off for Dosi Daredevils. A good partnership comes to hand. This wonder wicket in Ball Bat Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. So at the end of 7 over, score is 79 per 2 wicket. Last man is gone into the pavilion. So very good partnership comes to end of 76 run partnerships. They have made a run of 76 runs. So new man is on the field is Himanshu Patel. Pankaj Sudhar is still there. He is playing with 34. Press. It's a lower full toss delivery playing down to the offside. There is a man coming under it and drop it down. Got a single on that delivery. Now score gone up to the 80. This is the 7.1 over his progress. Himanshu Patel is now coming in a rise. Just outside the off stump, picked the line nicely and played down to the onside. With a single, he's up the mark. He's on 1 now. Press Desai bowling so nicely from the gate inside. This time full toss one. Once again, there is a man coming under it. No, he's not able to pick the ball. Meanwhile, they have a chance to go for a couple of runs. So with that 2,
Scores now moves on to 83. Suthar is now coming on a strike. He's on his 37, fishing at 21 balls, 2 boundaries, and 1 beautiful 6 in his score. He's playing with a striking rate of 176.19. So pure, lucky. Predetermined stroke. He just opened his the wicket and wanted to play down to the offside. Bowler saw him so early and changed his length and line. He brought a variation in particular delivery and not given him chance to open his shoulder. He's restricted him with a single only. Suthar is at the other end looking like he's very exhausted. काफी थकान महसूस कर रहे हैं यहाँ पे वो. Over-pitch delivery and much more time into the air. But players are far behind. Anyway, this time they got a chance to go for the single. 85-2. Now Suthar is on the strike. He's on 38. फुल टॉस 1 दिस टाइम और वहां पे खिलाड़ी मौजूद है. इसके साथ यहाँ पे एक अच्छी इनिंग्स का एंड होता हुआ जिस तरीके से उन्होंने गेंद को खेला था. लुकिंग ही वाज वेरी टायर्ड एंड ही प्लेड द वेरी एग्जॉस्टेड स्ट्रोक. लोअर फुल टॉस गेंद थी और आसान सा कैच वहां पे दे बैठे. This wonder wicket in Ball Bat Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. So that's the end of 8 over successive over. In the end, it's got a very important wicket of the Suthar, who was settled down so nicely, playing so nicely. The ball was coming very easy on his blade, but this time he was little bit tired. He was exhausted in a way that he played the stroke and given a very easy single catch and long way back to his pavilion. 85-3, Dosi Daredevils. At the end of 8 over. New man is on the field is Kevin Solanki. In the very first ball, he's played very nicely over the bowlers. There's a good fielding. Followed by the another one, has given only a single, little bit fumbling, now getting chance to go for the one more run. With that couple, now score goes up to 87-3. Himanshu Patel is on the 4. Kevin is there to open his count. Once over pitch delivery and played over the mid wicket. A wonderful 6. It's a beautiful generated time. Timing was so wow. His Super 6 is sponsored by Farnova Cushion. What a lovely 6 score goes up to 93-3. This is the 8.2 over in the progress. In 10 balls remain, they require a 41 runs. Every delivery, they should go for a 1 boundary. Himanshu Patel now reached to 10. Kevin is yet to open his count. Kartik is now getting ready to bowl. So lower full toss, one playing down, punch it down into the offside, into the deep area like mid-off. That is a man who has fielded. Singles moves to 94. So one good dot ball, good comeback by him. This time a straight one delivery, wanted to play down. Machine completely, wicketkeeper collect it and return to the bowler. And that's a ball. This time ball was kept low. He wanted to drive late. He was expecting ball like well up to the height, and ball was kept low, missing completely.
This wonder wicket in Ball Bat Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. So that's a fourth wicket is fallen at the score of 94. It's a good ball. It was straighter delivery, lower delivery rather, and batsman missing completely and was flung away. Paritosh Patel is coming in the charge at the fifth wicket now. Score is 94 for 4. Himanshu Patel is with 11 and Patel Kartik is got his wicket in his over. So far he has got 2 wickets. Once again this time making the room for me play down into, but there is a man who is not interested for the single. So that's the end of a 9 over. So after 9 over 94 for loss of 4 of Dosi there 11. Paritosh Patel, who is on it, yet he has to open his count. Himanshu Patel playing with 11. So far he has faced 5 deliveries, 1 6 included. And Patel Kartik has completed the quota of his 2 over, no maiden 30 runs. Very successful bowler. He captured 2 wicket. Press Desai, so far he has been bowled 2 over, no maiden, and yet to have a wicket. 94 for 4. 6 balls are remains and 40 runs required. New batsman is Paritosh Patel, and there would be a bowler Hate. छह गेंद बाकी है और 40 रन चाहिए यहाँ पे मैच जीतने के लिए। चौरानवे रन हो चुके हैं, 4 विकेट गिर चुकी है, 9 ओवर भी समाप्त हो चुके हैं, 6 गेंद में 40 रन चाहिए। यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाज मौजूद है। हिमांशु पटेल जो 11 रन बनाते हुए खेल रहे हैं। फुल टॉस गेंद जरूरी, थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस करने का यहाँ पे प्रयास किया था। बॉलर की थिक सर के ऊपर से खेल दिया बिना किसी रन से। आगे आते हुए उन्होंने गेंद को हाफ वाली पे लेते हुए खेल दिया है मिड ऑन के ऊपर से, वाइडेस्ट मिड ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। सुपर 6, His Super 6 is sponsored by Karnova Kuchen. 6 रन के साथ अब स्कोर हो चुका है यहाँ पे 100 रन पूरे करते हुए डोसी डेयर डेविल्स। अभी भी 4 गेंद है और 34 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 17 पर अब पहुंच चुके हैं हिमांशु पटेल। कि ये गेंद फिर से एक बार ओवर पिच जरूर थी, ऑन साइड में खेला लेकिन रन लेने के लिए इंटरेस्ट नहीं थे, खेल दिया था डीप वाइडेस्ट मिड ऑन की तरफ बिना किसी रन के साथ। अभी भी स्कोर रुका हुआ 100 रन 4 विकेट के नुकसान पर। है तैयार गेंदबाजी करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्हें विश्वास था कि जिस तरीके से वो गेंदबाजी करेगा यहाँ पे और एक छक्का आने वाला है और वाइडेस्ट मिड ऑन के ऊपर से उन्होंने खेल दिया 6 रन के लिए।
हालांकि जिस तरीके से गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर थी और उन्होंने पिक बहुत ही अच्छी तरह से किया था, वाइडेस्ट मिड ऑन के ऊपर से खेल दिया था 6 रन के लिए। इसी 6 रन के साथ अब स्कोर हो चुका है 106 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 9.4 ओवर, 106 पर 4। 2 गेंद बाकी और 28 रन चाहिए। थोड़ा सा फाइन लेग की तरफ खेला है, लेकिन रन लेने की कोई उन्होंने जरूर नहीं समझा। 1 गेंद बाकी है, अब मैच में केवल औपचारिकता रह चुकी है, 28 रन चाहिए। हिट किए गए, फुल टॉस गेंद थी, अब की बार खेला जरूर है, लेकिन वहां पे एक कैच हो सकता था, लेकिन एक टप्पा खाने के बाद 1 रन ही यहाँ पे लेने का उन्होंने प्रयास किया है और 1 रन के साथ संतोष करते हुए यहाँ पे उन्होंने 106 रन बनाए, 107 रन बनाए और यहाँ पे इस मैच FLW जीतती हुई 26 रन से यहाँ पे इस मैच को उन्होंने जीत लिया है। With immense pride and gratitude, a heartfelt thank you to our Ball Bat Tournament 2026 title sponsor Stanley and co-title sponsor Alcom. Also sincere thanks to our team sponsors Talisya Systems Private Limited, Cool Line by Daikin, Nexion, O General by Global Electrify Shop, Core, Equent, Ekai, Everest Fly and Zydex. Our appreciation to the auction sponsor NS Stonex, ground sponsor Viva, apparel sponsor Unimaple, golden window sponsors Surat Painter and side screen sponsor Intellisys Solutions. Thank you to our food sponsor On and Off, Litoria and Laxate Living. We acknowledge our boundary line sponsors Kashtha, Shipra, Tristham, Serenity, Shivdhara and Insights by Maruti Hardware. Special thanks to 4 and 6 sponsor Farnova Kitchen, wicket sponsor Rowan Decor, man of the match sponsor Guardian Glasses and drinks sponsor Zenu Plaster. Once again, thank you all for supporting Ball Bet Tournament 2026 and the spirit of cricket and family games. So come, let's all together playfully enjoy this fabulous Ball Bet Tournament 2026, the ultimate cricket showcase. Thank you.
ચલો જો બટ્ટા ને એસએનસી માં લેખિત આપી દીધેલું આખો લિસ્ટ આપી દીધેલું મને બહુ મગજમાં આવી આ લોકોને અરવિંદભાઈ તમારા કોઈ કરશે થોડું જમી કે વાંધો નહીં જઈ આવું લંચ વાંધો નહીં થોડી વાર બ્રેક And that was a fantastic four, sponsored by Farnova Kuchen.
And that was a fantastic four, sponsored by Farnova Kuchen. की ओवर सारी હતી તેજસ ભાઈ છેલ્લી બોલે કેપ્ટન પોતે આવી રહ્યા છે બોલિંગ પર નાઇસ બોલિંગ કૌશલભાઈ વેરી નાઇસ બોલ नाइस बॉल एक रन खाली लेग बाय What a shot! Ball going. Oh, what a missed chance. कौशल भाई विकेट हटी नाइस ट्राई सुमित भाई खातू खोलू Nice tapping. Very nice fielding. Extra player होए के LED बॉक्स ની પાછળ જાય પ્લીઝ પ્લીઝ જરા LED ની પાછળ જાઓ તો वाइड बॉल कौशल भाई हूँ क्यों बॉल छक्की गयो नाइस शॉट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन And that was a fantastic four, sponsored by Farnova Kuchen. हेमल भाई बैटिंग में आओ वाइड बॉल का इशारा मयंक भाई हेमल भाई ने स्ट्राइक आपो हाँ and it's gone out हेमल भाई बड़ी विकेट पड़ी गई कि मैं आओ का बैटिंग में This wonder wicket in Ball Bat Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. टूर्नामेंट ना चाणक्य कमिंग जिगर भाई वेलकम टू द पिच बेस्ट ऑफ लक और नहीं मन चाहते हम जिगर भाई चलो हेमल भाई बैटिंग આવી ગઈ હવે ફેરવા માંડજો
હેમલભાઈ જોઈ રહ્યા કયો પ્લોટ ખાલી છે. બધા બોક્સમાં ખોલી રહ્યા છે. ડીપીએસ ની બાજુ વાળો ખાલી છે. રવિભાઈ ચિંતા નહીં કરો, એક પ્લોટ શોધી લે. ओए got a chance. Boundary line के बाहर. And that was a fantastic four, sponsored by Farnova Kuchen. चलो हेमलभाई क्विक डिश. बोलो. ટ્રિપલ આઈડી નો લોગો હતો ને બાઉન્ડ્રીમાં એ ગાડી રિપ્લેસ કરી દે. આમ અટકી જાય ને પછી બોલના. સાઈડમાં છે ને તે નવો બનાવી દીધો. કાલે નથી કીધું ને રિપ્લેસ કરી. ગ્રાઉન્ડ પર જ છું હવે. તમે આવી જાવ એ વિરાજ ને કેજલભાઈ આવી જાવ. ગાડી છે વિરાજભાઈ. એક વખત નાઇસ શોટ હેમલભાઈ. તમારા ઝોનમાં નહીં હતો. તેજસભાઈ ની ઘણી ટાઈટ બોલ. Ah, what a shot! Boundary line के बाहर six. It is almost like reminding me of Rohit Sharma. His Jigar bhai, very nice is shot. sponsored by Farnova Kuchen. जिगर भाई का बल्ला चला. नाइस शॉट जिगर भाई. ત્રણ ઓવર 34 રન અને 1 વિકેટ. 334 for 1. पंदर रन આપ્યા તેજસભાઈ. કૌશલભાઈ પાછા આવી ગયા છે બોલિંગ પર. ફિલ્ડનું પ્લેસમેન્ટ બહુ જોર શોરમાં ચાલે છે.
એક આઉટ થોડો કાચો લાગ્યો. What a wicket! What a wicket, Kaushalbhai. In Ballbat Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. It was a very important wicket. Kaushalbhai, be important wicket. Very nice. Thank you, Dharmesh bhai. બધાને પાણીની તરફ લાગી છે. 3.1 over 34 for 2. Very nice shot. Good fielding. એક જ રન આપ્યો. चलो हेमंत भाई बल्ला चलना चाहिए अभी. वाइड बॉल का इशारा. कौशल भाई બીજી વાઇડ બોલ. કૌશલભાઈ ને હેમલભાઈ ના ઝોન માં આપવા નથી, એમાં વાઇડ પર વાઇડ નાખતા જાય છે. And it's a six. Superb shot, હેમલભાઈ તમારા ઝોન માં આવ્યો એટલે માર્યો. Super 6. This Super 6 is sponsored by Farnova Kitchen. રવિભાઈ નાખો. આવી ગયો છે બોલ. બીજો વાઇડ બોલ. કૌશલભાઈ કેટલા બોલ ની ઓવર? હેમલભાઈ ના કતારગામ ઝોન માં આવે, અઠવા ઝોન માં આવવા દો. આવ્યો એ પડ્યો. આ બીજો અઠવા ઝોન ની બહાર. Super 6. This Super 6 is sponsored by Farnova Kitchen. હેમલભાઈ very nice shot. હા ઓવર પછી કરું. One more shot and it's boundary. હેમલભાઈ बहुत बढ़िया shot. And that was a fantastic four, sponsored by Farnova Kitchen. Last ball. One more shot. बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन. बहुत बढ़िया हेमलभाई. Fantastic four, sponsored by Farnova Kitchen. લંચ ચાલુ થઈ ગયું છે. જેને લંચ લેવું હોય તે લઈ લે, નહીં લેવું હોય તો પણ લઈ લે. આ ઓવરમાં લાસ્ટ ઓવરમાં 24 રન આવ્યા છે અને 1 વિકેટ આવી છે.
58 પર 2, 58 for Q, 4 overs. પ્રિયંકભાઈ આવ્યા છે બોલિંગમાં. Very nice ball. कौन છે કોણ? હર્ષભાઈ સારું કેપિંગ કર્યું. Very nice ball પ્રિયંકભાઈ, very nice ball. What a shot! What a shot! Going and going. Oh, what a fielding, my friend! Superb fielding. Oh, it's a six. Sixer. Nice shot. Fielding નો સારો પ્રયાસ હતો ગૌરી સાહેબ. Very nice. His Super 6 is sponsored by Farnova Kitchen. Wide ball का इशारा. Sorry umpire, હવે next time તમે આપો પછી બોલી. Sorry. બીજો વાઇડ. આ ટીમ વાઇડ નો બહુ મોટો ટોપલો લઈને આવ્યા લાગે છે. વાઇડ પર વાઇડ, વાઇડ પર વાઇડ. નાઇસ બોલ. અપીલ છે અને આઉટ. ઓ આઉટ. વોટ અ બોલ એન્ડ આઉટ. Big wicket. What a wicket! His wonder wicket in Ballbat Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. Nice keeping. Nice bowling. Star batsman રોહન ભાઈ આવી રહ્યા છે ગ્રાઉન્ડ પર. $66 for 3, 4.4 overs. What a shot! Very nice shot. Nice fielding. હેમલભાઈ અઠવા ઝોન તરફ જોઈ રહ્યા છે. Very nice played. Nice fielding. And overthrow na 4 run. બોલો હેમલભાઈ આવ્યા 4 run. And that was a fantastic four sponsored by Farnova Kitchen. 5 રન આપ્યા. ગ્રીન્સ નો ઇશારો. BMW. With immense pride and gratitude, a heartfelt thank you to our Ball Bat Tournament 2026 title sponsor Stanley and co-title sponsor ભાઈ લંચમાં જે કોઈ બાકી હોય કે લંચ લઈ લેજો. નહીં લેવું હોય તો પણ લેજો. લઈ લીધું હોય તો પણ લેજો. All General by Global Electrify Shop, Core, Equent,
Ekai, Everest Fly and Zydex. Our appreciation to the auction sponsor NS Stonex, ground sponsor Viva, apparel sponsor Unimaple, golden window sponsors Surat Painter and side screen sponsor Intellisys Solutions. Thank you to our food sponsor on and off, Litoria and Laxate Living. We acknowledge our boundary line sponsors Kashtha, Shipra, Swestham, Serenity, Shivdhara and Insights by Maruti Hardware. Special thanks to 4 and 6 sponsor for Nova Kitchen, Wicket sponsor Rowan Decor, Man of the Match sponsor Guardian Glasses and drinks sponsor Zenu Blaster. Once again, thank you all for supporting Ball Bet Tournament 2026 and the spirit of cricket and family games. So come, let's all together playfully enjoy this fabulous Ball Bet Tournament 2026, the ultimate cricket showcase. Thank you. हेलो छठी ओवर की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। स्कोर है 74, 3 विकेट के नुकसान पर। ये देखिए ऑफ स्टंप से बाहर थी और पहले से ही थोड़ा सा विकेट को उन्होंने ओपन कर दिया था, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है और इसके बाद 3 अटेम्प्ट के बाद भी गेंद वहां पे ड्रॉप हो गई। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप जिस तरीके से उन्होंने गेंद को खेला था मिड विकेट के ऊपर से, गेंद हवा में रही थी, वहां पे खिलाड़ी मौजूद रन के अंदर भी आए लेकिन गेंद को नहीं पकड़ पाए थे। एक यहाँ पे जीवतदान मिलते हुआ फर्स्टर आगे बढ़ता हुआ 75 लॉस ऑफ 3 विकेट। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद है, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, अब की बार संभावना कैच होने का, इसके साथ यहाँ पे और विकेट का पतन होता हुआ। बैक फिश इंसिडेंट है जहां पे जिस तरीके से गेंद की थी ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी। This wonder wicket in Ball Bet Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. पचहत्तर रन 3 विकेट के नुकसान पर ये छठा ओवर चल रहा है। 5.3 ओवर्स इन द प्रोग्रेस, सॉरी चौथा विकेट यहाँ पे गिरता है। 74 पर 4। हेमल देसाई अभी भी मौजूद है 40 रन बनाते हुए। मयंक पटेल आए है नए खिलाड़ी के रूप में। शॉर्ट पिच गेंद थी, वहां कवर के ऊपर से उन्होंने पंच किया 4 रन के लिए। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बहुत स्ट्रोक के लिए थोड़ी सी जगह बनाई और बहुत खूबसूरत तरीके से खेले 4 रन के लिए। इसी 4 रन के साथ अब स्कोर हो चुका है 79 रन। यहाँ पे जैसे ही आए देखा अपने आप को, उन्होंने अपना इंटेंशन बहुत क्लियर कर दिया था कि किस अंदाज से वो खेलने वाले। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पूरी तरह से गेंद पे हावी होते उन्होंने खेल दिया 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर।
ओवर पिच गेंद थोड़ा सा आ गया तो पिच की लंबाई तक पहुंचे और ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा की तरफ 4 रन के लिए। Fantastic four, sponsored by Farnova Kuchen. And that was a fantastic four, sponsored by Farnova Kuchen. ओवर भी समाप्त हुई 4 रन के साथ। स्कोर है 43, 83 for loss of 4 at the end of the 6th over. $87 for 4. This is the 7th progress in the progress. Amal Desai is still there. He is playing with on his individual score of 44. 6 runs required to finish the first 50. It's a good one ball this time. Push it very sharply down to the cover. And there is a man before he could fill the ball. But the batsman have a chance to go for the single run. With that singles, now score goes up to 88. Hamal is now on 45. Mayank is on 8. This time way down to the leg side. Obviously, it's a signal from umpire. It's a wide. One more addition in the run. One more extra ball to be bowled by bowler. स्कोर है 89 रन 4 विकेट के नुकसान पर 6.16 2 ओवर के बाद यहां पे। अब की बार वहां पे मिस फील और गेंद जा रही है थर्डमैन की तरफ 4 रन के लिए। बाई का सिग्नल अंपायर के तरफ। Sponsored by Farnova Kuchen. इसी 4 रन की वजह से अब स्कोर हो चुका है 93 रन 93। लेकिन बाई का सिग्नल था। विकेट कीपर से थोड़ा फंबल हुआ। पहली स्लिप के खिलाड़ी भी संभाल नहीं पाए थे। गेंद निकल गए 4 रन के लिए। अब की बात थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी। खेलना चाहते थे स्क्वायर ऑफ द विकेट। गेंद गई थोड़ी सी बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। रन लेना चाहते थे वहां पे लेकिन रन की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दी। अपने आप को उन्होंने बैकफुट पे रखा। की हुई सी गेंद थी और बिल्कुल हाफ वे डाउन जिसे कहते हैं 2 की लंबाई की गेंद थी। अच्छी तरह से फूल किया। इतनी अच्छी फील्डिंग वहां पे स्क्वेलिंग अंपायर की ठीक पीछे की तरफ गेंद को फील करते हुए उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से थ्रो किया। एक ही रन लेने का मौका दिया आपकी बार। 94 रन 4 विकेट पर। अब की बार पहले से ही उन्होंने मन बना लिया। और इसके साथ ये हेमंत देसाई के यहाँ पे 50 रन भी पूरे होते हुए 51 रन उन्होंने बना लिए है। 7 ओवर समाप्त हो चुका है। स्कोर है 100 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 100 per 4 at the end of 7 over. Hemal Desai is with 51. Mayank is on 9. .
ऑफ साइड पे गेंद थी, फुल टॉस गेंद जरूर थी। यहाँ पे ड्राइव किया साइड स्क्रीन की तरफ, लेकिन एक ही रन मिलेगा। यहाँ पे फील्ड किया और वापस कर दिया बॉलर को। Ravi Shah is bowling. He is the second over. So far, he has given a 12 run. Of course, he got a 1 wicket also. Way outside the off stump and signal from Pat. That's a wide one. बहुत ज्यादा बाहर थी। 102 रन, धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ रहा हुआ। प्रोजेक्टेड स्कोर लगभग 140 रन होने की संभावना है। आपकी बार खेलना चाहते थे ऑन साइड से, गेंद गई ऑफ साइड पे, स्वीप करना चाहते थे। एक 103 स्कोर है अभी स्कोर बोर्ड पर। ये फुल लाइन डिलीवरी थी, खेलना चाहते थे पूरी तरह से, चुके विकेट कीपर ने उसे कलेक्ट करके वापस करे बॉलर को। फुल लाइन डिलीवरी थी, कुछ इतना ज्यादा वेरिएशन था नहीं, सीधी सी गेंद थी, खेलना चाहते थे, चूक गए। फिर से एक बार ऑफ स्टंप सर्व के बाद थोड़ी सी बाहर अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद गई शॉट फाइन लेग की तरफ। गेंद को फील करे तब तक 1 रन लेने का मौका मिल चुका था दोनों बल्लेबाज के लिए। फिर से एक बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को उन्होंने पिक करते हुए खेल लिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। सुपर 6 is sponsored by Farnova Kuchen. पहले से थोड़ा सा प्री डिटर्मिनेशन खेलने का क्लास था, आगे निकल आए थे, लेकिन अच्छी तरह से ऑफ साइड पे खेलते हुए और सिंगल लिया। 111 रन हो चुके हैं यहाँ पे 4 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर समाप्त हो चुका है। हेमल देसाई ने 58 रन बना 19 गेंद का सामना करता है, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल है। मयंक पटेल ने अब तक 11 रन बनाए, जिसने 8 गेंद का सामना किया और 2 चौके जिसमें शामिल है। नौवीं ओवर की शुरुआत होने को जा रहे हैं सामने वाले से गेट इन की तरफ से। 9th ओवर इज इन प्रोग्रेशन दैट विल बी फ्रॉम द गेट इन। पांच खिलाड़ी ऑफ साइड में रखे हैं और 4 खिलाड़ी ऑन साइड में। ऑन साइड में 3 खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर है। आपके बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी, लेकिन हैमल जिस तरीके से गेंद पे निगाहें रखते हैं, हर एक गेंद को बड़ी आसानी के साथ खेल देते हैं। उन्होंने आपके बार डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला, अच्छी फील हुई, लेकिन 2 रन लेने का मौका जरूर यहाँ पे मिलता हुआ हैमल को। इसी 2 रन की वजह से वो पहुंचे हैं 60 रन पर। कवर पे खिलाड़ी को थोड़ा सा ऊपर बुला लिया है। ओवर पीछे गेंद और मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया, लेकिन वहां पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से ग्राउंड पीछे से कवर करते आ रहे थे, लेकिन एट लास्ट वो दैट वाज अ बाउंड्री। स्पॉन्सर्ड बाय फरनोवा कुचेन। आपकी बार गेंद कहां पे लगी है? कैप निकल गए, शायद गेंद उनके सर पे लगी है। फुल टॉस गेंद थी। स्कोर है 117 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ये 9वां ओवर चल रहा है। 9th ओवर इन प्रोग्रेस, ऑलमोस्ट 8.3 ओवर्स इन प्रोग्रेस। स्कोर इज 117 पर लॉस ऑफ 4 विकेट। Amal is still there with a 64. Once again, the full toss delivery and pull it down to the onside. Of course, there is a man, but no chance for him to stop the ball inside the boundary, and that's a boundary. Sponsored by Farnova Kuchen.
आपकी वह यॉर्कर लैंड डिलीवर थी, बिल्कुल पैड पे गेंद की थी, खेलना चाहते थे, गेंद गए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, जब तक कि फील करे रन लेने का मौका यहाँ पे मिला था। ऑफसाइड से काफी ज्यादा बाहर और इसी एक रन के इजाफा के साथ अब स्कोर हो चुका है 123 रन। ऑफ स्टंप से ज्यादा ही बाहर थी, कुछ ज्यादा बाहर थी। ये फुल टॉस गेंद और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपकी बार उन्होंने खेल दिया है। हालांकि बीमर का वहां पे अंपायर का इशारा, कमर की काफी ज्यादा ऊपर हाइट पे देख, यहाँ पे 6 रन भी मिला, फ्री हिट मिलेगी। इसी 6 रन की वजह से अब स्कोर हो चुका है 130 रन। नाउ स्कोर गोज अप टू 104। इट वाज अ बीमर डिलीवर एंड डिक्लेयर फ्रॉम अंपायर, इट वाज अ फ्री हिट नाउ। Oh, pitch one and played down to the onside. There is a man unable to cut it on. That's a fantastic boundary. Ball is. That was a fantastic four, sponsored by Farnova Kuchen. नाउ स्कोर हो चुका है 134 रन, 4 विकेट का नुकसान। जिस तरीके से ये स्लॉगिंग ओवर चल रहा है, अच्छे रन यहाँ पे बटोर रहे हैं दोनों खिलाड़ी। हमल पहुंचे हैं 69 रन पर। शॉर्ट पिच गेंद जरूर थी, लेकिन पहले से उन्होंने थोड़ा सा मन मना लिया था कि गेंद को उन्होंने हुक करना चाहते थे और ऑफ स्टंप से बाहर और भी थोड़ी सी ज्यादा निकल गई थी। स्कोर हो चुका है 134 रन। धीरे से जरूर खेला है, धीरे धीरे हल्के से अपने एक कदम को आगे बढ़ाते हो। 1 रन पूरा करते हैं हेमल और यहाँ पे इस 1 रन के साथ ये ओवर समाप्त हो 9.2 ओवर हो चुका है, सॉरी। स्कोर हो चुका है 135, 135 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 4 गेंद होना शेष बाकी है। देखते हैं कि 4 गेंद में कितने रन आते हैं यहाँ पे। शॉर्ट ऑफ लाइन गेयर बहुत ही अच्छी तरह से पंच किया, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है वहां पे मिड विकेट पे। 1 ही रन से संतुष्ट मानना पड़ेगा। स्कोर हो चुका है 136 रन। वेरिएशन करने का प्रयास, लेकिन वहां पे आपकी बार वो स्ट्रोक के पीछे इतनी ताकत जनरेट नहीं कर पाए थे। एलिवेशन क्लियर नहीं मिला। एक और स्क्वायर लेग पे, डीप स्क्वायर लेग पे एक आसान सा कैच दे पे थे और एक एंटरटेनिंग इनिंग्स का यहाँ पे एंड आउट हुआ। हेमल आउट होके जा रहा है 70 रन बनाते हुए 7-0। 136 रन, 5 विकेट के नुकसान पर यहाँ पे हेमल ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे खेला। शॉर्ट वन डिलीवरी, शॉर्ट पिच डिलीवरी, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन पूरा किया, अच्छी फील्ड थ्रो किया बॉलर की तरफ। 1 ही रन से संतुष्ट मानना पड़ेगा। अच्छी तरह से आपकी बार फील किया, लेकिन 1 रन जरूरी यहाँ पे मिलेगा। ऐसे 1 रन के साथ अब स्कोर हो चुका है 138। सो फैसिनेटिंग फैक्ट्स
फॉस्टर ने 10 ओवर की समाप्ति के बाद अपनी टीम के लिए 138 रन बना है. After 10 over, Foster made 138 run loss of a fifth wicket. Mayank Patel remains not out on 23. Jay remained not out on the 1. The score is 138 for loss of 5 wicket in 10 over. The auction sponsor NS Stonex, ground sponsor Viva, apparel sponsor Unimaple, golden window sponsors Surat Painter and side screen sponsor Intellisys Solutions. Thank you to our food sponsor On and Off, Litoria and Luxarte Living. We acknowledge our boundary line sponsors Kashtha, Shipra, Swestham, Serenity, Shivdhara and Insights by Maruti Hardware. Special thanks to 4 and 6 sponsor Farnova Kitchen, wicket sponsor Rowan Decor, man of the match sponsor Guardian Glasses and drinks sponsor Zenu Blaster. Once again, thank you all for supporting Ballbet Tournament 2026 and the spirit of cricket and family games. So come, let's all together playfully enjoy this fabulous Ballbet Tournament 2026, the ultimate cricket showcase. Thank you.
And that was a fantastic four, sponsored by Farnova Kuchen. 119 रन का सामना करने के लिए पहली गेंद भी यहाँ पे 4 रन मिलते हुए 4 रन से शुरुआत होती हुई। जस्टिस शाह ने शुरुआत से ही दिखा दिया कि यहाँ पे आक्रामक बैटिंग करने का मौका मिला तो वो बिल्कुल जरूर यहाँ पे करेगा। Harsh Patel is going to bowl from the combo side end. So first over from Harsh Patel in the very first delivery is given a boundary. So good ball delivery, but lovely played down to the cover reason. There is a man who has fielded inside the boundary lines. Nicely played down to the onside. Ball was rolled along the ground for the singles. With the singles, now score moves on to 5. They are having a target to win this match of 139 runs in 10 overs. So required run rate is about 14 runs per over. Kaushal this time wanted to play missing completely. Wicket keepers are collected outside the off stump. There is a one slip closing fielder for the Kaushal. Backward point, cover, extra cover, mid off in the offside circle. And there are 2 men down to the onside in the semicircle. There is a mid wicket and widest fine leg. Once again outside the off stump. This time there is no any footwork, no movement. Without coming into the line of the ball, he wanted to play missing completely and wicket keepers are collected. Kaushal Lahiri is yet to open his count. And that's he got an edge of the blade and tried to attempt for the 3 times but unable to hold it. It's a good ball this time, wanted to cut it down to the offside, got an edge of the bat. It was outside the edge. Lucky for him that he has been dropped by the wicket keeper.
Over pitching this time outside the off stump, fuller land delivery, nothing wrong with the delivery, but not into coming into the line of the ball once again by Kaushal, not getting the connection with the bat, and that's the end of a first over. Very good over by Aham Patel this time. So first over is finished. Now score is 5 per loss of no wicket. Just is a half. Tejas playing on his individual score of 5. Kaushal is yet to off the mark. So very good over by Harsha Patel. He has bowled 1 over, no maiden, 5 run, no wicket. The first one very wide outside them, very wide outside the off stump. Mayank has started his bowling with the wide ball. One more extra run is now at the score, moves on to 6. Once again, the similar delivery way outside the off stump and a signal from Paris Patel. That's a wide one. This time bowling to the air. He played so early, got an edge of the blade, gone down to the point reason. There is a man up because an easy catch for him, but unable to hold it, put it downward. Second catch is put it down so far in the second over. In the first over, Kaushal was got alive by the wicketkeeper, and this time by the point reason fielders. That's a good one this time. Good comeback by him with the dot ball outside the off stump, getting the extra bounce with that hard land pitch. ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर थी और अंपायर ने थोड़ा सा समय लिया, देखा, फिर उसने डिक्लेयर किया कि वो वाइड गेंद थी. एक एक्स्ट्रा रन यहाँ पे, अतिरिक्त रन इस ओवर में ज्यादा देखने को मिला. अब की बार उन्होंने अच्छी तरह से पिक करके खेला. जरूर है देखना है कि वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए निकल गई. And that was a fantastic four, sponsored by Farnova Kuchen. Now scores goes up to the 13 with that boundary now, and Kaushal is with that open is count with boundary. Once again there is a now chance. Kaushal go back. Has now survives. One is a chance for the cotton ball for the bowler. This is the third catch so far is dropped in the second over. 10 गेंद में अब तक 3 कैच छोड़ चुके हैं यहाँ पे फील्डिंग साइड का. जहां तक सवाल है, कौशल ने खेला था, गेंद हवा में जरूर थी, 1 रन मिला जरूर. यहाँ पे स्कोर हो चुका है 14. तेजस इज ऑन 6. Try to play the reverse swap with this time outside the off stump. He was well predetermined, but not able to connect the contact with the bat this time. Off stump, so once again, there is a little bit outside the off stump. He wanted to punch it down to the offside, and batsman missing completely, wicket keepers collect, and that's the end of a second over of this inning. Score is 14. दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 14 रन. यहाँ पे तेजस खेल रहे 6 रन पर, कौशल खेल रहे हैं 5 रन पर. मयंक ने अब तक 1 ओवर की 9 रन में ज्यादा, उसमें वाइड एक्स्ट्रा रन ज्यादा यहाँ पे आए. हर्ष पटेल ने अब तक 1 ओवर किए, काफी किफायती रहे, 5 रन दिए, लेकिन विकेट लेने में कामयाबी नहीं मिली है.
It's a lower full toss one playing down to the onside into vacant range into fence for 4 run. It's a low full toss again just on the middle leg stump. Kaushal was well in the position, played down into the square break down to the onside for 4 run. Now with it boundary, now score jumps onto the 18. Ars this time bowling outside the off stump, and Kaushal without getting into the line of the ball he wanted to play the machine completely, and wicket keepers collected a return to the bowlers. That is a 3-man inside of semi-circle and 2 men just far right on the boundary line. Down to the leg side, you want to play it, ball is wrapped on the pad. No question of a run, score remains 18. Panolas. Once again into the air, and at last moment Kaushal he is going back to the pavilion. It was This wonder wicket in Ball Bat Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. First breakthrough at a score of 18 run. Of course, Kaushal chance got a 2 or 3 life, and at last he was been caught at the cover reason area and gone back into the pavilion side. The now score is 18 per 1. Ravi Shah is the new man. It's a good one this time, right into the direction of the ball, right into the off and middle stump, not giving any chance of batsman to go for a laugh one. It's a good ball this time, is bowling with the dot after getting the wicket now. And this time the umpire's got his hands appeal for the caught behind. He wanted to draw it, missing completely. It was up the body of the batsman, not from any blade of the batsman. So at the end of third overs, the score is 18 per loss of 1 wicket. Ravi Shah is a new batsman. He's been here as a one-down batsman. Tejas Shakki is playing on his individual score of 6. 3 overs so far completed. Harsh Patel, he has bowled 2 over, no more than 9 runs and got a 1 wicket. So far he's the only successful bowler. Now 4th over is going to start from the combo side. Here asked to umpire Mr. Paresh Patel and Ankur Patel, they are giving their service. Our scorer comes statistician Utsav Patel, who is on the correct side. Little bit changing fielding side down to the onside. Yes, and the one man मिड विकेट के एरिया को जहां पे तो उसको पीछे भेज दिया है वहां पे. Way down to the leg side, and there is a signal from umpire, it's a wide. 2 men is still remain down to the onside in the semi-circle. That is fine leg and square leg.
Got an edge and wicket gives a lovely collected gather it. He wanted to play it, he just away from this body. Unable to hold it on the ball and get an edge of the blade, and he's going back to the pavilion. Second wicket is fallen. Is brought to you by Rowan Decor. दूसरा विकेट यहाँ पे गिर चुका है। अब की बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर से खेलना चाहते थे, गेंद की लंबाई तक नहीं पहुंच पाया, बाहरी किनारा लिया और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। एक आसान सा कैच पकड़ते हुए यहाँ पे अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया दूसरे विकेट में। मयंक को मिलती हुई ये पहली सफलता है। फ्लिक जरूर किया है वहां पे, स्ट्रेट टू द फील्डर, अच्छी फील्डिंग रन लेना चाहते थे, लेकिन वहां पे खिलाड़ी मौजूद थे, बहुत खूबसूरत तरीके से फील करते थ्रो कर दिया था वहां पे। फाइन लेग ऊपर है, स्क्वायर लेग डीप में, मिड विकेट बिल्कुल डीप में, मिड ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर है यहाँ पे। ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर गेंद जरूर थी, खेलना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ऐसा शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से आपके बार कवर की तरफ खेल लिया 6 रन के लिए। टाइमिंग बहुत ही खूबसूरत था, जैसे ही देखा अपने आप को पोजीशन करते हुए खेल दिया था 6 रन के लिए। इसी 6 रन की वजह से अब स्कोर हो चुका है 25। नाउ स्कोर इज गॉन अप टू 25, a loss of 2 wicket. It was a brilliant 6 down to the offside. Once again, short pitch delivery, pull it down to the onside. Of course, there is a man right on the boundary line. And before he could field and throw, the batsman having a chance to go for the one more run. So, couple of runs is coming in on that delivery particulars. 2 runs is now added into the score, and the score goes up to 27. We're down to the leg stump. We're down to the onside, and umpire signal that was a wide one. He's bowling left arm wood wicket to the left-handed batsman with the 5 men down to the onside. Once again, a short pitch delivery and it's a lovely pull over this deep square leg for 6. His Super 6 is sponsored by Farnova Kuchen. With a brilliant 6, now score goes up to 30 for loss of 2 wicket, and with a 6 now Priyank Dakoria reach on his individual of 14. Ravi Shah is yet to open his count. 4th over has been completed now. Mayank 16 run coming in the last over. Mayank has so far he has bowled 1 over, no more than 16 run. Of course, he's got a 1 wicket in over. Harsh Patel, he has been bowled 2 over, no more than 9 run, and of course he's got also wicket. Rohan Desai has been introduced to bowl from the combo side. As a left-handed bowlers and well bowl very close to the body and flick it down out into the fence for 4 runs. Sponsored by Farnova Kuchen. It was very close to his body and was well in the position, flick it down to the onside into the fence for 4 runs. Lovely timing. Nobody has chance to stop the ball inside of the boundary lines.
The stump pressure shows to the bowlers. He's now been distracted, bowling just way outside the off-stump signal from umpire. It was a wide ball. One more run is added. 39. Lower full toss delivery and flick it down to the onside. That is, of course, a man is unable to stop it. As a misfielded by and ball past him into the fence for 4 runs. He was inside of the semi-circle. Easy play down, straight to the him, but misfielded by him. Unfortunate ball is, and ball is gone into the fence for 4 runs. It's a good ball this time. Change of pace toward slower down the ball outside the off stump. Ravi Shah is batting with 8. This time quick of 1, Sun saw it early, got it early, come in the position, play down to the onside. Using his race, turn it down for the single. Now score goes up to 44 for loss of 2 wickets. Outside the off stump once again, not controlling on his length and line. He's tried to generate a fair amount of pace but unable to control his length. Bowling more often outside the off stump. One more extra run is now added. One more ball he has to bowl. इस टाइम से पटकी हुई गेंद जिसे कहते हैं वहां पे खिलाड़ी जरूर आए, लेकिन प्रयास था, कैच पकड़ नहीं पाए और दूसरा रन भी यहां पे लेते हुए। स्कोर हो चुका है 47 नाउ। स्कोर गोज अप टू 47 for loss of 2 wickets. Once again into the air. Let's see what's going to happen. Ball is landing. No man's is there. And given an easy chance for the 1 more runs. Couple of runs is taken in the last delivery. And that's the end of over of Roshan Desai. Hello. આના પછીની જે મેચ છે નેક્સ્ટ કેપ્ટનને વિનંતી કે ટોસ કરવા માટે અહીંયા આવી જાઓ. આના પછીની જે 5th મેચ છે મયન અને કૌશલ લહેરીને વિનંતી કે ટોસ કરવા માટે અહીંયા આવી જાઓ. With immense pride and gratitude, a heartfelt thank you to our Ball Bat Tournament 2026 title sponsor Stanley and co-title sponsor Alcom. Also sincere thanks to our team sponsors Talisya Systems Private Limited, Cool Line by Daikin, Nexion, O General by Global Electrify Shop, Core, Equent, Ekai, Everest Fly and Zydex. Our appreciation to the auction sponsor NS Stonex, ground sponsor Viva, apparel sponsor Unimaple, golden window sponsors Suet Painter and side screen sponsor Intellisys Solutions. Thank you to our food sponsor on and off, Litoria and Laxate Living. We acknowledge our boundary line sponsors Kashtha, Shipra, Swestham, Serenity, Shivdhara and Insights by Maruti Hardware. Special thanks to 4 and 6 sponsor for Nova Kitchen, wicket sponsor Rowan Decor, man of the match sponsor Guardian Glasses and drinks sponsor Zenu Blaster. Once again, thank you all for supporting Ball Bet Tournament 2026 Toss time. and the spirit of cricket and family games.
So come, let's all together playfully enjoy this fabulous ball bat tournament 2026, the ultimate cricket showcase. Thank you. Fascinating Foster won the toss and batting first. Rest is sorry. Hello. 5 over is completed. Drinks is off the field. And score is 49 for loss of 2 wicket. Prank is batting with 18. Ravi Shah is on unusual score of 9. Rohan Desai he has bowled 1 over and 15 run coming in the last over. Mank, he has bowled 1 over, no more than 60 run, and he got a 1 wicket. 5th over has been changed and bowling and will be the change. This time he has to bowl from the get inside, in front of the commentary box. He's setting the fielding situation down to the onside. He has occupied the 3% right on the boundary line, 4 men on the boundary line. Mid-on, mid-wicket, deep square leg, and fine leg rather square. थर्ड मैन थोड़ा सा ऊपर ले है यहाँ पे. ऑफ साइड की गेंद थी, ऑन साइड में जरूर खेला, 1 रन मिलेगा यहाँ पे. लो फुल तो जरूर गेंद थी, ऑफ साइड पे अच्छी तरह से पिक करते हुए उन्होंने ऑन साइड पे खेल लिया था. 1 रन के साथ यहाँ पे शुरुआत होती. ड्रिंक्स के बाद की पहली गेंद थी, पहली रन पे यहाँ पे रन आते हुए. स्कोर हो चुका है यहाँ पे 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर. अभी भी 89 रन चाहिए, 29 गेंद बाकी है. 5वीं मैच के लिए टॉस भी यहाँ पे हो चुका है. It's a good ball this time. So his ball just outside the off stump, and the batsman wanted to make the room for it. So it was a little bit. He has opened the wicket and tried to play it. So that's why he's not able to connect the ball properly with the bat. Playing straight to the fielder, that is a hitting hard this time, but unable to get the single this time. Firmly hit it this time down to the onside. 51-2. It's a good one ball this time. He has suffered across on the offside, making the even room for his softly played down to the onside to the folder. Bowler himself fielded. Meanwhile, about the batsman chance to go for a single. Oh, this time ball is almost on the off stump and playing down to the onside. Getting single easily at this time. So now score goes up to 53. This is the 6th over in the progress. Ravi Shah is now on 11. Prank is on 20. Jigar Dalal continues bowling from the get inside. It's the first over from this get in. Slower one, of course. That is a man, and the Rayman is dropped it. And that's a signal from umpire that it was a 6-4. Yes, boundary. And that was yes, 8 runs. fantastic 4, sponsored by Farnova Kuchen.
So 8 runs he has got in the last stroke. Now score is 61. Sixth over is now completed. Score is 61 for loss of 2 wicket. Last ball was very straight to the fielders, but unfortunately could not able to hold it and ball just gone over to him. So in a particular golden area, so they get a double run. Particularly it was a boundary, but 4 additional run they have got it because in a particular zone he has hit at that boundary. So now score is 61 for loss of 2 wickets. 7th over is now. The stump played down to the onside in the deep indicated region. There is a man who's. And that was a fantastic four, sponsored by Farnova Kuchen. With that boundary, now score goes up to 65. It's a good ball this time. He wanted to play it, not connect properly, not making the timing it well. Just drop at short, shilly mid off and gone for the single. Score is now slowly moving and going up to the 66 for loss of 2 wicket. Now Ravi Shah is coming to face the bowler. Rohan Desai is a right-handed batsman. There's a combination of a right-handed and left-handed batsman. Oh, much more into the air, and let's see what's going to happen. There is a man who is looking towards the ball only and sitting over the rope for 6. It's a fantastic 6 now. Super 6. This Super 6 is sponsored by Farnova Kuchen. Over pitching and getting outside the edge of the blade and running down to the turban region. That's a 4. And that was a fantastic four, sponsored by Farnova Kuchen. Consecutive bound is coming in last 2 deliveries. Last one 4, and then before it was a 6 down to the onside. Once again, hook it down to the onside, and that's a 6. Wonderful 6. Short feed delivery is put while in the position. Transfer is weight so nice. This Super 6 is sponsored by Farnova Kuchen. Now score goes up to 82 when brilliant 6 down to the onside. It was a while in the position, hook it so nicely. And clear over the rope for 6. Ravi Shah now moves to 35. Outside the edge, and there is a man at a short third man who picked up then throw towards the wicket keeper. But there is a chance for the both batsmen to go over for good shingles. So 7th over is finished with the single run. Score is 83 for loss of 2 wickets. Still 56 runs are required in remaining 18 balls. Current runner is going about very close to 12 runs per over, 11.86 per over. Rohan Desai, so far he has been bowled 2 over, no more than 37 run and yet to have wicket. जिगर दलाल ने अब तक एक ओवर किया 12 रन दिए, एक विकेट लेने में उन्हें सफलता नहीं मिली है.
Seventh over is completed. Now 8 over in the progress. Bowler name? Once again hooking down to the onside and sending over the roper 6. Short pitch one, transfer is weight so nicely. Super 6 is sponsored by Karnova Kuchen. Yes, welcome the 8 over with the Super 6. Once again outside the Austin pick up so nicely over the deep square for 6. That's a brilliant 6. Super 6 is sponsored by Karnova Kuchen. With that 6 now score goes up to 95, a loss of 2 wicket. 7.2 versus progress, still require a 44 and remain 16 balls. Way down to the onside and there's a signal from umpire, it's a wide. In a slow motion action, umpire has declared that was a wide one outside the leg stump. 96 for 2. Once beautifully picked this time in the same zone, same result, and that's a wonderful 6, a big one, it's a big one. Karnova Kuchen. तरीके से वो खेल रवि शाह जिन्होंने लगातार यहाँ पे इस ओवर में 3 छक्के लगाए, वो खेल रहे 54 रन बना, तो उन्होंने भी अपने 50 रन यहाँ पे पूरा कर लिया। 16 गेंद का सामना करते हुए उन्होंने 5 छक्के और 3 चौके लगाए हैं। ब्यूटीफुल डिलीवरी, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से, जैसे ही देखा कि यॉर्कर लाइन थी, उन्होंने स्कूप्ड आउट किया। सिंगल की वजह से अब स्कोर हो चुका है। Once again picked nicely down to the onside. There is a no man is there.
and just gone over the rope for Super 6. 6 is sponsored by Farnova Kitchen. 12 गेंद में 28 रन चाहिए अब। रवि शाह खेल रहे हैं, अब 1 रन बनाते हैं। 61 पर रवि शाह पहुंचे और प्रियांक पहुंचे हैं 26 पर। 13 गेंद का जिन्होंने सामना किया, लेकिन रवि शाह ने काफी डिलीवरीज। 29 गेंदों में 29 गेंदों में उन्होंने दोनों इस तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में 92 रन बनाए। 92 रन्स they have put up on the boards just in 29 deliveries as a third wicket partnerships. Good partner. Body play down to the onside for the single. Rotate the strike at the board. The batsman has settled down so nicely. Still they are having 8 wickets in their hand, so they are having chance to go for the risky one. Score is 118 for loss of 2 wickets. It's 8.2 over in progress. एक 101 रन बना दिया है दोनों बैट्समैन ने, जहां तक सवाल है इस थर्ड विकेट पार्टनरशिप में, और 32 गेंदों में उन्होंने ये 101 रन बनाया। बहुत ही खूबसूरत पार्टनरशिप। यहाँ पे फुल टॉस गेंद है, अब की बार फाइन ले की तरफ है, देखना है कि गेंद के पीछे आ रहा है, लेकिन इसके लिए अच्छा मौका नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए आती हुई हमारे कमेंटेटर बॉक्स के देख। जम चुके हैं यहाँ पे। जिस तरीके से रवि शाह और प्रियांक खेल रहे हैं, 106 रन की उन्होंने पार्टनरशिप यहाँ पे जड़ दी है तीसरी विकेट के रूप में, केवल 33 गेंद का सामना करते हुए। दोनों खिलाड़ी का बराबर योगदान रहा है अपनी टीम के लिए। और ये देखिए अपने स्लॉट एरिया में उन्होंने बाहर भेज दिया, पार की बार। अब की बार बहुत ही मैसिव 6 जिसे कहते हैं। His Super 6 is sponsored by Farnova Kitchen. एक 131 2 विकेट के नुकसान पर 8 रन चाहिए अब 8 गेंद में। अब की बार जम के खेला है, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। थोड़े से दौड़ने में यहाँ पे दिक्कत हो रही है। अब चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 7 रन 60 गेंद में। जिस तरीके से रवि शाह ने धुआंधार यहाँ पे बल्लेबाजी की, लग रहा था कि इस लक्ष्य काफी दूर है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हार्ड हिटिंग की 6 ओवर के बाद, बिल्कुल उन्होंने अपनी 132 पर लॉस ऑफ 2 विकेट।
Over pitch one and playing over the head of the bowlers for the single only. That is a mine in the deep. (133). Ninth over is completed. नौवां over अब समाप्त हो चुका है. Now only the 6 balls are remains. 6 runs is required. Nothing hard now for the wood batsmen. Even they can go for the good single one also, but they are looking for the good bad delivery. Bowler name? Left arm bowlers are bowling, and there is a two-man pace. A lovely piece of fielding there in the deep end, given only a single run is there. Now 5 ball, 5 runs. 134 per 2. Ravi Shah is on 74. Prank is on 35. It was a full toss outside the off stump. Dot ball. 134. 5 runs requires in 4 deliveries. हवा में गेंद जरूर है. देखना है कि वहां पे गेंद के नीचे आ रहा है और इसके साथ यहाँ पे ये विकेट गिरता हुआ. थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट यहाँ पे दिखाई देता है. जिस तरीके से मैच को उन्होंने बनाया था, यहाँ पे थोड़ी सी क्रूशियल पोजीशन क्रिएट होती हुई यहाँ पे. This wonder wicket in Ballbat Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. तीन गेंद और 5 रन चाहिए. जिस तरीके से रवि शाह और दोनों अच्छी तरह से खेल रहे थे, वहां पे एक अच्छी ब्रेक थ्रू मिली. थोड़ा सा क्रूशियल पोजीशन है. अब बैट में यहाँ पे गेंद में थोड़ा सा मोमेंटम आया. नाउ ट्विस्ट इन द गेम. 5 runs required in 3 balls. Let's see what's going on close. पॉइंट है. कवर को बिल्कुल ऊपर कर दिया है यहाँ पे बॉलर ने. अच्छी सूझबूझ के साथ वो गेंदबाजी करने का प्रयास करेंगे. अब की बार गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए. यहाँ पे वाइड का इशारा और यहाँ पे इस मैच को जीत लिया जस्टिसा ने. 7 विकेट से जीतती हुई यहाँ पे. Sponsored by Farnova Kuchen.
हेलो हेलो हेलो, हाँ, दोनों अंपायर से गुजारिश है कि मैच को जल्दी स्टार्ट करा दे। સ્કોરર કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં આવે. हेलो उत्सव अंपायर પરેશ ઉત્સવને કે ને એની પર ઓટીપી આવ્યો હશે, એક જરા ઓટીપી જોઈએ છે. ઓટીપી આવ્યો હશે તારી પર.
What a wicket! This wonder wicket in Ballback Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. ये पांचवा मैच चल रहा है यहाँ पे फर्स्टर और जस्टी के बीच। यहाँ पे फीमेल को यहाँ पे पार्टिसिपेट है। 6 ओवर का ये मैच चल रहा है, तीसरा ओवर चल रहा है। यहाँ पे गेंदबाजी करते हैं, ये फुल टॉस गेंद लाइट बॉल है, लेकिन अब की बार अच्छी तरह से क्लीन 6 वहाँ पे अंपायर का इशारा।
It was a full toss delivery and much in the position, well in the position, pulled it toward deep square leg by 6. Way outside the off stump, so काफी ज़्यादा सर्कल के अंदर गेंद को उन्होंने रोका। चार्जिंग डाउन ऑन द विकेट जिसे कहते हैं, आगे आके हाफ वाली पे लेके बिल्कुल फुल टॉस पे लिया था, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट मानना पड़ेगा। लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया था जहां पे खिलाड़ी मौजूद, और इसी के साथ यहाँ पे इस ओवर की भी समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद जस्ट का स्कोर है 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई कमेंट्री बॉक्स इनकी तरफ से लेग स्टंप से बाहर थिक फ्लिक करना चाहते थे, मिडफील्ड भी विकेट कीपर से वाइड का इशारा, 1+1 मिलेगा यहाँ पे। ऑफ स्टंप पे गेंद थी, लेकिन थोड़ा सा पहले से सफल करके ऑफ स्टंप से बाहर निकल आए थे। ऑन साइड में खेला, स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ 1 रन के साथ यहाँ पे स्कोर को आगे ले जाते हुए 26 रन। और शॉर्ट पिच वन बैकफुट पे रहते हुए गेंद को खेलने का प्रयास किया, और इसके साथ यहाँ पे विकेट हासिल करते हुए दूसरा विकेट का पतन। This wonder wicket in Ball Bat Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. नए खिलाड़ी मैदान पर आ चुके हैं। यहाँ पे ऑफ स्टंप से बाहर स्ट्रोक के लिए जगह बनाते हुए पंच किया, 1 रन पूरा किया। वहां पे जब तक कि गेंद को फील करे, थ्रो करे, दूसरा रन लेने का भी मौका मिल गया था। थोड़ी सी ऑफ साइड बाहर थी और बिल्कुल रूम था वहां पे उनको कट शॉट खेलेगा जिसे कहते हैं। स्कोर हो चुका है 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आपके पास स्ट्रेट ड्राइव वहां पे, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा। यहाँ पे खिलाड़ी 2 मौजूद है, गेंद को फील करके थ्रो कर दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन गुंजाइश नहीं थी। इसी के साथ ही आउट। ऑफ स्टंप से ज्यादा बात ही और ज्यादा बाहर गेंद की थी, बॉलर ने काफी चतुराई के साथ गेंद की, खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा लिया और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। इसी के साथ इस ओवर में और सफलता मिलती हुई। 2026 is brought to you by Rowan Decor. और एक विकेट का पतन के साथ अब स्कोर हो चुका है 29। ओवर भी खत्म हुआ, अंतिम गेंद पे विकेट मिली थी और आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद किया था।
29 रन 3 विकेट के नुकसान पर यहाँ पे। जेस्टी का यहाँ पे स्कोर है। ये फीमेल डिपार्टमेंट की मैच है यहाँ पे। 6 ओवर के लिए ऑफ स्टंप से बहुत ही ज्यादा बाहर और अंपायर का इशारा वाइट बॉल का काफी ज्यादा बात थी। एक अतिरिक्त रन का इजाफा, स्कोर हो चुका है 31 रन। हालांकि पहली गेंद के मुकाबले थोड़ी सी कीकर गेंद थी, आर्मर गेंद जिसे कहते हैं, लेकिन इतनी अच्छी तरह से गेंद को पहचान गए थे और पूरी अच्छी तरह से गेंद पे खेल दिया और डीप कवर में 1 रन के लिए। ज्यादा फ्लाइट करने का प्रयास और गेंद लेग स्टंप से भी काफी ज्यादा बाहर निकल गई। अंपायर का इशारा वाइड बॉल का था। फुल लाइन डिलीवरी जिसे कहते थे, बल्ले पे आए नहीं, खेलना चाहते थे जरूर यहाँ पे बैटर्स। स्कोर अभी भी 38 है। अब की बार बल्ले पे आए लेकिन थोड़ी सी बल्ले के हिस्से से लगती हुई गई 1 रन। वहां पे ऑरेंज कैप में खड़े खिलाड़ी ने बहुत खूबसूरत फील्डिंग की, लेकिन इतनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट भी वहां पे रहा। 39 और बहुत खूबसूरत कैच। व्हाट अ वंडरफुल कैच ही हैज टेकन बिहाइंड द विकेट। लवली कैच, सुपर्ब कैच, quickly outside the edge. This wonder wicket in Ball Match Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. और एक विकेट का पतन। और अब तक यहाँ तक महिलाओं की दूसरी मैच चल रही है, उसमें सबसे अच्छे कैच पकड़ने वाले विकेट कीपर है यहाँ पे। बहुत तेजी से गेंद बल्ले से बाहर ही निकलती, इतना आसान नहीं होता, लेकिन इट्स अ वंडरफुल कैच इन द वे दे ही गॉट इट। इट्स अ लवली कैच बाय विकेट कीपर। खूबसूरत कैच। स्कोर है 39 रन 4 विकेट के नुकसान पर यहाँ पे। ऑफ स्टंप से बाहर थी और थोड़ी सी और दूर रखने का यहाँ पे प्रयास थी, हवा में भी और रखी थी जिसे कहते हैं। अब ब्रेक करते हुए अब की बार लेग स्टंप पे गेम ज्यादा बाहर और ज्यादा मूवमेंट होती, ऑफ टर्न होती बाहर की तरफ। वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। फिर से एक बार आउटसाइड दी एज और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। काफी मंजे हुए खिलाड़ी लग रहे हैं जिस तरीके से वो कैच पकड़ रहे हैं। This wonder wicket in Ball Match Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. इकतालीस रन 5 विकेट के नुकसान पर यहाँ पे। लेकिन विकेट कीपर का जहां तक सवाल है, महिला विकेट कीपर ने बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग की आज, बहुत खूबसूरत कैच लिए, अच्छे फील्डिंग का प्रदर्शन जिसने कहा जाता है किया है यहाँ पे।
41 रन का सामना करते हुए यहाँ पे लक्ष्य का पीछा करते हुए निर्धारित लक्ष्य के और आगे बढ़ते हुए दोनों ही सलामती बल्लेबाज ने पहली गेंद पे अपने स्कोर को रोटेट करना स्टार्ट कर लिया यहाँ पे। और इसके साथ ही क्लीन बॉल, फुलर लाइन डिलीवरी थी, खेलना चाहते थे पूरी तरह से, चूंकि बल्ले से निचले हिस्से से लगे भी नहीं और बिल्कुल स्टंप पे लगते हुए यहाँ पे पहले विकेट का पतन। In Ball Match Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. हेलो, फुल टॉस गेंद थी आपकी बार, कवर की तरफ खेल लिया, वहां पे फील करे तब तक रन लेने का मौका भी मिल चुका। हालांकि एक विकेट बहुत ही जल्दी यहाँ पे गिर चुका है। राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए, बॉडी लाइन गेंद जिसे कहते हैं, बिल्कुल उनके शरीर के हिस्से से लगते हुए बल्ले पे आई नहीं। स्कोर है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पे राउंड विकेट गेंदबाजी करते हैं, लेग स्टंप से ज्यादा बाहर, अंपायर गेंद को कलेक्ट करके वापस करे बॉलर को। अब की बार ऑफ स्टंप से गेंद थी, लेकिन पहले से ही उन्होंने डिटरमाइन कर लिया था ऑन साइड में खेलने के लिए। पुल जरूर खेला, लेकिन रन एक ही मिलेगा यहाँ पे। वहां पे डीप में खिलाड़ी मौजूद थे, कौशल गेम को फील करके थ्रो किया, एक रन लेने का मौका जरूर मिलेगा। मैन इन द डीप इज कौशल वाज फील्डेड एंड so too was the wicket keepers। फिर से एक बार बॉलर तैयार यहाँ पे। थोड़ी सी तुकी लंबाई की गेंद जरूर थी, लेकिन फ्लैट थी आपकी बार, लेकिन अच्छी फील्डिंग, वहां पे बैकअप पीछे अच्छी तरह से कर रहे थे, एक ही रन लेने का मौका दिया ऑन साइड में। ज्यादातर स्ट्रोक जो आता है, जो पैटर्न होती है, वो ऑन साइड में होती है। लेग स्टंप पे ज्यादा पुल स्ट्रोक के लिए होता है, नेचुरल होता है हर एक बैटर्स के लिए कि वो ज्यादातर स्ट्रोक ऑन साइड पे खेलते हैं।
इसलिए देखिए ऑफ साइड में मुझे यहाँ से केवल 3 खिलाड़ी दिखाई देते हैं, बाकी के सभी ज्यादा खिलाड़ी ऑन साइड में है। ये अच्छी गेंद थी, थोड़े से डिसिप्टिव खेलना चाहते थे, गेंद जितनी उम्मीद की थी उससे थोड़ी सी धीमी गति से आई थी, ऑफ स्टंप से बाहर भी थी। ये अच्छी तरह से थोड़ा सा पिक किया, फ्लैट कर थोड़ा सा तिरछे बल्ले से खेला, कहते हैं ना आड़े बल्ले से अब की बार उन्होंने गेंद को खेला था। अच्छी फील्डिंग वहां फीमेल फील्डर्स के द्वारा। हाँ? 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद थी, हवा में गेंद, और इसके साथ ये दूसरा विकेट। फ्लाइटेड गेंद रखी, थोड़ी सी ऊपर सी रखी थी, खेलना चाहती, जल्दी से खेले और हवा में रहे। इसके साथ दूसरा विकेट का पतन होता हुआ। In Ball Bat Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. चौबीस गेंद में 28 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। जहां तक स्कोर का सवाल है, स्कोर है 14 रन यहाँ पे 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी का भार संभालते हुए यहाँ पे इनकी ये पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर, और अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। एक अतिरिक्त रन के साथ यहाँ से अब की बार ऑफ साइड में देखते रहे, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास। अच्छी बॉलिंग, अच्छी डॉट बॉल यहाँ पे होती हुई। पॉइंट के ऊपर से खेला है, रन लेने का मौका जरूर मिलेगा। 1 रन पूरा किया वहां पे, जब तक कि गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे, दूसरा रन लेने का भी मौका मिल गया था। 3 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 2 खिलाड़ी बिल्कुल कवर सेमी सर्कल के अंदर थे, इसलिए 2 रन लेने का मौका मिल चुका था यहाँ पे। इसी 2 रन की वजह से स्कोर हो चुका है 18 रन। ये बहुत ही खूबसूरत गेंद थी, थोड़ा सा ट्रेश, अपने आप को थोड़ा सा क्रॉस बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, सफल किया था ऑफ साइड में, लेकिन बल्ले पे आई नहीं अच्छी तरह से गेंद। फिर से एक बार अच्छी डॉट बॉल, अच्छी डॉट बॉल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से धीमी गति से गेंद, जल्दी से स्ट्रोक खेले बल्ले के ऊपर, पैड पे लगी, पैड के ऊपर वाले हिस्से से। ये ओवर पिच गेंद जरूर है, लेकिन वहां पे एक आसान सा कैच होने का मौका, स्ट्रोक के पीछे टाका नहीं लगा पाए थे, ये एलिवेशन क्लियर नहीं कर पाए थे, इसकी वजह से यहाँ पे विकेट गिरा। विकेट नंबर 3 in Ball Bat Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. अठारह रन 3 विकेट के नुकसान पे सफल ओवर रहा, वहां पे अंतिम गेंद पे विकेट मिला। तीन ओवर समाप्त हो चुका है, स्कोर है 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब की बार ऑफ साइड में गेंद, बैक टू द बॉलर्स, अच्छी फील्डर फॉलो थ्रू में, वहां पे कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 18 पर 3। ऑफ स्टंप के बाहर थी और थोड़ी सी मिसफील हुई, वजह रन लेने का मौका मिला वहां पे बैटर्स को। ऑफ स्टंप से बाहर थी, खेलना चाहते थे पॉइंट की तरफ, सही तरीके से टाइमिंग नहीं कर पाए थे अभी तक बैटर,
और कोई रन नहीं आया, डॉट बॉल होती हुई यहाँ पे। ये लेग स्टंप से बहुत ही ज्यादा बाहर थी। अब की बार वाइड का इशारा, क्लियर इशारा अंपायर की तरफ से। फिर से एक बार वही अंदाज में गेंद लेग स्टंप से ज्यादा बाहर और वाइड का इशारा है। एक और अतिरिक्त रन होता हुआ स्कोर का इजाफा, 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पटकी हुई सी गेंद थी लेग स्टंप पे, यहाँ पे फाइन लेग की तरफ खेला है, लेकिन वो खिलाड़ी मौजूद है, फील्डर्स मौजूद है, वहां पे 1 रन मिलेगा जरूर। ओवर समाप्त हुआ, ओवर नंबर 4। स्कोर है 24 3 विकेट के नुकसान पर। बारह गेंद में 18 रन चाहिए। ऑफ साइड पे धीरे से टैप की हुई गेंद थी, लेकिन पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद है, वहां पे 1 रन लेते हुए 11 गेंद 17 रन चाहिए। अब और इसके साथ ये आउटसाइड ऑफ स्टंप खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा लिया और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। जिस तरीके से उन्होंने कैच पकड़े थे वैसे ही कैच देते हुए वो पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। 2026 is brought to you by Rowan Decor। चौथा विकेट का यहाँ पे पतन हुआ। जिस तरीके से बैटर्स ने अच्छी विकेट कीपिंग की थी, इतनी अच्छी यहाँ पे बैटिंग नहीं कर पाया। सफल होते हुए यहाँ पे बॉलर फिर से एक बार अच्छी गेंद हवा में, गेंद एज लगी है, विकेट कीपर खुद जाके गेंद को फील करे, 1 रन यहाँ पे लेते हुए। काफी तेज गति से आना पड़ा रन पूरा करने का। छब्बीस रन हो चुके हैं, 4 विकेट। अब की बार पॉइंट की तरफ जरूर खेला है, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, पीछे खिलाड़ी बैकअप करे, 1 रन लेने का मौका मिला। पुल जरूर किया है, वहां पे खिलाड़ी देखना है कि पीछे कोई खिलाड़ी है नहीं, अच्छी तरह से बैकअप करते हैं वहां पे, लेकिन इस तरह गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। 31 रन हो चुके हैं अब स्कोर बोर्ड पे 4। ये ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद थी और अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। 1 अतिरिक्त रन यहाँ पे होता है 32 और 1 ज्यादा गेंदबाजी करने का मौका मिल गया। फिर से एक बार पुल जरूर किया है, स्क्वायर अंपायर के ठीक पीछे खड़े खिलाड़ी ने गेंद को फील किया, थ्रो किया, रन अच्छे तरह से दोनों खिलाड़ी के बैटर के बीच अच्छी रनिंग ने विकेट के साथ यहाँ पे 1 रन पूरा करता हुए। 6 गेंद अब बाकी है और 8 रन चाहिए। The loss of 4 विकेट, 8 रन चाहिए, 6 गेंद बाकी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। फील्डिंग में परिवर्तन होती हुई ऑन साइड में जरूर खेला है, वहां पे फील्डर्स मौजूद और मिसफील्ड हुई और इसी के साथ ये 4 रन। And that was a fantastic four sponsored by Farnova Kuchen।
अब स्कोर हो चुका है 38, 4 रन चाहिए यहाँ पे। फिर से एक बार अच्छी तरह से उन्होंने पुल किया, वहां पे फील्डर जरूर फील्ड करे, थ्रो करे, 1 रन लेने का मौका। 39, 4 विकेट के नुकसान पर ये अंतिम ओवर चल रहा है। धीरे से पुश किया और काफी तेज गति से दौड़ते हुए 1 रन पूरा कर लिया। नॉन स्ट्राइकर रन पे खड़े बैटर्स काफी तेज गति से निकल पड़े थे, जैसे ही उन्होंने गाइड किया था। चालीस रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पे। लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, और इसके साथ यहां पे इस मैच को जीतते हुए With immense pride and gratitude, a heartfelt thank you to our Ball Bat Tournament 2026 title sponsor Stanley and co-title sponsor Alcom. Also sincere thanks to our team sponsors SANDHYA Systems Private Limited, Cool Line by Daikin, Nexion, O General by Global Electrify Shop, Core, Equent, Ekai, Everest Fly and Zydex. Our appreciation to the auction sponsor NS Stonex, ground sponsor Viva, apparel sponsor Unimaple, golden window sponsors Surat Painter and side screen sponsor Intellisys Solutions. Thank you to our food sponsor on and off, Litoria and Lexarte Living. We acknowledge our boundary line sponsors Kashtha, Shipra, Swestham, Serenity, Shivdhara and Insights by Maruti Hardware. Special thanks to 4 and 6 sponsor for Nova Kitchen, wicket sponsor Rowan Decor, man of the match sponsor Guardian Glasses and drinks sponsor Zenu Blaster. Once again, thank you all for supporting Ball Bet Tournament 2026 and the spirit of cricket and family games. So come, let's all together playfully enjoy this fabulous Ball Bet Tournament 2026, the ultimate cricket showcase. Thank you.
And that was a fantastic four, sponsored by Farnova Kuchen. First over in the progress, score is 8 without any wicket this time. SANDHYA. Prank is batting at 5, Jignesh batting on 1. Mike is bowling from the combox, right arm wood wicket. So hard lane, using the hard lane with the wicket this time, but nicely punching into the cover for a single. और इसी के साथ यहाँ पे ये ओवर भी समाप्त हो, ओवर नंबर 1 समाप्त होता हुआ. So first over is finished. 9 runs coming in that over. Prank is on 6, Jignesh on 2. Mank bowl 1 over and 9 runs coming in the last over. This is the 6th match of this tournament of the first day. Second over is now in progress. As a rules for this tournament, the first over would be considered as a power play. Nine without wicket. Closing fielder slips, backward point cover, extra cover, mid off. It's a full toss for one, playing down to the onside, going for a very quickly one. There is a man coming to his right hand. A lot of cover is grand fielded and throws. A good throw after one bounce into the gloves of wicketkeeper. But they are having chance to go for the couple one. Now 11 runs is on the scoreboard with that couple. Outside the off stumbled away, but he has played lovely played with cross-handed bats down to the onside with widest mid on for a single. One of the good shot this time. He's up the back foot, realized the ball is short of lines, well up the back foot, punch it over the extra cover for 4 runs. That's one of the fantastic boundary. It's a good boundary is coming. It was up the back foot, lovely plays, point gaps into the fence for 4 runs. Score is now moves on to 16. It's a full toss one, Beamer delivery. Ball is going towards the third one, boundary 4. Signal from umpire, it was a Beamer one. Fantastic four, sponsored by Farnova Kuchen. Short pitch delivery and pull it to the fans for 6. It's a beautiful 6 this time. Short of line delivery while in position.
Now scores moves on to 27. Once again, it's a lower full toss delivery. There is a man right on the boundary line. Fill it nicely, but having a chance to go for a single one. Lower full toss one and play down to the onside. It's a lovely piece of fielding there by Stride to stop it. At last moment is in vain, and that's a boundary. And that was a fantastic four, sponsored by Farnova Kuchen. With that boundary, now score moves on to 32. And that's the end of a second over. So run rate is about 16 runs per over. स्कोर हो चुका है 32 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन प्रति ओवर यहाँ पे रन चलता हुआ। अच्छी शुरुआत जिसे फ्लाइंग स्टार्ट कहते हैं, वैसे शुरुआत दोनों सलामती बल्लेबाज ने अपने टीम के लिए यहाँ पे खड़ी कर दी है। जिग्नेश 9 रन के साथ खेल रहे हैं, प्रियांक 21 रन बनाते हुए अच्छे स्ट्राइक के साथ। प्रियांक का स्ट्राइक है 300 रन, 300 का स्ट्राइक रन से खेलते हैं वो। Close to the body and flick down to the onside in a typical manner, and that's another one more runs they have taken. Is that's a little bit delayed in the foiling side and got an opportunity to go for one more runs. Good running between the wickets. Mayank bowling to left arm bat. So without coming into the line of the ball, wanted drive, got an edge of the bat, and ball is running over the wicket keeper's head into the fence for 4. That's a very good boundary. Sponsored by Farnova Kuchen. Boundary is now added to score what? 38 now. Down to the leg side. Wanted to play it, missing completely, and signal from umpire, it was a wide one. Stamp dot ball, say ball just outside the off stump, wanted to play. The ball came a little bit low, little bit late this time. Typical stroke down to the onside, and this time found the gap between the two players, and ball is rushes into the fence for 4 runs. Sponsored by Farnova Kuchen. Now score goes up to 43 by loss of no wicket. थोड़ा सा चेंज ऑफ पेश यहाँ पे देखना, ऑफ कटर करने का प्रयास किया था जब तक कि फील करे। बहुत ही खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट जैसे कहते हैं, 2 रन यहाँ पे चुरा लिया। इसी 2 रन की वजह से स्कोर हो चुका है 45 रन 45। This time open his wicket and played into the deep pointer region. There is a man who has fielded right on the boundary line, just few inches of the boundary line, stopped the ball. And that's the end of a 3rd over. 47 after 3 overs. Current run rate is about 15.6 run per over, so projected would be about more than 150 if they are continue with this strike rate. It would like to maintain the consistency of the strike rate.
3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर है 47 रन. Priyank is on 35, Jignesh on 9. Mayank has been bowled 2 overs, no maiden, 24 runs, no wicket. Bhavesh Shabal Parai has been bowled 1 over, no maiden, 23 runs and no wicket. Justizia batting first in this innings, making a 47 run after the 3 overs. Priyank is playing a very sparkling inning, aggressive innings जिसे कहते हैं. 13 गेंद का सामना करते हुए उन्होंने 35 रन बनाया है. हर्ष पटेल गेंदबाजी करने के लिए आया है. This one is over pitch delivery and lovely play down to the onside. Ball was rolled along the ground into mid-wicket area. There is a man, there is a fielder who stopped the ball and Jignesh Patel. Again making the room for it, let the ball come on his blade. He was shuffled down to the leg side very early, but able to play it down to the onside for the singles. Now with the single score goes up to 49. This is the 4th over in the progress. Now Jignesh brought to strike. It's a full toss, one play straight down to the onside. I don't think so. There is a chance for anyone to cut it down, and that's a boundary. That was a fantastic four, sponsored by Farnova Kuchen. Now score is to 43. So almost it was a full toss delivery. Nothing was wrong with the delivery in a way that he punished it down to the onside. Once again, in the similar manner, play down to the onside, but now they will get only the single. There is a man coming very quickly onto the ball, fielded nicely. Single moves the scoreboards to 54. They are looking for a breakthrough early, yet not they succeed. Once again, a lower full toss delivery, and in a pattern way he played down to the onside, and very quickly gone for this under the 1-2s. It's a good running between the wicket. It was a very first run. They passed it very quickly. Let's see. Now there is a man is coming under it, and he is dropped down. It's a pitch delivery, flick it down to the onside, straight into the hands of the fielders, and unfortunately he's put it down. So man got his life, and that's the end of a 4 over. એક ખાસ અગત્યની સૂચના છે, હાઈટીનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. ઇટ્સ અ ટાઈમ ફોર ધ હાઈટીસ. તો જેનો કોની પાસે કૂપન હોય એ લોકો they can go for the high tea. After 4 over, Justice Zeta's 57 for loss of no wicket. Both the opener players are playing so nicely, not missing an opportunity to punish the poor delivery. Kant Wagela has been brought for the bowling from the commentator box side, and he will be bowled to left-handed batsman Priyank Dakoria, who is on 39. 5-4-1-6. First ball started down to the offside. Similar way, similar ball this time, consecutive dot balls between and last 2 bowlers. He started his bowling with the dots. 57.
Oh, this time way outside the off stumps and signal from the umpire that it's a white ball. One more extra run with that 6 now. Score goes up to 58. Over pitching outside the off stump and lovely flush it down to the offside. Manas are running to cut it off and ball is reached to the boundary line for 4 runs. Fantastic four, sponsored by Farnova Kuchen. Now that boundary takes to Zesty on 62. And takes Priyank on 43. Oh, it's a lovely pick down to the onside, and that's a clear boundary. Nobody's behind there. Played into the vacant area, quickly flick it down to the onside, using his wrist so nicely, and bowlers bulleting into the fence for 4 runs. Oh yes, that is a superb attention of the first slips players. He wanted to play reverse stroke, got an edge of the plate. This wonder wicket in Ball Bat Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. So that's the end of a wonderful entertaining innings of the opening players. That's score is now 66 for loss of first wicket. It was outside the edge, caught in a blade of the edge, and there is a wicket. Ball is gone just far behind the wicket. There is a minor slip. It was while in the position and got it very nicely. Down to the onside, and that's a boundary. Short of lane gate while in the position, just pull it only. Sponsored by Farnova Kuchen. With immense pride and gratitude, a heartfelt thank you to our Ball Bat Tournament 2026 title sponsor Stanley and co-title sponsor Alcom. Also sincere thanks to our team sponsors SANDHYA Systems Private Limited, Cool Line by Daikin, Nexion, O General by Global Electrify Shop, Core, Equent, Ekai, Everest Fly and Zydex. Our appreciation to the auction sponsor NS Stonex, ground sponsor Viva, apparel sponsor Unimaple, golden window sponsors Surat Painter and side screen sponsor Intellisys Solutions. Thank you to our food sponsor On and Off, Litoria and Laxate Living. We acknowledge our boundary line sponsors Kashtha, Shipra, Shrestha, Serenity, Shivdhara and Insights by Maruti Hardware. Special thanks to 4 and 6 sponsor Farnova Kuchen, wicket sponsor Rowan Decor, man of the match sponsor Guardian Glasses and drinks sponsor Zenu Plaster. Once again, thank you all for supporting Ball Bet Tournament 2026 and the spirit of cricket and family games. So come, let's all together playfully enjoy this fabulous Ball Bet Tournament 2026, the ultimate cricket showcase. Thank you.
हेलो। ड्रिंक्स मैदान के बाहर जा चुके हैं 5 ओवर की समाप्ति के बाद। जस्टिजाहा का स्कोर है 70 रन 7-0 एक विकेट के नुकसान पर। रविशा अभी उन्होंने 4 रन बनाए। जिग्नेश पटेल जिसे जिगो कहते हैं वो खेल रहे 15 रन पर। कांट वाघेला को मिलने वाली वो पहली सफलता थी। अच्छी ब्रेक थ्रू उन्होंने जैसे कप्तान ने उसे जिम्मेदारी दी अपनी तरह से उन्होंने जिम्मेदारी निभाई और अपने कप्तान को पहला ब्रेक थ्रू दिया। अच्छी रन रेट के साथ यहाँ पे 14 रन प्रति ओवर के 7 रन बनते हुए दिखाई देते हैं। छठी ओवर सामने वाले इनसे पहले से थोड़ा सा आगे आके निकल आए तो जैसे ही देखा कि दो खिलाड़ी के बीच एक लंबा सा गैप है। अच्छा गैप का प्लेसमेंट बहुत ही सही था आपके पास 4 रन के लिए। Sponsored by Farnova Kuchen. और पिच गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर थे। अच्छी तरह से ट्राई किया लेकिन एक ही रन से संतुष्ट मानने हुआ। इसे सिंगल के साथ अब स्कोर हो चुका है 75 रन 75। ये फुल टॉस गेंद की बहुत ही खूबसूरत प्रयास वहां विकेट कीपर के द्वारा और इसी के साथ यहाँ पे विकेट गिरता हुआ विकेट नंबर दूसरा। यहाँ पे गेंद उसके बिल्कुल ग्लव्स में लगी थी। In Ball Bat Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. दूसरा विकेट का यहाँ पे पतन होता हुआ। खेलना चाहते थे थोड़ी सी फुल टॉस गेंद थी ग्लव्स पे लगी। अंपायर के से उन्होंने स्क्वेलिंग अंपायर की तरफ देखा कि शायद बीमर हो सकती है लेकिन अंपायर ने कहा कि वो बीमर का कोई प्रश्न ही नहीं है। यहाँ पे गेंद बिल्कुल सही ढंग से सही लंबाई पे थी सही लाइन पे थी तो यहाँ पे दूसरा विकेट का पतन होता हुआ जस्टिजाहा का। कौशल लहरी आए है दूसरा विकेट के पतन होने के बाद वो पहली गेंद का सामना करते हुए बीत हुए। ऑफ साइड से गेंद थी अंदर की तरफ थोड़ी सी आई थी। स्कोर है 75 रन 2 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर चलता हुआ यहाँ पे ओवर पीछे गेंद जरूर थी वहां पे लेकिन स्ट्रोक के पीछे इतनी ताकत नहीं थी लेकिन रन यहाँ पे जरूर मिलेगा। 2 रन मिलते हुए मिड विकेट की तरफ खेला था। गेंद हवा में थी खिलाड़ी काफी पीछे थे बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे। जब तक कि आए गेंद उससे पहले उसके सामने जस्ट फॉलन बिफोर हिम। फिर से एक बार गेंद की लाइन में आए बिना ड्राइव करना चाहते थे। छठा ओवर समाप्त होता हुआ इसी के साथ 77-2 6th over is now complete. The score is 77 for loss of 2 wickets. Men are in the middle of the wickets are Kaushal Lahari who is on 2, Jignesh Jigo Patel who is playing with his individual score of 20. कश्यप ने एक ओवर करते हुए 7 रन दिए थे। ये अच्छी गेंद थी थोड़ा सा आगे वाले पैर को बाहर निकालते हुए हाफ वाली पे लेते हुए ड्राइव किया था ऑन साइड में डीप में मिड विकेट की तरफ 1 रन के लिए। अच्छा टाइमिंग वाला स्ट्रोक का टाइमिंग बहुत ही खूबसूरत था और कलाई का उपयोग किया था।
रोहन देसाई गेंदबाजी करते हुए। ये अच्छी गेंद, चेंज ऑफ पेस यहां पे देखने को मिला। धीमी गति से गेंद की थी, तब पकाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकले। ऑफ कटर गेंद जिसे कहते हैं, लेफ्ट हैंडेड बॉलर है, राइट हैंडेड बैट्समैन है, गेंद उसको थोड़ा सा एंगल करते हुए बाहर निकली थी। यॉर्कर लेन डालने का प्रयास था, लेकिन इतनी खूबसूरती से कलाई का उपयोग करते हुए डीप स्क्वायर की तरफ अंपायर के ठीक पीछे ढकेल दिया 1 रन के लिए। अच्छी गेंद, इतनी अच्छी तरह से चतुराई के साथ उन्होंने आपके बार खेल दिया था ऑन साइड में। बहुत ही अच्छा अंपायरिंग, यहाँ पे थोड़ा सा आगे निकल के ड्राइव करना चाहते थे बीट होते हुए। अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, फुल टॉस गेंद किया था, ऑफ स्टंप से बाहर थी, मिसफील हुई, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, 1 रन लेने का मौका भी मिल गया। इसी सिंगल के साथ अब स्कोर बोर्ड पे नजर आप देख रहे हो वहां पे स्क्रीन पे 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद थी, इतनी अच्छी तरह से स्ट्रेट ड्राइव किया था, बिल्कुल बॉलर के ठीक पास से निकलते हुए स्क्रीन की तरफ खेल दिया था 1 रन के लिए। Score is now 81, the loss of 2 wickets. This the 7th over has been complete. 8 overs now in the progress. The bowler is bowling from gate 10, right-handed. Oh, picked nicely, and what a shot behind it. Stroke he has maintained his energy. Timing is so well, generated power so nicely, using his wrist so beautiful over the rope 6. Fantastic 6 that was. Once again in a similar pattern, this time he played, but in the cow corner area for 6. This Super 6 is sponsored by Cornova Cushion. Score jumps now on to 93. और 11 गेंद में अब तक 18 रन बना लिए। एक पार्टनरशिप यहाँ पे तीसरी विकेट की बनती हुई दिखाई देती हुई है। 8 ओवर चल रहा है, स्कोर है 93। कौशल लहरी खेल रहे 16 रन पर, जिगो पटेल खेल रहे हैं 22 रन पर। 14 गेंद का सामना किया कौशल, अब तक 8 गेंद का सामना किया, जिसमें बड़े लंबे 2 छक्के उन्होंने लगा दिए। जल्दी खेले थे, थोड़ा सा पहले से ही खेल लिए थे, लेकिन अच्छी तरह से अपने आप को पोजीशन में रखा था, ड्रैग किया था बल्ले को आगे, खेल दिया था लॉन्ग ऑफ की तरफ 1 रन के लिए। लोअर फुल टॉस गेंद और फ्लिक करते हुए खेल दिया है, और अंपायर का इशारा 6 रन का। Super 6. His Super 6 is sponsored by Cornova Cushion. इसी 6 रन के साथ अब जेस्टी ने अपना 100 रन भी पूरा कर लिया।
शॉर्ट पिच डिलीवरी और वहां पे खिलाड़ी मौजूद थे और आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ फाइन लेग पर सीधा सा खेल दिया था। वहां पे बिल्कुल खिलाड़ी के हाथ में गेंद जाके पहुंची लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए। यहाँ पे कैच छूटा है, यहाँ पे एक लाइफ जीवन दान मिलता हुआ और स्कोर इसकी वजह से आगे बढ़ता हुआ 101 रन। ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर जगह बना के खेलना चाहते थे जिसे इनसाइड आउट स्ट्रोक कहते हैं, लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए थे। और इसी के साथ ये 8वां ओवर भी यहाँ पे समाप्त हुआ है। दैट्स एंड ऑफ 8 ओवर एंड स्कोर इज 101 for 2। नौवीं ओवर की शुरुआत जिस तरीके से हुई, पहली गेंद पे एक धमाकेदार छक्के के साथ उन्होंने किया वेलकम। This Super 6 is sponsored by Farnova Kitchen. First ball of the 9th over, in the way he played over the fence for 6. It was a full toss delivery. A good field this time, in a follow through back to the bowler. Hard hitting this time, but straight to the bowlers. थोड़ा सा पटकी हुई सी गेंद थी, उछाल लेना चाहते थे लेकिन दो खिलाड़ी के बीच प्लेसमेंट बहुत ही सही तरीके से किया। गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। Good placement, so found a gap so nicely between two players. The widest mid-on and mid-wicket. There's a huge gap between these two players. It's nicely played down into the fence for 4 runs. With its full now score jumps on to 111. Triple one per loss of 2 wicket. 111 per loss of 2 wicket. Jignesh now reached to 39 for his individual score. And Kaushal Lahiri is playing with 17. Is well up the back foot and punch it, and there is a man unable to stop it. Ball is going over his head for 4 runs. It was a fantastic four, sponsored by Farnova Kitchen. Beautiful back foot punch drives down to the onside, and with that boundary, now score goes up to a 115 per loss of 2 wicket. Jignesh now reached to 43. आगे आके हाफ वाली पे लेते हुए ड्राइव कर दिया। फिर से एक बार देखना है कि अंपायर तरफ से हमें क्या सिग्नल मिलता है। एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई थी। आगे आके हाफ वाली पे लेते आपकी बार ड्राइव के दिया 6 रन के लिए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से आपकी बार ऐसे कंसेक्यूटिव। लगातार 2 गेंद पे 2 छक्के यहाँ पे आते और गेंद बाजू के ग्राउंड पे निकल गया। ये स्कोर हो चुका है 127 रन और इसी 6 रन की वजह से जिग्नेश पहुंचे हैं अपने व्यक्तिगत स्कोर 55 पे।
Now over समाप्त हो गया. 9th over is now finished. The score is 127 for loss of 2 wicket. And of course Jignesh Patel now he has put himself in the top gear. He's looking so aggressive and playing a very entertaining, sparkling innings here. Facer only 22 deliveries, 5 fours and 4. The score is 128 for loss of 3 wickets. A good entertaining innings by Jignesh Patel comes to end, and he wanted to play missing completely, got himself into the Yorker land positions, and was clean bowled by Kant Wagela, who is bowling a last over of this match. Newman is Rishabh on the crease. It's a good ball this time, and wicketkeeper missed to first left fielder is there to field it. गेंद देखना है कि बल्ले से लगी या पैड से लगी. लेग बाई का इशारा खेलना चाहते थे. ऑन साइड में गेंद सही ढंग से बल्ले पे आई नहीं थी, पैड से लगती गई स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ. लेग बाई के रूप में यहाँ पे रन मिलता हुआ. स्कोर इज 130. ऑन साइड में खेला है दीप में, एक ही रन मिलेगा यहाँ पे. कौशल आए हैं अब स्ट्राइक पे. 131 रन अंतिम गेंद करने के लिए अब जा रहे हैं कांट वागेला. देखना है कि अंतिम गेंद पे कितने रन आते हैं. यहाँ पे कौशल खेल रहे 18 रन के साथ. लोअर फुल टॉस गेंद थी, शॉट फाइन लेग की तरफ खेलते हुए 1 ही रन से संतुष्ट मानना पड़ेगा. और इसके साथ यहाँ पे 10 ओवर समाप्त. 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है यहाँ पे 132 रन. जस्टिज़हा का जीतने के लिए अब चाहिए यहाँ पे लक्ष्य जो होगा वो 132 रन का होगा. With immense pride and gratitude, a heartfelt thank you to our Ball Bat Tournament 2026 title sponsor Stanley and co-title sponsor Alcom. Also sincere thanks to our team sponsors Talisya Systems Private Limited, Cool Line by Daikin, Nexion, O General by Global Electrify Shop, Core, Equent, Ekai, Everest Fly and Zydex. Our appreciation to the auction sponsor NS Stonex, ground sponsor Viva, apparel sponsor Unimaple, golden window sponsors Surat Painter and side screen sponsor Intellisys Solutions. Thank you to our food sponsor On and Off,
Litoria, and Laxate Living. We acknowledge our boundary line sponsors Kashtha, Shipra, Shrestham, Serenity, Shivdhara, and Insights by Maruti Hardware. Special thanks to 4 and 6 sponsor Farnova Kitchen, Wicket sponsor Rowan Decor, Man of the Match sponsor Guardian Glasses, and Drinks sponsor Zenu Blaster. Once again, thank you all for supporting Ball Bet Tournament 2026 and the spirit of cricket and family games. So come, let's all together playfully enjoy this fabulous Ball Bet Tournament 2026, the ultimate cricket showcase. Thank you.
Not easy for any fielders. Oh, predetermination stroke this time down to the onside, and there is a man is waiting the ball. Let's come into the hands, so hold it so nicely. That's a falling of the first wicket of FLS. What a wicket! This wonder wicket in Ball Bat Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. पहला विकेट का यहाँ पे पतन हुआ था। जिस तरीके से वो खेलना चाहते थे, एलिवेशन क्लियर नहीं कर पाया और मिड विकेट पे खड़े खिलाड़ी ने अब की बार कोई गलती नहीं की थी। वहां पे फील्डर ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया और पहला विकेट यहाँ पे गिरा फैसिनेटिंग फॉस्टर का। अभी भी 126 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। पहला विकेट बहुत जल्दी गिर चुका है। दूसरी ओवर में एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड होना बिल्कुल जरूरी है। शॉर्ट पिच डिलीवरी और बिल्कुल कमाल का स्ट्रोक, जैसे देखा अपने आप को पोजीशन करते हुए उन्होंने पुल कर दिया 6 रन के लिए। This Super 6 is sponsored by Farnova Kitchen. शॉर्ट पिच गेंद थी ऑन साइड में, अपने आप को पोजीशन करते हुए पुल कर दिया था। एक ट्रेडमार्क स्ट्रोक होता है जिस तरीके से उन्होंने पुल किया, टाइमिंग बिल्कुल सही था। और इसी 6 रन के साथ अब स्कोर हो चुका है 13 रन। अच्छी डिस्पेंस, स्लो वन डिलीवरी, फ्लाइटेड डिलीवरी, gentle push down to the offside into the point region for the single. Good ball this time. Not given much more liberty to open his shoulder this time. Playing down to the long on side for the single. And that's the end of over of Jignesh Patel. 9 run coming in the last over. The score is after 2 overs 15-1. Kashyap batting with the 7. Sanjay Shawala batting with 3 runs. Hiren Engineer is continue bowling from the come box and to Kashyap Patel. Now power play is over. So now there is a 3-man inside of the boundary line. So full toss one down to the offside. And signal from Paresh Patel, that was a wide one. Extra run now. Score going to 16. It's a good ball this time outside the off stump, and there is a no footwork without coming into the line of the ball. Wanted to hitting high, not connected with the bat. Got an edge, and there is a man in the slips who misfielded, and ball is going down to the third man, and that's a boundary. And that was a fantastic four, sponsored by Farnova Kitchen. Looking like possibility of the chance gotten outside the edge of the bat. Score goes up to 20. Once again, a good dot ball this time outside the off stump. Not making the connection with the ball.
Lower full toss one, and there is a man coming under it, and it's Rain Engineer is getting the first wicket, sending the batsman way to the power end side. This wonder wicket in Ball Bat Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. It was a full toss delivery just outside the off stump, not generating the power behind that stroke, and that's why he was been got out into the field. There is a fielder in the deep. So easy in the position, come very nicely into the line of the ball, kept his eyes on the ball and hold it properly. So that's a second wicket is gone of the Foster on a score of 20. Current run rate is going about 7.50, required run rate is 15.41. Oh, that's a good one. Beaten in the all the way down to the offside. So fuller length gain, straight delivery. Looking so optimistic on that particular delivery, Hiran Engineer was. Again getting a full toss delivery, and there is a man coming under it, but this time unable to stop it, and that's waiting for umpire signal. It's a 6. Super 6. This Super 6 is sponsored by Pernova Kitchen. And that 6 brought the Foster to 26 for loss of 2 wickets. 3 over is completed. Score is 26 for loss of 2 wickets. Mayank batting with 6. Kashyap Patel batting with 7. Hiran Engineer, he has the finished quota of 2 overs, no maiden, 17 runs, and got a 1 wicket. Jignesh Patel, Jigo, he has bowled so far 1 over, no maiden, 9 runs, and he captured a 1 wicket. Both the bowlers are successful for his team. Bowling has been now changed. 4th over in the progression. Kaushal Lahari is going to bowl probably. Fourth over in the progress, Kaushal Lahari has been brought from the Combok side to bowl to Mayank. Outside the leg stump, and definitely it's a wide ball signal from umpire Patel. And that's a boundary. It's a short pitch delivery. Is a while in the position, pull it down. No man is in the wicket area. Sponsored by Pernova Kitchen. That's a boundary brought the Foster on 32 for loss of 2 wicket. Down to the leg side, and watch it very carefully. Batsman allowed to go into the wicketkeeper hand. Umpire signal that was a wide one. One more extra. Once again, way down to the leg side. (33) for loss of 2 wicket. Bowler name?
Bowling is changed from this and Kaushal replace himself. Rishabh has been bowled to attack from this combo side on the behalf of Kaushal Lahari. Looking like right arm leg break bowler. Let's see what's going to do here. Score is 33 for last 2 wicket. He's bowling right arm round wicket. And that was the full toss one. Playing down into the deep for the single. Single takes the Foster up to the 34. That's an edge outside the blade. Lucky for him that ball was just dropped before the fielders who is in the first slip. Outside the off stump without coming into the line of the ball, tried to play against the spin. That's why he got an edge. Lucky for him that he survived this time. Bowling with a very short run up. Rishabh looking like right arm leg break bowler. Unable to control, full toss down to the onside. There is a fielder right on the boundary. It's a lovely fielded, lovely throw right into the gloves. Right on the top of the bells. Lovely throw into the hands of wicketkeeper. Ball is going down to the fine leg side. There is a man who covering a lot of ground to his right hand side. .37. Current run rate is about 9.65 and required run rate is 15.57. It's climbing high. It's a good one this time. Inducive delivery. So fine. It's a very clever delivery this time by Rishabh. This wonder wicket in Ball Bat Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. He bowled this time little bit upper and tried to play it down to the onside. Played against spin. That's why he got an edge and wicketkeeper made no mistake this time. So falling off third wicket of Foster at the score of 37 just in the 4 over. Good strategy, good outcome by the Kaushal Lahari that he has replaced himself and brought Rishabh on behalf of him. Good replacement. Just complete his overs, got his wicket, and score at his verge is 37 for loss of 3 wicket. Bowling outside the off stump, he has a very different action. While releasing the ball, stop himself into the popping crease. Then he released the balls. Having a very different action that he's bowling here in this tournament. 39 score is on the board. This time full toss one coming down on the wicket, taking on a half volley, charging it, playing it into the extra cover reason. That is a fielder stopped it and returned to the bowler. Outside the off stump, making the room for it, punch it. That is a man going
to cover it, but unable to stop him. He's on way in this time. Ball crossing the boundary, and that's a good one. That was a fantastic four, sponsored by Farnova Kuchen. Score now moves on to 44. Rohan Desai is on fire now. This time with the horizontal bat play down to the onside at widest mid-on for the easy single. Required run rate is climbing high, going up. What action he is having while releasing the ball? He stopped himself. He make himself totally pause and he released the ball. Yeah, this time low one, full toss and possibility of a catch. Good over so far from the view of angle of the fielder side. Fifth over is finished. Score is 47 for loss of 2 wicket. Both batsmen right now on the crease are Rohan Desai is playing with 6. Mayank is on 11. With immense pride and gratitude, a heartfelt thank you to our Ball Bat Tournament 2026 title sponsor Stanley and co-title sponsor Alcom. Also sincere thanks to our team sponsors SANDHYA Systems Private Limited, Cool Line by Daikin, Nexion, O General by Global Electrify Shop, Core, Equent, Ekai, Everest Fly and Zydex. Our appreciation to the auction sponsor NS Stonex, ground sponsor Viva, apparel sponsor Unimaple, golden window sponsors Surat Painter and side screen sponsor Intellisys Solutions. Thank you to our food sponsor On and Off, Litoria and Laxate Living. We acknowledge our boundary line sponsors Kashtha, Shipra, Swestham, Serenity, Shivdhara and Insights by Maruti Hardware. Special thanks to 4 and 6 sponsor Farnova Kuchen, wicket sponsor Rowan Decor, man of the match sponsor Guardian Glasses and drinks sponsor Zenu Plaster. Hello. Sixth over is going to start from the gate inside. Drink stall is out of ground. Mike is getting ready to fish. Over pitching and this time over the head of the ball. Ball is very close into the Sami Sheikh. Also easy for him to making the clear the elevations. And that's a boundary. Fantastic four, sponsored by Farnova Kuchen. That boundary brings Foster on 51. Welcome boundary just after the drinks and the very first delivery of the 6th over. Oh, that's a signal from umpires. No ball. Possibility of free hit, yes. One more extra run is added in the scoreboard. Now it goes up to 53 per 3 wicket. There's a 6th over in the progress. This time he's charging down and declare umpirations in a typical fashion. He declares it's a wide ball. So still free hit is going on.
Full toss one and play down into the deep behind the square leg umpire for the single. Single brings the Rohan Desh on the strike. It's a good one ball this time, so right into the line and making the batsman really quiet, not giving a chance to open the shoulder this time. In a way, he's a bowling, very typical action he is having. This time it's a quick one, try to bowl the arm over, and that's why he's not able to control his length and line, gone well outside the off stump. Signal from umpire and Gur Patel, that was a wide one. It's a short pitch delivery, and with that spin, his transfer is made and pull it over the fans for 6. Sponsored by Karnova Kuchen. ऐसे एक बार घूम के यहाँ पे खेला जरूर है, 1 रन पूरा किया। वहाँ पे खिलाड़ी हिरेन इंजीनियर है, काफी अच्छी फील्डिंग कर रहा है, अच्छी फील करते हुए थ्रो किया, 1 ही रन लेने का मौका दिया। After 5th overs, the score is 62. Short pitch one this time outside the off-stump, move further down to the offsides. There is no connection. That's the end of overs. He has finished his over with dot balls, and Rishabh in a way that is bowling. अभी भी उसको 71 रन चाहिए, 25 गेंद बाकी है। Bowler name? Bowling has been changed from the Gathan side. Prank has been brought. लेकिन जिस तरीके से ऋषभ गेंदबाजी कर रहे थे, उनकी जो एक्शन थी मुझे एक साउथ अफ्रीकन के बॉलर की याद दिला दी, जो पॉल एडम्स गेंदबाजी करते थे। जब वो इंट्रोड्यूस हुआ था, वही कहीं लगभग वही अंदाज से उन्होंने गेंदबाजी करने का, यहाँ एक्शन काफी सिमिलर थी उनसे। हालांकि अब की बार अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने खेला गेंद को ऑन साइड में, 1 रन को पुश कर दिया था ऑन साइड में, 1 रन लेते हुए। He waited, the ball comes on his blade. At last moment, he is played down to the onside, and it's a lovely taken a 1 more run. Good running between the wickets. जहाँ पे केवल 1 रन की संभावना थी, वहाँ पे उन्होंने दूसरे रन भी चुरा लिया। यहाँ पे पहले रन पे काफी तेज गति से दौड़े से फिर से एक बार हवा में जरूर खेल दिया है। वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद, जरूर 1 ही रन मिलेगा। टप्पा खाने के बाद वहां पे खिलाड़ी के फील्डर को भी पता था किस मोशन में गेंद जाएगी, अपने आप को पोजीशन कर दिया था, बिल्कुल गेंद के सामने उन्होंने फील करते हुए केवल 1 ही रन दिया यहाँ पे। वे डाउन टू द लेग साइड, थोड़ा सा यहाँ पे गति परिवर्तन करने का प्रयास किया था, लेग कटर गेंद डालने का प्रयास किया था, कंट्रोल नहीं कर पाया अपनी लेंथ और लाइन को। लेग स्टंप से ज्यादा बाहर थी गेंद और वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। फुल टॉस गेंद और फ्लैट स्ट्रोक खेल दिया, लेकिन इतनी अच्छी फील्डिंग वहां पे डीप में खड़े खिलाड़ी के द्वारा, 1 ही रन लेने का मौका मिला। अभी भी जो करंट रन रेट चल रहा है 10.20 और जो रिक्वायर्ड रन रेट है लगभग 19.50, डबल रन रेट करना पड़ेगा यहाँ पे।
हालांकि सिंगल रन वहां पे तेज गति से निकल पड़े थे, अच्छी तरह से फील होता था, नॉन स्ट्राइक की तरफ थोड़ी सी पॉसिबिलिटी हो सकती थी विकेट के लिए, रन आउट का संभावना हो सकता था। 69। फुल टॉस 1 और वहां पे खिलाड़ी मौजूद, अब की बार कोई गलती नहीं किए, एक आसान सा कैच, बिल्कुल वहां पे उसे एक इंच भी उन्हें खिसकने की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल स्ट्रिक टू हिम एंड दैट्स फॉलिंग ऑफ अ फोर्थ विकेट। This wonder wicket in Ball Bat Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. $69 per 4 wicket. Last man was out. Caught very easily into the deep, and new man is on the field is Kant Wagela. 7th over is completed. Now the score is 69 per loss of 4 wicket. Still they require a 64 run in 18th ball. फुल टॉस गेंद है, अब की बार खेल दिया, लेकिन वहां पे खिलाड़ी मिड ऑन पे खड़े खिलाड़ी इनके सामने गेंद गिरती हुई फील होती हुई। स्टंप से थोड़ी सी बहा थी, वहां पे पॉइंट के ऊपर से जरूर खेला है, खिलाड़ी मौजूद और गेंद उसे बीट करते हुए निकल के बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। Sponsored by Farnova Kuchen. शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, अपने आप को पोजीशन करते हुए पॉइंट की तरफ उन्होंने पंच कर दिया था 4 रन के लिए। इसी 4 रन की वजह से अब स्कोर हो चुका है 74। अच्छी बाउंड्री जहां जरूरत थी, यहां पे ऐसे बड़े स्ट्रोक आना चाहिए, थोड़ा सा मैच में ट्विस्ट आए, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट है, इट्स क्लाइम हाई एंड रीच अप टू द 22.13। It's a lovely play down to the onside, but there is a mine in the deep. Nicely fielded, return throw into the hands of bowler. Possibility of only a single is there. Full toss 1, and that's over the head of the batsman. He jump and try to have it, but in vain, and that's a signal from Patel. That's a fantastic His Super 6 is sponsored by Farnova Kuchen. $81 per 4. This time he tried to build away from this body, even far away to the off stump, but he has chased the delivery play down to the onside in a follow through for the single. 82. 51 is required to win this match, and then they are having a 13 balls in their court. Ravi Shah is bowling. Outside the off stump and looking obviously very wide. Signal from umpire Ankur Patel. Short of length this time, short pitch delivery, टूकी लंबाई की गेंद जिसे कहते हैं, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो जब तक कि करे, दूसरा रन लेने का भी मौका यहाँ पे मिलता हुआ। इसी 2 रन के साथ यहाँ पे ये 8वीं ओवर की समाप्ति हुई और स्कोर हो चुका है 85 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो है 24 रन प्रति ओवर चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, और करंट रन रेट चल रहा है लगभग 11 रन प्रति ओवर।
2 over to go, 12 balls are remains and 48 runs required to win this match. 9 over 9 in progress. 9वीं ओवर की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे डॉट बॉल के साथ। यहाँ पे जिकेश की ये गेंद को उठा दिया हवा में, देखना है कि गेंद बिल्कुल साइड स्क्रीन की तरफ जाके। Super 6. This Super 6 is sponsored by Farnova Kitchen. ये गोल्डन लाइन के बीच उन्होंने खेल दिया था। अंपायर की तरफ से सिग्नल के जहां पे ये 12 रन कंसीडर किए जाएंगे। सो जैसे ही यहां पे ये 6 हुआ, स्कोर हो चुका है 97 रन। ये अच्छी गेंद ऑफ स्टंप में थोड़ी सी बाहर थी, नीचे भी रही, खेलना चाहते थे, लाइन में नहीं थे, कनेक्ट नहीं कर पाए, संपर्क नहीं हुआ, विकेट कीपर ने कलेक्ट करके वापस कर दिया बॉलर को। एक स्लिप बैकवर्ड पॉइंट, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, ये ऑफ साइड पे। ये अच्छी गेंद, बिल्कुल अच्छी गेंद इंड्यूस किया था, आगे आगे खेलना चाहते थे, फ्रस्ट्रेशन वाली मोमेंट खेलना, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की अब की बार। This wonder wicket in Ball Bat Tournament 2026 is brought to you by Rowan Decor. जैसे ही खेलने का प्रयास किया, थोड़ी सी ऊपर गेंद की थी, हवा में फ्लाइट पे रखा था और आगे बुलाया था और थोड़ा सा मिस टाइम स्ट्रोक हुआ, बल्ले का बाहरी किनारे लिया और विकेट कीपर के पास एक अच्छे ग्लव्स है, उसके लिए कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी, कैच को अच्छी तरह से पकड़ लिया और यहाँ पे 5वां विकेट का पतन हुआ। बिग फिश इंसिडेंट जिसे कहते हैं, अच्छी बड़ी मछली को उन्होंने यहाँ पे फंसाया, जिस तरीके से जिग्नेश ने आपके बार गेंद की थी, सफल ओवर करते हुए। आपके बाद थोड़ी सी पटकी हुई गेंद तेज गति से करने का प्रयास, मिड ऑन पे खड़े खिलाड़ी की तरफ गेंद को खेल दिया, 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पे। सिंगल के साथ अब स्कोर हो चुका 98 रन 98। डॉट बॉल के साथ जिग्नेश पटेल ने अपनी ओवर भी यहाँ पे पूरी की। 9वां ओवर समाप्त हो चुका है। अब 6 गेंद में 35 रन चाहिए, हर एक गेंद पे 1 6 होना चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। कांठो वाघेला खेल रहे 7 रन पर, शमीर परिक खेल रहे 1 रन बनाते हुए। जिगेश ने अपने 2 ओवर किए, 22 रन दिए, 2 विकेट लिए। हालांकि बैटिंग भी आज अच्छी की है जहां तक बैटिंग का सवाल है। This time outside the off stump, not coming into line. Of course, try to play it. Missing completely, wicket keeper collected by signal from by. That is a wide one. It's a good ball this time. It's a peel for the caught behind, but not even connection with the blades. But anyway, it's a very good ball coming after that wide one. Oh, this time way outside the leg stump, and so obviously it's a wide one. One more extra run is added in the score and now reached to 100. It's a good ball this time. Try to induce it once again. It's a very nice delivery, clever ball by Priyang. Just release it very slowly, giving the ball into the air much more time. Looping it, try to do it. Oh, good ball this time coming into the right-handed batsman. Nicely guided down at the short backward point. Good footwork by the fielders that is stopped the ball and given only a single runs. Whereas singles now score moves on to 102 for loss of 5 wicket.
Once again, it's a beautiful delivery. It's a clever ball this time. Nothing wrong with that one. He realized that there is only need to bowl wicket to wicket rather to go for the any more variation. This time slightly a pace ball and play down into the deep at mid-wicket reason for the single. Now one ball, 30 runs required. Oh, that was up the blade, but anyway he stopped it, and that's the end of a 10 over, and he first lost this match with 5 wickets. With immense pride and gratitude, a heartfelt thank you to our Ball Bat Tournament 2026 title sponsor Stanley and co-title sponsor Alcom. Also sincere thanks to our team sponsors SANDHYA Systems Private Limited, Cool Line by Daikin, Nexion, O General by Global Electrify Shop, Core, Equent, Ekai, Everest Fly and Zydex. Our appreciation to the auction sponsor NS Stonex, ground sponsor Viva, apparel sponsor Unimaple, golden window sponsors Surat Painter and side screen sponsor Intellisys Solutions. Thank you to our food sponsors On and Off, Litoria and Lexarte Living. We acknowledge our boundary line sponsors Kashtha, Shipra, Swestham, Serenity, Shivdhara and Insights by Maruti Hardware. Special thanks to 4 and 6 sponsor for Nova Kitchen, wicket sponsor Rowan Decor, man of the match sponsor